fishermen, sir. So in all these conditions, the bishops, the priests who were supporting this poor fishermen have all been tortured in all this. In that being so, let me get to the point, sir. Let me get to the point. The point is, when there is a package being declared, that should be implemented in a time-bound manner, which is not being done. Now, the fishermen have called off their strike day before yesterday, but that is not because their demands are met, not because their demands are met, but because they are forced to because loss of livelihood. So my request should intervene. Thank you, honorable member. Thank you, Siri. Okay. 30 seconds. Sir, conclusion. Sir, conclusion. Allow me to complete, sir. Allow me to complete, please. Sir, complete, sir. The central government should intervene and provide and support the state government to implement the package and to ensure the rehabilitation of these fishermen are done, and to ensure the natural resources are protected and also maintain developmental goals. Thank you very much. Honorable members, I have a special weakness for this gender. We need to promote, but I expect very high standards also. Let us not claim indulgence where it is not due. Sri S. Selvagan Bathi. Honorable Chairman, sir, I would like to break the notice of this August House that the Union Territory of Puducherry has no public service commission like other states and UTs in our country. Public Service Commission, as like in other states, is to ensure the recruitment to various posts in Group A and Group B categories in government services will benefit the locals. There is a huge need of a separate public service commission, which is a major hindrance to the candidates belong to Union Territory of Puducherry in getting postings in Group A and Group B categories. Presently, Group A and Group B vacancies such as medical officers, specialists in Department of Health, professors in the Department of Higher and Technical Education, Agriculture and Veterinary College, even vice principal in government higher secondary schools are filled only through the Union Public Service Commission. Since the process of recruitment of candidates has been entrusted to the UPSC, the selection of candidate is done on all India basis. Since the recruitment test is conducted at the national level, Puducherry youth has less employment opportunities. They have to compete at all India level for a job in their own hometown, and only a few have been able to make it. Many persons from other states who get posted to Puducherry, they are very much reluctant to work in Puducherry, especially they are posted in outlying regions of Karaikal, Mage and Enam. Often they resign or leave their post or leave their hometown. This leads to large number of vacancies in different departments. Furthermore, the language is another barrier for the people who come from outside. Especially in schools, the vice principal is recruited by UPSC and they are not conversant in the local language, that is in Tamil. They are unable to communicate between the teachers and the students without knowing the local language. It creates vacuums and the problems of the students and teachers could not be assessed by the head of the institutions. Puducherry is competent to have its own employment legislation with the concurrence of the center for filling up Group A and B posts, only when it has its own public service commission. Therefore, I would request the Ministry of Home Affairs to kindly consider for setting up a separate public service commission in the Union Territory of Puducherry as like other states, since Puducherry is an union territory with a legislation. Thank you very much. Sri P. Santosh Kumar. I would like to draw the attention of this August House to the problems of gig workers in this country. According to the reports of Nidhi Ayog,
we have at least 8 million gig workers, mainly food online workers in this country. So in many parts of this country, especially in Cochin, Bangalore, Ahmadabad, gig workers are on strike. And the demands are very genuine, and I urge the government's intervention through you to protect the basic labor and human interests of these gig workers. For example, they're getting just 5 rupees for a delivery. And with these 5 rupees, they have to pay the fuel charges also. So we don't have any laws to protect the genuine interests of these gig workers. And moreover, no ESI, no PF, nothing related to the social security is there. So there is an urgent need of government's intervention. And according to the government, Nidhi Aayog, there is a chance of the enhancement of this number. This number may expand to 24 million within 4 or 5 years. So at least the government should take necessary steps to convene the so-called country heads of these online platforms, and there must be an initiative to protect their interests. This is sort of. Sri Jawar Sarkar. Sir, thank you for the opportunity. I wish to draw the special attention of the House to the dire necessity of increasing the rates of reimbursement of treatment, medical tests, equipments, etc. under the central government health scheme. As you are aware, sir, about 2 crore people are involved, including members of this House who avail of the facility. Unfortunately, these rates were fixed about 10 years ago, 8 or 10 years ago, and I'll just give a small example. The scale of payment fixed for CGHS are totally unsatisfactory and below market rates. For example, an RCT or root canal treatment of the tooth that costs 8,000 rupees in the market is reimbursed for rupees 500 only. That's all. Somnographic test for sleep apnea is fixed by clinics all over India, 10,000 to 12,000. The reimbursement given to CGHS is 638 rupees. This is not only irrational, so this is totally unjust. It's a due of the members of this House. It's a due of about 2 crore government employees and pensioners. Lumbar puncture costs 8,000 to 10,000. CGHS gives 600 rupees. I can go on giving more examples, but the fact that I wish to raise to this House is that this gross injustice needs to be contested, and a resolution to prevail upon the health and finance ministries to revisit these rates, to make it somewhere logical. Somewhere logical. They are quite a joke now. With these words, I thank you, sir. Shri M. Sanmugam. Thank you, Chairman, sir. I want to raise the issue of the 67 lakhs employees provident pension scheme pensioners issue, sir. Their main demand is enhancement of minimum pension rupees 9,000 on the basis of recommendation of the OCRE committee. Number 2, payment of dearness allowance along with the pension neutralize the price index. Number 3, release the higher pension on actual salary as per the orders of the Honorable Apex Court on 4/10/2016 and 1/4/2019. Free medical treatment to all EPS 95 pensioners and their demands. Sir, there are about 67 lakhs EPS pensioners in the country are getting fixed pension ranging between rupees 400 to 4,000 per month without dearness allowance to neutralize the price index, and half of them are getting less than the 1,000 rupees pension in the leading very precarious life in the old age. The Union government has enhanced minimum pension rupees 9,000 plus DA, TA for the retirees since 2016, whereas the EPS pensioners who have equal contribution sacrifice the growth of the development of the nation
have been treated unequally and rupees 1,000 fixed minimum monthly pension has been given to them with effect from 1/9/2014 without any enhancement yet. In the year 2013, Petition Committee of Rajya Sabha headed by Sri Bhagat Singh Gocharia in the report have recommended the payment of rupees 3,000 minimum pension EPS 95 pension plus DATA neutralize the price index. But the said report is yet to be implemented by the Union Government of India for enhancement of the pension even after the lapse of 8 years. It is also pertinent to mention that as of now, there is a concluded judgment for payment of higher pension and actual salary in the light of the direction of the Honorable Apex Court. Sir, regarding this pension, the contribution for the pension is 8.33% from the employee's salary. Only 1.16 only the government have to share for this. For that, it is very pitiable that government has to come forward and give the pension. Now, the 67 lakhs pensioners are agitating regarding this one. Thank you. Srimati Ranjit Ranjan. धन्यवाद सभापति जी। मैं 23 नवंबर को जो एम्स में सर्वर हैकिंग का मामला है, जो पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उसके बारे में चर्चा करना चाह रही थी। आपका धन्यवाद। 23 नवंबर को एम्स के लगभग 5 जो डेटा कंप्यूटर है उसका मामला सामने आया है कि सर्वर को हैक कर लिया गया है। लगभग 5 करोड़ मरीजों का जो डेटा है उसके हैक करने की शंका सामने में आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि उसमें जो एम्स अस्पताल है, मामला इतना गंभीर है कि वहां पर सारे वीआईपीज भी, हमारे एक्स प्रधानमंत्री हों, पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री और अभी हमारे प्रधानमंत्री का भी एक वार्ड होता है, स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसमें उनके सारे मेडिकल डिटेल होते हैं, सारे मंत्रियों के मेडिकल डिटेल होते हैं, सारे पेशेंट के मेडिकल डिटेल्स होते हैं। तो ये सवाल उठता है कि 2021 में ही जब ये बात सामने आई थी और सीवाई फब ने ऑलरेडी मार्च 2021 में भारत को आगाह किया था कि आपके जितने भी इंडियन फार्मा है, जो हमारी सीरम है, बायोटेक है, पतंजलि है, डॉक्टर रेड्डीज है, एबॉर्ड इंडिया है, इन सब पे साइबर हैकिंग का खतरा मंडरा रहा था। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हैकिंग हो रही है तो वो हेल्थ सेक्टर है और अमेरिका के बाद इंडिया के हेल्थ सेक्टर पे सबसे ज्यादा हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है। सभापति जी, आज जो एम्स में हुआ, क्या ये बात सच है कि अभी भी वहां पे जो काम हो रहे हैं वो मैनुअल हो रहे हैं? क्या सफदरजंग में भी हैकिंग की कोशिश की गई और कुछ जगह पे हैकिंग हुई है? जो हमारा ई हॉस्पिटल नेटवर्क है वो भी हैक हुआ है, जो बहुत ही खतरनाक है। मेरे मन में कुछ सवाल है कि आखिर उनका मकसद क्या था? मरीजों का आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल नंबर, क्योंकि आधार कार्ड से खाते जुड़े होते हैं और कई बार आपके बैंक फ्रॉड के भी मामले आए हैं। क्या एक बड़े लेवल पे ये तैयारी हो रही है? सर, ये बहुत गंभीर मामला है। कई साइबर एक्सपर्ट और इवन डिफेंस एक्सपर्ट भी ये कह चुके हैं कि ये खतरनाक साजिश है इंडिया के खिलाफ। इसमें कई करोड़ों लोगों के हनी ट्रैप हो सकते हैं, कई लोगों के खाते में फ्रॉड हो सकते हैं और कई लोगों का, आखिर ये क्या वजह है कि ये मेडिकल रिकॉर्ड क्यों लिया जा रहा है? क्या ये डार्क इंटरनेट से जुड़ा हुआ मामला है? सर, मैं चाहूंगी, इस पे बहुत गंभीर मामला है, सरकार इस पे प्लीज आज नहीं तो कल इस पे जवाब दे। Honorable members, on my own behalf and on behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Advocate Jacob Mudinda
Speaker of the Parliament of Republic of Zimbabwe, and members of the parliamentary delegation from Zimbabwe who are on a visit to India as our honored guests. The parliamentary delegation from Zimbabwe arrived in India on Monday, 5th December 2022, and are now seated in the special box. Besides Delhi, they shall also visit Agra on Saturday, 10th December 2022, before their final departure from India. We wish them happy and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament, the government, and the friendly people of the Republic of Zimbabwe. श्रीमती शान्ता छेत्री। धन्यवाद सर, मेरो आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा र आज म विशेष गुरुत्वपूर्ण विषय लिएर म मेरो वक्तव्य राख्न चाहन्छु र यसै वर्ष 2022 सालमा भारतका माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यूको अध्यक्षतामा युनियन क्याबिनेटले 4 राज्यका अनेकौं जातिलाई संविधानको जनजाति लिस्टमा हाल्न स्वीकृति दियो। सर, फेरि पनि भारतीय गोर्खा बाहेक धेरै जातिलाई जनजातिको लिस्टमा राखिने कार्य हुँदैछ। सर, भारत देशमा भारतीय गोर्खा मात्र होला जसलाई भारतका माननीय प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्री स्वयंले छुटेको गोर्खाहरूलाई जनजाति बनाउनमा ठोस पहल गर्ने बाचा गर्नु भएको थियो। र सर, तपाईको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि केन्द्र सरकारले जनजातिको निम्ति 3 पल्ट कमिटी त बनाए, तर यी भारतीय गोर्खाहरूलाई आँखा छल्ने काम मात्र प्राप्त केही भएन। र जब पनि जनजातिको प्रश्न सोधिन्छ, आरजीआईबाट राज्यबाट दस्तावेज आउनुपर्छ भन्छ, तब 3 वटा कमिटी त्यस समय किन गठन गरियो? मेरो प्रश्न छ। र भारतको केन्द्रका ट्राइबल मिनिस्टरले पठाएको पत्र संख्या 16017/11/2022 CLM दिनांक 3/6/2022 मा उल्लेख गरिएको छ कि राज्यबाट पठाएको रिपोर्टलाई आरजीआईले मानिलिएन। र यसकारणले म भन्न चाहन्छु, आरजीआईले अहिलेसम्म यी 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउन हेतु के कस्तो दस्तावेज संकलन गरेको छ तथा राज्यहरूले पठाएको दस्तावेजलाई पनि सदनमा पेश गरायोस्, जसले गर्दा केन्द्र सरकारलाई यी जातिलाई जनजाति घोषित गर्न सहयोग मिल्नेछ। म आशा राख्छु चाँडै भन्दा पनि चाँडै यस विषयलाई तपाईहरुले ध्यान आकर्षण गरेर अनि यसको निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै मेरो वक्तव्य शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद बैश्य। Thank you very much, sir. I am standing here today to pay our great homage to the great leader, great army chief, Mahavir Lasit Borphukan. Sir, country is today celebrating 400 years of birth century of Mahavir Lasit Borphukan, sir. I'm going to speaking about the 17th centuries of our country, sir. In 17th centuries, many parts of India was ruled by the Mughal. And Mughal empire was led by, at that time, Aurangzeb. And according to history recognized Aurangzeb very highly, strong leader, powerful leader, and under his leadership, Mughal occupied almost every part of the India, sir. But in the 17th century, Assam was ruled by Sir Ahom Kingdom Sakradhar Singha. And Sakradhar Singha appointed Mahavir Lasit Borphukan is the army chief of Ahom Kingdom, sir. In the 17th century, sir,
under the leadership of Ram Singh, great soldier, great Senapati, under the leadership of Ram Singh, Aurangzeb sent a huge army force to capture Assam, to capture Guwahati. But under the leadership of Mahabir Lasit Barphukan, Mughal failed to capture Guwahati, and under the leadership of Mahabir Lasit Barphukan, Assamese people, Assam, Ahom kingdom defeated Mughal Sir. Sir, Indian history, not only for Mughal, India history equally for Shivaji, equally Rana Pratap, and equally Lasit Barphukan, sir. Sir, history recognized Mughal for everything. History recognized Aurangzeb, sir. But history failed to recognize Mahabir Lasit Barphukan, sir. So I ask the House, kindly redraft the Indian Constitution, and it should be included in our history, sir. Sir, I request to the government kindly to redraft the history, and you should try to include Mahabir Lasit Barphukan in the syllabus and curriculum in every Indian college, every university, and the people should know patriotism of Lasit Barphukan, who defeated Mughal. Thank you very much. Thank you, Honorable Chairman. Today, I would like to mention the problem faced by some farmers in the northeastern state. I hope you may be aware that areca plantation is one of the biggest occupations of the northeastern state since many years ago. Especially areca plants are grown in the state of Mizoram and Tripura among the tribal areas in a large quantity, so that it is the main occupation for many tribal people in those areas. Unfortunately, Honorable Chairman, I want to inform this august House that the farmers of Mizoram and Tripura could not export their own areca product to the other states of India during this year. Their fresh areca production was stopped and seized by some government officials along the highway within the state of Assam, following the instruction given by the Ministry of Home Affairs, Government of India. This means that the instruction given by the Union government is a great loss for the tribal people living in the Northeast. In the meantime, dry areca of Southeast Asian products entered India through Myanmar in a bulk quantity, as report received from officials that the Union government is trying to stop the incoming of foreign dry areca products. Honorable Chairman, I highly appreciate that this foreign areca production smuggling must be stopped from entering our country. So I kindly request the Union government not to confuse our own areca product and foreign dry areca product. It is different thing. Foreign areca product is in the form of dry, but our own native products in the form of fresh one. We cannot confuse them. So there is no reason to stop the sales and seize the native areca product anywhere within Indian Union unless we are treating the northeastern India as a foreign country. Let the smuggling of foreign areca be stopped. In the meantime, let the native areca production be free. Thank you so much, sir. Sri Sant Balbir Singh. बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब थोड़ा तुसी समा दिता ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੇਆਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 50 ਬੋਗੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ नीति आयोग की सन 18-19 की रिपोर्ट मुताबिक हर साल 2 लाख लोग पीने वाले साफ पानी ना मिलन करके मौत का शिकार हो रहे हैं नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट मुताबिक 2030 तक कुल आबादी का
40% हिस्सा पीण वाले पानी तो वांझा हो जाऊगा। सो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो 5 साल पहला जी उन्होंने रिपोर्ट दी सी, पंजाब दे विच 2039 तक धरती हेठला पानी 300 मीटर भाव 1000 फुट थले चल जूगा, ते जिहदे विच भारियां धातां दा खतरा जी खेती है तो दूर की गल 1000 फुट तो पानी कढ़ के पानी किवें खेती की जा सकती है। पंजाब खेती प्रधान सूबा ते पानी नूं दे जिस अनुसार चल रहा पानी मुक रहा पानी सुख रहा, पंजाब दे विच 80% जिहड़ा पानी आ खेती आ वो धरती थल्लों पानी कढ़ के मोटरां दे नाल खेती की जाती है। सिर्फ 20% खेती जिहड़ी आ वो जिहड़ी है नहरी पानी ना की जा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार पंजाब दे 133 ब्लाकां दे विचों 109 ब्लाक डार्क जोन दे विच आ गए, भाव उत्थे पानी जिहड़ा है पहुंच तो दूर हो गया। सो असीं आप जी दा ध्यान विच लियाउणा चाहुंदे आ कि साडे वड्डे वडेरिਆਂ ने पानी दे भंडार संभाल के रखे, अज पानी मुक रहा। गुरु नानक पातशाह ने अपनी बाणी दे विच पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई जीवन का आधार। जेकर पानी ना बचिया तो फिर वेखो पंजाब ने पूरे भारत का अनाज का ढिड भरिया, अज पानी मुक रहा पानी सुक रहा। असी बेनती करांगे कि पानियां नूं बचाउण वास्ते उत्थे पंजाब सरकार की किसानों की मदद की जाए ताकि जिहड़ी हैगी आ पंजाब हसदा वसदा रह सके। थैंक यू, धन्यवाद। Sri Waiko. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. I would like to draw the attention of the House to you to a serious problem faced by the fishermen of Tamil Nadu. Apart from the fishermen of Sri Lanka, what they are facing there here from Tamil Nadu, for the past 45 years, more than 800 fishermen have been killed by the Sri Lankan Navy. Repeatedly they came, it is continuously attacking our Tamil fishermen. So many were dead and thousands of fishermen were brutally attacked and their boats and fishing trawlers were damaged and fishing nets destroyed. They have not given any compensation to the next of kin of fishermen who were shot dead. Recently, they have started capturing the boats and put them onto auction. Unfortunately, it has become a serious story, and demonstrations and agitations are going continuously, peacefully by the Tamil Nadu fishermen. There have been several incidents of Sri Lankan Navy personnel even firing at Indian fishermen in the Pak Strait and seizing their boats, damaging their boats and high-handedness by the Sri Lankan forces. In the months of October and November 2022 also, Sri Lankan Navy continued its acts of infringement upon the traditional rights of our fishermen in the Pak Strait, which is a challenge to the Union of India. Recently, 14 fishermen were arrested by the Sri Lankan Navy. The frequent arrests and seizure of boats has shattered the livelihood of many fishermen. I would urge upon the Union government to take urgent steps to secure the early release of all the fishermen and their boats unconditionally. The government should also put diplomatic pressure on the Sri Lankan government for giving compensation and solace to the next of kin who were shot dead and damaged, boats damaged by the Sri Lankan Navy. They should hold a high-level talk to find a permanent solution to this non-stop harassment by the Sri Lankan Navy. Thank you very much, sir. I already indicated that those of the members who seek to associate may send information to the table office. Srimati Seema Dwivedi. माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसे विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। गोरखपुर से प्रयागराज जोड़ने के लिए एकमात्र रास्ता है और उस रास्ते पर मुगराबाद शाहपुर एक रेलवे स्टेशन है, उसके बगल से बाईपास बनने की बहुत आवश्यकता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रयागराज में लोग महाकुंभ का मेला भी लगता है
और महोदय उच्च न्यायालय भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। तमाम लोग दवाइयों के लिए, पढ़ाइयों के लिए और गंगा जी में स्नान करने के लिए तमाम लोग जाते रहते हैं। लेकिन महोदय इतना भयंकर वहाँ पर जाम लगता है, कम से कम 1.5 घंटे जाम लगने के कारण मुगराबाद साहबपुर हमारी नगर पालिका भी है और बहुत सारे वहाँ पर व्यापारी हैं, जिसको देखते हुए महोदय बहुत ही कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। मैं इस विषय को कई बार सदन में उठा चुकी हूं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि ये बाईपास नहीं बन पा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक दशा में अगली बार जब हमारा सत्र आए तो हम ये कह सकें कि वहाँ पर हमारा काम प्रारंभ हो गया है। ये माननीय बहुत ही जनहित का मामला है और बहुत सैकड़े लोगों का वहाँ पर आना जाना रहता है। अभी कुंभ का मेला लगेगा, लोग कहाँ से पतित पावनी गंगा में जाएंगे स्नान करने के लिए। मुझे मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट करके प्रत्येक दशा पर वहाँ पर बाईपास का काम प्रारंभ हो जाए। आपने महोदय मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you very much, sir. Sir, as we know that huge number of passengers travel by railway. When Madam Mamata Banerjee was the then rail minister, she started one project called Ijjat Monthly, by the help of which one person used to travel 100 kilometers per day by spending only 25 rupees per day for the entire month. Now we know that major part of the rail is being privatized, and the rail ticket and the monthly ticket and platform tickets, they are becoming high day by day. So my humble submission before my government is, considering the poor section of the commuters who travel by railway every day, please start one scheme like Ijjat Monthly or whatever, which can benefit them, and by paying a small amount, they can travel a significant distance per day. Thank you so much, sir. Honorable members, our question hour is very important. Question hour gives an opportunity to enforce accountability. And it is most productive where more questions are traversed. And that happens when there is pointed response and pointed supplementaries. I'm sure we'll bear that in mind. Question hour, question number 16, Shri A.A. Rahim. First supplementary. Sir, may I read the first sentence of your answer? Employment and retrenchment, including layoffs, are a regular phenomena in industrial establishment. Sir, this is quite unfortunate answer, and this is quite evasive. Sir, what is the role of the government in this particular circumstances, especially in the area of layoff in the IT sector? Layoffs and retrenchment of the IT sector is a very grave issue in the country. Sir, very proudly, we can say that the Kerala government set up a welfare and protect scheme for this particular IT sector. My question is that, does the ministry have details of which states have such funds, such schemes? And does the union government intend to set up such a scheme for welfare for the IT employees? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक ले ऑफ का विषय है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2KKK में ले ऑफ की परिभाषा और तरीका दिया गया है, और जहाँ तक इसके संबंध में कार्रवाई करने का प्रश्न है, जो राज्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसके संबंध में कार्रवाई करने के अधिकारी हैं। जो भी आईटी फर्म्स जिन राज्यों में है वहाँ के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ले ऑफ पे कार्रवाई करती है, और यही मैंने अपने उत्तर में दिया है। Second supplementary. Sir, again, unfortunately, sorry to say that, sir, one line, may I read this, the very operational part of this answer. As per the ID Act, establishments employing 100 persons or more are required to seek prior permission of the appropriate government. You mentioned this act here, your answer. Sir,
this is the problem is that it has been said that the IT companies do a workaround methodology to avoid this legal issue of mass layoffs by forcing IT employees to resign voluntarily. Sir, this is the issue. Sir, this is the issue. Is this culture under the notice of the government of Union of India? If yes, what are the methods adopted to regulate this culture? Honorable Minister. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, एक शिकायत नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट की तरफ से 19/11/2022 को मंत्रालय को प्राप्त हुई थी और मंत्रालय ने भी बेंगलोर के फील्ड ऑफिसर चीफ लेबर कमिश्नर के माध्यम से जो संबंधित कंपनी है उनको नोटिस भेजा था। नोटिस भेजने के बाद कंप्लेनेंट स्वयं नहीं आए, लेकिन कंपनी के लोग वहां पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने जवाब में ये बताया कि उन्होंने वॉलंटरी सेपरेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था, जो किसी भी प्रकार से फोर्सफुल नहीं था। वो कर्मचारियों को स्वेच्छा से वो अपना स्वेच्छा से अगर वो छोड़ना चाहे तो वही प्रोग्राम था और वो भी केवल 30/11/2022 तक था। मामले का पूरा संज्ञान लिया गया है, किसी भी प्रकार से कोई फोर्सफुल ले ऑफ नहीं था। डोला सेन। Thank you, Chairman, sir, for giving me the permission. My supplementary question ये है कि हम आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से जानना चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न में डिसइन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, BSNL एटसेट्रा, उसकी वर्कर्स को जब जो UPSC एग्ज़ाम के बाद जॉब मिला उसको भी कंपल्शन होना पड़ रहा कि ट्रांसफ़र होने का और VRS लेने का, तो वो तो वर्चुअली रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ की तरह ही हो रहा है। तो उसके बारे में कैसे, हाउ द मिनिस्टर विल जस्टिफाई that no retrenchment and layoff in the central government employees, and moreover वर्क विषय जो में जो काम करते हैं वो वर्कर के लिए भी रिसेंट ले ऑफ के बारे में मिनिस्टर साहब क्या बताएंगे, और सरकार ये अदर कंट्री में जो एम्प्लॉय काम करते इसके ऊपर क्या साजिश लेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2KKK में ले ऑफ और 200 में रिट्रेचमेंट की पूरी परिभाषा तय की गई है। अगर कोई भी संस्थान में माननीय सदस्य के संबंध में कोई ऐसी सूचना है जो उनके पास है और कहीं पर कानून का पालन नहीं करेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में लाएंगे, तो कार्रवाई करेंगे। श्री S. सेल्वा गनाबी। श्रीमती रंजीत रंजन। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि क्या बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों ने अपनी अपनी कंपनियों में बड़े पैमाने पर की जा रही श्रमिकों की छटनी करने के भारत में लागू जो विभिन्न कानून है क्या उसका पालन किया है? यदि नहीं तो सरकार ने ऐसी कितनी कंपनियों को कानून के विरुद्ध की गई श्रमिकों की छटनी के संबंध में नोटिस जारी किया है? यदि हाँ तो उसका प्लीज विस्तृत ब्यौरा दे, अगर नहीं तो उसका क्या कारण है? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जहां तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सवाल है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक राज्यों में और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, उनके नियमों का पालन केवल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है। शेष उनकी सारी शर्तों का पालन संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है और हमारा लेबर मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है उससे हर राज्य से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत किया जाता है। Honorable members, I find that when we are having a discussion on a particular question, some members raise their hands. We have a mechanism that those of you who seek information from the Honorable Minister on that particular question may send your slips to the table office. That is being done by most of you. Some of you may do the same. 17.
So what do we do? Honorable Minister. House Chairman, sir. Shri Sasmit Patra. Thank you for this opportunity. The Honourable Minister has given a very detailed reply, and I thank him for that. It's specific to Odisha that I want to raise this question. Honourable Minister has mentioned that at the Paradip port of Odisha, the relative sea level change has been 1.03 millimeters per year for the duration of year 1966 to 2005. And the NDMA therefore has constructed a saline embankment in the state of Odisha to avoid the flooding and ingress of salinity. My specific question to the Honourable Minister would be to give details regarding the saline embankment in the state of Odisha. What is the length of it and how does it help protect the coast of Odisha from the ingress of salinity and avoid the flooding with respect to the relative sea level change? Thank you. Honorable Minister. Chairman, sir, since the question was in general not pertaining to Odisha, but I would not mind coming to that. But before that, I would just like to share with this august House that considering the issue of erosion, which the Honourable Member has very wisely raised, and which is often not discussed either in public debates or even in the Parliament, the National Disaster Management Authority has recently taken two initiatives broadly, which apply to all the coastal states, including Odisha. Aid that to formulate a national policy to address the present as well as the future related erosions through mitigation and rehabilitation. So that would also, to an extent, address the concern raised by the Honourable Member. And mitigation policy, which clearly defines the localized interventions required to reduce the erosion. And secondly, at the same time, they have also floated a fund, which is known as the National Disaster Mitigation Fund, under Section 47, bracket A of the Disaster Management Act 2005. So this fund is exclusively meant for the purpose of mitigation in respect of disasters covered under the Disaster Management Act. So having said that, now as far as the erosions are concerned, in general, before that I would also mention over here that this is the government which has for the first time given due consideration to the ocean-related and coastal-related concerns. Only recently we had the world's largest coastal cleanup campaign because we have the longest coastal area, 7,500 kilometers, and we have an ocean which is named after the country called the Indian Ocean. So we had the 75-day campaign which began on 3rd July, culminated on the 17th of September on the International Coastal Cleanup Day. And this is also the first government which is now seeking to explore the ocean resources. I might reiterate in this House a very significant fact that the Honourable Prime Minister not once but twice from the ramparts of Red Fort in his Independence Day address has referred to what is now being described as the Deep Ocean Mission, which is being launched by the Ministry of Earth Sciences. He spoke about it in the Independence Day of 2021. He again reiterated in 2022 just to emphasize, because the future 25 years, the entire economy of India is going to be supplemented from these ocean resources, which are both living as well as non-living, the living being the fishery, etc., the non-living being the minerals, metals. So the huge property line. No, I'll come to that. I'm just, I'm educating you. I'm educating you before educating him. Now, coming specifically, though I could have, I hope Mr. Jairam will appreciate, I could have easily escaped out of this question, because it's not per se Odisha related. But I'm offering myself, so I hope you'll appreciate that, instead of, being sarcastic about it. Minister, so I will mention. One second. I would urge that keep in mind the chairman. Yes. If there is an issue between the Honourable Minister and the member, I am to be the platform. Yes, sir. And these are the days where electronic platforms are extremely effective and impactful. Yes. Let us believe in the human platform also. Yes, sir. So, Chairman, sir, though the question was not Odisha specific, but I am responding to that. Odisha has a coast of 550 kilometers long, and I am glad that compared to the honourable member who asked it, the others are more interested, even from down south. So 550 kilometers long is your coastal area, 26% erosion has occurred, 23% is stable, 51%
is already in the process of being covered. The sea level rise was 1.03 millimeter in the last about 30 years, beginning from 1966 to 2005. Puri district has the erosion maximum of 15%, stable 70%, and it's being taken care of 78%. And all these other measures which are being taken in respect of other coastal areas are being taken here also. So I have exceeded my brief, Chairman, sir. Thank you. Mr. P. Wilson. Sir, both in Chennai as well as Karaikal, the Indian Meteorological Department is utilizing worn-out equipments, and even I would say it's outdated equipments, which is wrongly recording the weather conditions. It so happens, sir, in November and December, the weather department said it is a sunny day, but we received heavy floods on that day. Sir, have you taken any steps to replace these worn-out equipments with the updated latest equipments? Thank you, Chairman, sir. Honorable Minister. The honorable member is well taken. Of course, it was pointed out. I personally visited that spot also. We have one of the oldest setups over there at Chennai near the harbour. And it is in the process of being replaced, updated, because this updating has to go on from time to time. Because the technology is changed, we move over to the next generation. Like now we don't no longer use lighthouses. We have one of the finest lighthouse for ship movement in Chennai, which is no longer now because we have other means. So similarly, it is in the process. Sri John Britas. Thank you, Chairman. Sir, when we lose 1 inch of land at the border at LC or LOC, these are headlines. But we lose hectares of land at the coastline. For example, in Kerala, during the last 1 decade, as per the study by the Kerala University, more than 700 acres of land has been lost to the sea. And 41% of the coastline of Kerala is vulnerable. I would like to know from the Minister, does the Centre has a specific plan to ensure that our precious land is not lost and the lives and livelihood of the people are not affected? Thank you, sir. Yeah, Chairman, sir, the member's concern is well taken. There are certain specific issues related to Kerala. One of them, what is popularly described in Malayalam language is Kalla Kadal, if I pronounce that rightly, is they have these 12 waves happening almost every year. Kalla Kadal, is it? No. What is, how do you use? I wrote it in English. Okay. So Mr. Muralidharan should teach you some Malayalam. Okay. So thanks for correcting me. So what I am saying is that it's happening almost every year, and the institute related there, the Information Ocean Institute in Chennai, has now developed pre-warning devices for that, and is also taking steps to develop some remedial measures. Because I agree with him that this part of the coast is a little more vulnerable for its own reasons. Question number 18, Sri Sujit Kumar. Number 18. Honorable Minister. Statements laid on the table. Supplementary one. Sir, in our country we have something called the Antiquities and the Art Treasures Act of 1972, wherein there is a penalty of up to 3 years for anyone trying to export any antiquity or art treasure. Sir, in my view, this is pretty inadequate because these antiquities and treasures of ours are priceless. So, sir, will the government consider amending this act to increase the penalty provision and make it very stringent so that instead of 3 years, we can enhance it up to 10 years of penalty, which will deter the antisocial elements and the criminal elements who are stealing and exporting these antiquities of ours to other countries? Honorable Minister. Already being worked at, and we'll inform the member also. The work is in progress on this ground.
We are already working on the amendments to this act. Second supplementary. As per the government reports, there are close to 4,400,000 heritage structures and ancient temples in our country, and 22,000 of these are in the state of Odisha. Now, sir, I would like to know from the Honorable Minister whether there is any proposal to formulate a national heritage protection policy, because we do not have any such policy as on date, and whether the government will consider creating a database to, sir, document all these ancient treasures of arts, and we can use modern technologies like blockchain to do so. Thank you very much, sir. Honorable Chairman, sir, this is under national mission for tabulating all these acts and artifacts is already a work in progress. The work is being undertaken, and that's how these antiquities have already been listed. And members, right, it is more than 3 lakh, close to 4 lakh pieces and above, which have been documented in particular state, and overall 8 lakhs and above. So far as data management and blockchain technology, etc. is concerned, that work is also being undertaken, and for other aspects as well, we are in touch with IIT Delhi, and that project is being worked at. Shri N.R. Ilango. Honorable Chairman, sir. Sir, the copper plates of Rajendra Chola, which mentions about the grant given to Buddhism by his father, Rajaraja Chola, those copper plates are now in Leiden Museum. They are now called as Leiden plates. Similarly, copper plates of the Pandya kings, which are called as Velvikudi plates, are in London Museum. Will the minister please to state what are the steps taken by this ministry to bring back those copper plates to India, and what is the progress on that? Thank you. Honorable Chairman, sir, we have been in touch through the MEA with these governments, and we are constantly working to retrieve them and bring them back. And that is again a constant process which our ministry is working at, and both ministries are coordinating, because as a policy, post UNESCO convention, these have been acted upon, and post 2014, 229 artifacts have been brought back by the country. Earlier, before this period, from 47 till 2014, only 11 artifacts were brought back. So it's only a matter of record that this is how government's operating right now. Shri Rakesh Sinha. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दुनिया के 81 देशों में हमारे एंटिक्विटीज पड़े हुए हैं। क्या भारत सरकार को इस तरह का सर्वे कराएगी कि इनकी संख्या क्या है, और किस किस समय ये एंटिक्विटीज गए हैं, और इनमें से कितने को वापस लाने के लिए कोई संधि हो, या हम दूसरे रास्ते से उसे अपने देश में वापस लाएं? धन्यवाद। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, इसके ऊपर यूनेस्को की कन्वेंशन है और उसके कई आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स के मुताबिक जिन भी देशों ने उस पर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, वो ड्यूटी बाउंड है रिट्रीव करने के लिए, और लगातार भारत सरकार इस काम में जुटी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से अब तक 229 के आसपास जो आर्टिफैक्ट्स आए हैं, 223, वो सबसे अधिक 14 के बाद अब तक आए हैं, और उससे पहले केवल 11 लौटे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, अगर वहाँ से कोई आर्टिफैक्ट जाता है तो उसकी FIR आदि होती है, जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉजियर होता है। लेकिन जब राज्य सरकारों के माध्यम से कुछ आर्टिफैक्ट जाते हैं, उसका डॉजियर डॉक्यूमेंट FIR हम लोगों के पास नहीं होती, और जो प्रोसेस है उसकी CBI को इन्फॉर्म करने की, कस्टम एजेंसीज को इन्फॉर्म करने की, अन्य प्रोसेसेस, वो भी बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। तो इस कारण से हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उसको प्रूव करना होता है, उसकी एविडेंस देनी होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, और कई बार एंटिक्विटीज, लिस्टेड एंटिक्विटीज भी नहीं है, और उनकी चोरी भी कहीं लिस्टेड नहीं है। तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बावजूद उसके हम लोग इस पर कार्यरत हैं। श्री राधा मोहन दास अग्रवाल। महोदय, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद जी को 26 जनवरी 1950 को एक विशेष घड़ी प्रस्तुत की गई थी। देश में ऐसी सिर्फ 2 घड़ियां थीं, एक उन्हें दी गई और एक तत्कालीन प्रधानमंत्री को दी गई। वो घड़ी
सदाकत आश्रम के म्यूजियम में रखी गई थी। वहाँ से वो घड़ी गायब हो गई। 2011 में जेनेवा की एक संस्था, नीलाम करने वाली संस्था स्टोथबाई ने उसको नीलाम करने का प्रयास किया। राजेंद्र प्रसाद के प्रपौत्र गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया और वहाँ के एम्बेसडर को ये सूचना पहुँचाई। ये नीलामी रुक गई, लेकिन न जाने किन कारणों से नीलामी तो रुकी, लेकिन वो घड़ी वापस में सरकार के जानकारी में होने के बावजूद वो वापस नहीं लाई गई। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि क्या उतनी महत्वपूर्ण घड़ी जो राष्ट्रीय अस्मिता से जुटी हुई है, सरकार इससे संज्ञान में लेगी, उसे खोज करके भारतवर्ष से वापस लाने और सदाकत आश्रम तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे को इसकी स्पेसिफिक केस की जानकारी नहीं है, वो प्राप्त करके मैं आपको सूचना अवश्य दूंगी। और अगर वो रुकी है ऑक्शन, तो जाहिर तौर पर उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप के बिना वो हो नहीं सकता। तो भारत सरकार ने इस पर काम किया, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है और क्या डॉक्यूमेंटेशन है, मैं वो इंफॉर्मेशन लेकर पास ऑन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 19, श्री हरभजन सिंह। नमस्कार सर। सर, मेरा जो प्रश्न मैंने पूछा था विदेश मंत्री जी से, जी, क्वेश्चन नंबर 19। Honorable Minister. Answer is laid on the table of the House. Supplementary one. Sir, I'm quite satisfied with the answer. Right. Well, one of the ablest bowlers is satisfied with the batsman. Shri M. Thambidurai. Thank you, Chairman, sir. Sir, you can be umpire. Because when batsman and bowler have settled the issue. Sir, the minister replied in that he stated that Immigration Act 1983, only those recruiting agents that are registered with the Ministry of External Affairs are permitted to recruit Indian citizens for overseas employment. And also he has said, it has been noticed that several travel agents with a license from state government are also conducting the business of manpower recruiting for overseas, which is illegal. Sir, when he said like that, we have come across so many problems in the country, especially in Tamil Nadu. Recently, we have seen some kind of problem, recruited and taken to Thailand, then come to Burma, and suffered a lot. And we requested central government at that time to help us to bring that labor from that side. Whether I want to know from the minister, sir, when there is the employment exchange, yes, the officers are there, why can't you allow those agencies to recruit instead of private agencies? Honorable Minister, or not, whether Honorable Minister. Commission, I would like to inform the honourable member that before I come to the specific issue of the those who have been taken to Thailand from Tamil Nadu as well as from other states, I would like to inform the House that we have a very large migrant population. We have a diaspora of 32 million. And during the last 8 years, the government has been making all efforts to see that and to facilitate the overseas, those who are desirous of taking up overseas employment. They are facilitated. The passport services have gone up by 500% during the last 8.5 years, from 110 officers to more than 500 officers, where the processing of passport services are being done. On the specific case of the issue of illegal recruiting agencies, sir, I would like to submit through you that even though the recruiting agencies have to be registered with the Ministry of External Affairs, any illegal recruiting agency or any agency who is involved in recruiting people,
that comes under the law and order, which is under the domain of the state government. So, on behalf of the MEA, on the part of MEA, we inform the state governments to take due prosecutional efforts as activities, and during the last few years, we have such more than 2,000 cases which have been brought to the notice of the state governments. And I would also like to mention that the state governments should be more proactive in taking up those cases to a logical end. Coming to the issue of the people who have been taken to Thailand, we are aware that 114 persons from Tamil Nadu were taken, but most of those cases were recruited through social media, not through any recruiting agency. But in spite of that, the government of India and through our embassy there, with the cooperation of the Thailand as well as Burmese authorities, we have been able to bring back more than 250 people who were taken illegally back to India. Srimati Fozia Khan. Thank you, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister that there's an Urdu daily called Siyasat. It has reported that about 4,000 Indians are languishing in the prisons of Gulf countries, with Saudi Arabia being the highest number, mostly because of the crimes committed under the kafala system. So, what measures can the government take to bring these people back, along with regulating the travel agencies to facilitate such emigration in the first place, sir? I would also like to ask the Minister whether the government might think about trackable passports by installing microchips in the Indian passports with the use of emerging technologies to stop illegal immigration of Indians traveling across borders. Yes, like we did in 2,000 rupees. Sir, regarding the honorable members' question regarding Indians in the jails abroad, through you, I would like to inform the honorable member that government is making all efforts for a safe and secure return of every Indian who is in any problem abroad. And those who are in the legal process, we need to pursue the legal process, and our missions have been helping our Indian diaspora, members of the Indian diaspora who are in jails, who are facing difficulties, including providing legal aid to them. So all efforts are being undertaken for their release through the legal means that is there in that country. Shri Imran Pratapgadi. पूछना चाहता हूं कि यूएसए की जो नई वीजा पॉलिसी है उसमें भारतीयों के लिए 3 साल की लंबी वेटिंग रखी गई है। एक बड़ा तबका यूएसए जाता है भारत से, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस 3 साल के लंबे इंतजार और इसकी वेटिंग को कम करने के लिए क्या कोई वार्ता हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, कोई प्रयास हो रहा है या नहीं? Even though through you I would like to submit that even though this supplementary is not part of the topic that has been raised as the main question, I would like to inform that the granting of visa is a sovereign right of a particular country, of that country. But in spite of that, I would like to inform that the government under Prime Minister Narendra Modi has been taking up the issue of granting of visa. Is the process of visa granting bilaterally with every country, especially with USA. Honorable members, it is music to my ears when honorable members ask questions through me
and respond through me. Honorable Minister has done it, exemplifying this wholesome situation. Question number 20, Professor Manoj Kumar Jha. Yes, sir. Honorable Minister. उत्तर सभा पटल पर रखा गया. Supplementary one. Thank you, Honorable Chairman, sir. My first supplementary to Honorable Minister Saab. The Ministry in April 2022 informed that over 63% of ESIC doctors' positions were vacant in Bihar. I'm speaking about my state only. Whether the government has been successful in filling vacancies for doctors and nurses in Bihar's ESIC hospitals. माननीय सभापति महोदय, ईएसआईसी में अभी तुरंत ही मेडिकल और पैरामेडिकल की लगभग 6000 के करीब वैकेंसियों की भर्ती की गई है और शीघ्र और वैकेंसियां भी निकाली जा रही है. जिन अस्पतालों में डॉक्टर्स की स्थायी उपलब्धता नहीं है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया गया है. बिहार में विशेष रूप से बेहिटा में हम लोगों ने बड़ा मेडिकल कॉलेज खोला है, जिसके लिए आईपी के साथ साथ बेहिटा में जो पटना के पास है, अन्य जो लोग हैं उस आसपास के लोगों को भी हमने उसका लाभ दिया है. लगभग 1.5 लाख के करीब उसमें लोगों की ओपीडी की अभी सुविधा दी गई है. ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे पास पर्याप्त रूप में चिकित्सक उपलब्ध है. सप्लीमेंट्री 2. माननीय सभापति महोदय, उत्तर से तो संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन भाव से संतुष्ट होना पड़ेगा. दूसरा प्रश्न है माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारे साथी नीरज जी ने कहा हिंदी में बोलिए, तो इंटरनेशनल लेबर रिपोर्ट है सर, वो भी इसी वर्ष की है, जिसमें यह कहा जाता है कि 50% से ज्यादा जिन्होंने ईएसआई की सुविधाएं ली है हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, वो संतुष्ट नहीं है आपकी सेवाओं से. आपसे मेरा मतलब ईएसआईसी की सेवाओं से. क्या सरकार ने इसके लिए कोई फीडबैक मैकेनिज्म इवॉल्व किया है, या कारण तलाशे हैं, या कोई एक प्राइमरी सर्वे किया है, जिससे कि आगे ये प्रतिशत 50 से कम 5 पर पहुंचे? धन्यवाद माननीय सभापति महोदय. ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, मेरे को जानकारी नहीं है कि हमारे माननीय सदस्य किस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं. ऐसी कोई अधिकृत रिपोर्ट माननीय सभापति महोदय, अभी भी मेरा संशय बरकरार है, क्योंकि इस प्रकार का कोई इंटरनेशनल सर्वे ईएसआईसी का हुआ हो मंत्रालय के ध्यान में नहीं है. The honorable minister will invite the honorable member for a cup of tea and deal with the issue. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी पिछले ही दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोशल सिक्योरिटी का मार्केश में, जो मोरक्को में एक जगह है, वहाँ पर बड़ा सम्मेलन हुआ था और भारत की ईएसआईसी योजना को दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से गिना गया. उसका कारण यह है कि हमारे 3 करोड़ 10 लाख हमारे आईपीज हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा हमारे लाभार्थी हैं. देश के 160 अस्पतालों में और 1502 डिस्पेंसरियों में और 18 मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज होता है. लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि श्रमिकों के योगदान से चलती है. लेकिन जो दुनिया में इसकी जो चर्चा है वो इस बात के लिए है कि एकमात्र ऐसी स्वास्थ्य योजना है जिसमें अपर लिमिट कुछ नहीं है. एक श्रमिक जो न्यूनतम अपना अंशदान करता है, इलाज पे उसकी अधिकतम जो कुछ भी खर्चा होता है उस पर कोई सीमा नहीं है. मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि ईएसआईसी के अस्पतालों में अब हम अधिक से अधिक सुविधा दे रहे हैं. जैसे हमने फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की भी सुविधा दी है. ईएसआईसी का एक जो डेंटल मेडिकल कॉलेज है वो नंबर 2 पे भारत में एक्रीडेशन में है, और इसमें हम मेडिकल शिक्षा के साथ साथ जो हमारे मजदूरों के बच्चे हैं उनके लिए भी हम आरक्षण की व्यवस्था रखते हैं और एक सम्मान पूर्वक हम स्वास्थ्य योजना मजदूरों के लिए चलाते हैं. मैंने माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध किया कि हमारे प्रतिभाशाली सांसद इनके साथ चाय पर चर्चा करें, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है 10 साल से ज्यादा का कि मंत्री जी किसी भी परिस्थिति में हो, चाय पर जब चर्चा करते हैं बड़ी सार्थक होती है. श्री रामनाथ ठाकुर, लीडर ऑफ द हाउस. सर, आई डोंट नो वेदर माननीय सदस्य को कोई चाय पे चर्चा पे आपत्ति ना हो, वो भी सदस्य का व्यू ले लिया जाए. आपकी बात से सहमत हूं. चाय पे चर्चा
चर्चा नहीं होगी, चाय के बाद चर्चा होगी। I offer myself every day चर्चा between 10 and 11 और उस पर पेय पदार्थ क्या होगा within permissible limits is left to the discretion of the honorable members. श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में सिर्फ 4 हॉस्पिटल हैं। क्या समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सुपौल में एक और अस्पताल खोलने का कृपा करेंगे और कब तक करेंगे, यह भी सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, हमारे दोनों ही सदस्यों के बिहार में राज्य सरकार है। हमने मुजफ्फरपुर में 100 बेड का अस्पताल मंजूर करा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार के साथ हमारे कोई भूमि की अनुशंसा नहीं आई है। हमारा जो ईएसआईसी है पूरी तरीके से अस्पताल खोलने के लिए तैयार है। उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा फुलवारी शरीफ में, बेहिटा में अस्पताल चलते हैं, लेकिन 2 अस्पताल राज्य सरकार के ईएसआईएस के द्वारा संचालित हैं, जो मुंगेर और डालमिया नगर में है। मैं यह भी माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राज्य सरकार को चाहिए उसका संचालन करे। वो भी अभी अस्त व्यस्तता के कारण बंद है, जिसके कारण वहां के मजदूरों को नुकसान होता है। बिनोय विश्वम। Thank you. Not through you, but straight to the minister. No, he suggested that. He suggested that. The Honorable Chairman, I thought that you suggested that not through you, we can ask straight to the minister. Am I right? Am I right? Am I right? Then Chairman, excuse me, pardon me, through you, I may ask the minister. We all have heard your claims that the ESI facilities and protection is going to be extended to the laborers from unorganized sector and contract laborers. Now it stands in many ESI hospitals. They are understaffed, no equipments are there, and they are facing a lot of difficulties. Have the government made any estimation how big can be the number, and is the government equipped to entertain or cater the needs of tens of thousands of workers that may come into that category? Thank you, sir. श्री ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि ईएसआईसी की सुविधा का विस्तार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होना चाहिए, और हम भी ये मानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर ये तुरंत विस्तार होगा तो 15 से 20% तक हमारे लाभार्थियों की संख्या और उनकी संख्या बढ़ेगी। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि भारत सरकार जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड लाई है, जिसको लाना लंबित है और हम इनकी ट्रेड यूनियन से बात कर रहे हैं, उसमें विशेष रूप से ये स्कीम बनाई गई है कि सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक इसको विस्तृत करना चाहती है। मैं चाहता हूं सब यूनियन जो साथ आ रही हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड जैसे ही लागू होगा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लागू अपने आप ही कोड की स्कीम के अंतर्गत होगा। श्री जीवीएल नरसिम्हा राव। First of all, I'd like to compliment the Honorable Minister and the government for sanctioning a number of new ESI hospitals in the country. But my question relates to the delay in the construction of several sanctioned hospitals. In the state of Andhra Pradesh, sir, 7 new hospitals have been sanctioned. In 4 of them, state government has not even handed over the land. So I would like to know, Honorable, from the Minister, what steps can be taken to expedite. And in Visakhapatnam, the land has been awarded and 384 crores has been sanctioned also by the ESI Corporation on 1st February 2022. So I would like to draw Honorable Minister's attention to kindly expedite this construction of hospital in Visakhapatnam, because this will benefit nearly 4 lakh ESI beneficiaries. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों ही ईएसआईसी कॉरपोरेशन की बोर्ड की बैठक पिछले सप्ताह में हुई है। अभी तक हमारा जो
कंस्ट्रक्शन था वो ज़्यादा CPWD के माध्यम से था। अब हमने सरकार के जो अन्य इस प्रकार के संस्थान हैं, सरकारी संस्थान जो इस कंस्ट्रक्शन में शामिल रहते हैं, उनको इसके लिए ओपन किया है। दूसरा, हमने जो हमारे 76 अस्पताल अभी निर्माणाधीन अवस्था में चल रहे हैं, उसके लिए एक डैशबोर्ड बना करके एक समय सीमा का भी हमने निर्धारण हमारे हेडक्वार्टर के द्वारा किया है। तीसरा जो विषय है वो हमारी ज़्यादा दिक्कत आती है लोकल अथॉरिटीज़ में जो विभिन्न तरह की सैंक्शन है, उसके लिए भी हमने एक सुचारू व्यवस्था का निर्माण किया है। और चौथा, हमने अब एक प्रस्ताव अपने कॉरपोरेशन में पास किया है कि एक समान स्ट्रक्चर को हम एक निश्चित तरीके से लगा के, ताकि जो कंस्ट्रक्शन की अवधि 4 से 5 साल है उसको हम कैसे घटा करके 2 साल में करें, इसके लिए हमने कुछ निर्णय लिए हैं, जिसको मैं माननीय सदस्य के भी संज्ञान में तुरंत भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21, श्री घनश्याम तिवारी। प्रश्न संख्या 21। ऑनरेबल मिनिस्टर। उत्तर सभा पटल पर रखा है माननीय। सप्लीमेंट्री 1। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के 2 भाग थे। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि एक भाग का उन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन दूसरा जो भाग था उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा। मेरा प्रश्न था कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनका वर्णन दिया है। मेरा सनातन संस्कृति के स्मारकों से मतलब है जिस प्रकार से अभी महाकाल के मंदिर का इतना बड़ा काम हुआ, प्रधानमंत्री जी त्रिपुंड लगाकर वहां पर गए, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ का हुआ, जिस प्रकार से केदारनाथ का हुआ, जिस प्रकार से बैद्यनाथ धाम का हुआ, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सब 12 ज्योतिर्लिंग उनका और अन्य सारी चीजों का उनके उत्थान के लिए भारत सरकार की कोई योजना है, तो उस योजना के बारे में मेरा प्रश्न था और मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि उस प्रश्न का वो जवाब दें। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसका उत्तर तो इनके प्रश्न में ही आ गया है कि वो स्वदेश योजना और कई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है और उसमें राज्य सरकारों की जिस प्रकार की मांग होती है और वहाँ पर आने वाले यात्रियों का भाव रहता है, तो वो हम कर ही रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री 2। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता था कि जब से भारत पर 742 ईस्वी से लेकर आक्रांताओं ने हमले किए, उन हमलों में हमारी जो सनातन संस्कृति के तत्वों को नष्ट किया गया, उनके पुनरुत्थान के लिए जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, उसमें हमारा क्या योगदान है, वो हम क्या करना चाहते हैं, वो पूछता था। सांस्कृतिक माननीय अध्यक्ष जी, जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की व्यवस्था की बात मेंबर साहब ने की है, तो उसके उत्तर में मैं यही कहूंगी कि वो पुनरुत्थान का ही काम चल ही रहा है और वो सबकी निगाह में है। श्री जयंत चौधरी। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय जी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आपने एक सूची प्रदान की है जिसमें ASI के जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप संरक्षण दे रहे हैं और जिनको आपने नोटिफाई किया है, तो उस सूची में आप देखेंगे कि सादिकपुर नाम से जो बागपत जिले के का एक स्थल है उसका जिक्र है। ये एक्चुअली सिनौली नाम से प्रसिद्ध है और बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का स्थल है। 4000 साल पुराना इसका अनुमान है और कई अवशेष वहाँ मिले गए हैं जो और जांच का एक विषय बनेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी अलग और भिन्न है। उसमें महिला योद्धाओं के अवशेष हैं, रथ है, तांबे की बनी तलवार है। मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अभी वहाँ जो 350 बीघे पे खुदाई होनी थी उसकी गति धीमी है और वहाँ के लोगों को ये जानकारी नहीं कि उनको मुआवजा कब मिलेगा, किस दर से मिलेगा। और वहाँ जो संग्रहालय का निर्माण होना था, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो संग्रहालय का एक निर्माण है और इस साइट को प्रॉपरली कंप्लीटली जो इन्वेस्टिगेट करने की बात है, कब तक उसका पूरा हो पाएगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे को इसकी स्पेसिफिक जानकारी अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन सिन्हौली से निकला हुआ जो भी सामान है वो ग्रेटर नोएडा के हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बन रहा है वहाँ पर रखा गया है और उसके ऊपर काम जारी है। उसकी एग्जैक्ट स्थिति क्या है वो जानकारी मेरे पास स्पेसिफिक नहीं है, मैं आपको ज़रूर
उपलब्ध करा दूंगी। और ये हमारी नई फाइंड्स में से है, जो 5 नई जगहें मिली हैं उसमें से एक ये वाला स्थान है जो अभी कुछ समय पहले उसके ऊपर पढ़ाई और रिसर्च शुरू हुई है, डॉक्यूमेंटेशन। श्री विजय साई रेड्डी जी। Sir, I would like to know from the Honorable Minister in respect of showcasing the ancient culture. Number 2, conservation of the ancient culture. Number 3, safeguarding the antifacts and getting back the antifacts that have been stolen out of India. And what steps the government of India is taking in this regard, and whether G20 presidency to highlight the ancient cultures and then use that platform to get all these 4 issues addressed. Thank you. Honorable Minister. Very much, Chairman, sir. My colleague and friend has been very polite, so I have not really heard him completely. But if I can catch on the last few words, which I caught on, was about G20 platform being used for propagating India's culture. That is very much the purview of the government of India, and we have constantly been engaging with all G20 countries, and you'll be happy to know that recently, just 2 days ago, we had a program in Udaipur, and at any place that we are taking these delegates, we are mixing, we are showcasing that science and technology part along with the digital revolution which this country has undertaken, and the ancient heritage of this country is part of every such program. And I'm grateful to him for highlighting this. So far as bringing back the antiquities of our country from other countries is concerned, so again I refer back to the UNESCO Convention, in which between the 2 signatory countries, the countries have to protect the heritage of the other country, and on request they have to provide. Many countries we are working with. Recently, the minister Foreign Affairs Minister from Scotland was in the country, and we have discussed with them also. We are working on that project. All the ministers who are visiting, or we are visiting them, we are making those requests constantly, and a whole lot of things are in process and in pipeline. And as and when this happens, we ensure that these artifacts go back to their place of origin. But there are several difficulties, because in the past we did not have proper documentation, and we did not even have theft being reported. So there are difficulties in these aspects. So at times it depends on the member states' discretion that they wish to return or not, because we are unable to prove the theft part of it. I can add from my side, G20 is going to be a very important occasion. During my 2 visits abroad, I found in the people an air of expectation. They expect, and rightly so, that in the land of culture and civilization, the event will be unique, an occasion for them to feast on our cultural wealth. And that is both a challenge and opportunity to us. Input to me is that everyone is concerned to make available and showcase India in the most authentic fashion. I call upon all the members to give their own inputs also to the chair, and I will act as a platform to catalyze that their constructive ideas, imaginative inputs are also put into practice. This may be done within fortnight, and I will pass on to the leader of the House, who will bring about convergence of various departments to consider your inputs, so that the world comes to know our cultural power, our cultural wealth, and what India has offered to the world. Shri Tiruchi Siva. Please, Leader of the House. The other day mentioned that this G20 is not of the ruling party or of the government. It is for the whole nation. And therefore, this is a very good initiative
which will have members participating in this very important program. I compliment you on this initiative. Let me respond to the honorable member. Leader of the House and leader of the opposition, to the extent I am concerned, have a very special position. As also the benefit we have in the house of two former prime ministers. Believe in the chair is not partisan, the chair is national. And what I have indicated is what I have felt. So we all must rise to a level on certain issues where partisanship is totally not taken sight of. Let me give an illustration. If on an issue, Honorable former Prime Minister S.D. Devagowda would like to speak, that will be an input to the entire nation. I would first look at him, his vision, and then the rule book. Same when my very dear friend Jairam Ramesh, on an issue of which he has great depth of knowledge, would like to intervene, as he will be doing in the afternoon today. One second. And if it is question hour or any hour, every moment, I have no doubt about it, having been a serious student of parliamentary practice at global level, Mays parliamentary practice, Colin Sakdar, and the views that have been taken in both the houses, the chairman is the ultimate custodian and protector. Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. Sir, in the state of Tamil Nadu, in Tanjavur district, there is a Kallanai, a dam, which was built in the 1st century by the Chola king Karihalan. Sir, it has withstood the onslaught of time for 2000 years and is considered to be one of the first ever water reservoirs constructed in the world. Greek and Rome people have come here to witness that. So it serves to it caters to the needs of the Delta region, and I would request the minister, would the minister consider of exploring the possibilities of declaring that reservoir as a World Heritage Site, considering its age of 2000 years? Honorable Minister. Minister cannot do it. Thank you very much, Chairman, sir. The members' remarks are appreciated. Only if the state government writes to us, we can work on this project. Question number 22. Sir, may I just mention one more line? Go ahead. That maybe if the reservoir is in working condition, and we could also bring it under Amrit Sarovar. That is also a possibility. But only if we get some documentation from the state, it'll benefit the whole country. Honorable Finance Minister. Correct, subject to correction. It was in one of our announcements of the government that this being such an ancient dam, for its preservation and maintenance, we will give an allowance. We've announced that Kallanai will get that kind of it's a different issue altogether, announcing it as a World Heritage. That's a different issue. But the attention given to a very ancient water reservoir named Kallanai, who has been done under the leadership of the Prime Minister, Narendra Modi ji, 2000 years. If I remember correct, if at all a mention of Kallanai and money for it has been announced, it has been under our Prime Minister's leadership. I would like to bring through you this House to recognize that fact. Thank you, sir. Question number 22, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik. Honorable Minister. सदन पर रख दिया गया है. Supplementary one. Thank you, Honorable Chairman, sir. The 4 pilgrimage sites on the Chardham Yatra are located in the Uttarakhand at high altitudes in the Himalayan region, sir.
The circuit consists of Yamunotri and Gangotri in Uttarakashi district, Kedarnath in Rudraprayag and Badrinath in Chamoli. Yatris faces low oxygen level, low air pressure, increased ultraviolet radiation, exposure and low temperature during the yatra. There is an urgent need to increase the health infrastructure near these shrines so that all kind of medical facilities may be provided to the yatris. I would like to know through you, sir, whether the ministry will approach health ministry to create health infrastructure near these shrines so that not only yatris but also local people can get medical care and treatment, sir. Thank you. Honorable Minister. मान्यवर, जब भी चारधाम यात्रा प्रारंभ होती है तो सारी एजेंसी से हमारी बातें होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है। जगह जगह पर हमारे मेडिकल कैंप लगते हैं। हम हर स्पेशलिस्ट को वहां पर भेजते हैं और इसलिए कहीं पर भी कोई ऐसी दुविधा नहीं है कि कहीं पर कोई हमारी व्यवस्था नहीं होती है। व्यवस्था हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहती है। Supplementary to. Sir, there are 4 ways of reaching Yamunotri and Kedarnath. The young and hardy can climb the hill. Who can afford it, take a palki or doli. The third form of traveling is on Kandi. The yatris sit on the basket and the man climbs the hill with it on his back. Needless to say, it is a cruel, sir. The fourth way of traveling is by mule, donkey or pony. The condition of animals is also not good. Around 600 animals died this year, sir. Injuries and lack of facilities for hot water to drink for animals is less. Most yatris are senior citizens who face a lot of problems during yatra. Whether government has any plans to start ropeway at the Kedarnath and Yamunotri dams? If so, the details thereof and how much time it will take in its Honorable operation, Minister. sir. Honorable Minister. मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि जो व्यवस्था वहां आज तक बनी हुई थी, 2013 में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। उसके बाद से जरूर रास्ते वगैरह काफ़ी बर्बाद हुए, लेकिन हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जिन्होंने 2013 से पहले 4 धाम देखे होंगे, अगर आज वहां देखने जाएंगे तो पूरा कायाकल्प हो गया है। सारी व्यवस्थाएं, मैंने पहले भी कहा है कि चुस्त और दुरुस्त हैं। हर चीज की व्यवस्था वहां की जा रही है। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए अभी आपने देखा रोप वे की श्री गणेश कर दी है और वो कार्य भी वहां पर प्रारंभ हो गया। श्री अशोक वाजपेयी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 4 धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड बनाने का सरकार का फैसला था। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी, उसकी प्रगति क्या है? बहुत तेजी से काम चल रहा है और ऑल वेदर रोड ही नहीं बल्कि मान्यवर वहां पर अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कभी तो हम घास पकड़ के मंदिरों में चढ़ते थे, आम आदमी जा नहीं सकता था। जब डिजास्टर आया था उस समय हम खुद घास पकड़ के ऊपर गए और स्लिप होते थे। तो आज वहां पर ऑल वेदर रोड बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और कुछ दिनों में हम रेल से ऋषिकेश से 4 धाम की यात्रा करेंगे। काफी टनल में आगे काम बढ़ गया है। मानिए दी हाउस stands adjourned till 2 p.m. today.
Thank you. Statements by ministers. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House statement regarding status of implementation and recommendations contained in the 366th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment and Forests on demands of Grant 2022-23 pertaining to the Department of Science and Industrial Research, Ministry of Science and Technology. Thank you, Chairman, sir. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendation observations contained in the 34th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. Honorable members, notices have been received under Rule 267 by Shri Binoy Vishwam, Srimati Rajni Ashok Rao Patil, Srimati Priyanka Chaturvedi, Dr. Syed Nazir Hussain. I have carefully gone through the rule. I have gone through all the notices. I would invite attention of this House to the rule as such. The rule is carefully worded. The rule requires certain things to be indicated and duly spelled out. The rule does say it can be raised with the consent of the chairman. That part is complied for the reason it has been put to me. That any rule may be suspended. In not a single notice, there is a reflection as to which rule is sought to be suspended. Now, this House has to emanate a signal to everyone and other theatres. We must engage at least in minimum compliance. I must get assistance as to which rule the member wants to be suspended. Number two, the premise on which the rule is required to be suspended by the member. Further, honorable members, a rule which you have generated, the proviso says, provided further that this rule shall not apply. This is a mandate to me from you, where a specific provision already exists for suspension for a rule under a particular chapter of the rules. I would therefore call upon you that while inviting my attention to act in a particular manner as you deem expedient under Rules 267, please engage into full compliance with respect to the first part and also give exhaustively according to your own perception that there is no other rule where the issue can be raised by seeking separate suspension. Having examined the matter, I convey my decision. We need to put them in order, and that is the situation. I'll get it. One second. Mr. Derek Oberoi. Sir, thank you, sir. Thank you so much, and formally a very warm welcome to the Rajya Sabha. Derek, Chairman, Mr. Derek, belated warm. Yes, sir. Because an invite was extended to you on 2 occasions. Belated? Invited, extended. Belated. Oh, yeah, this could have been done. Good. My colleague Shukhendu is far more qualified to welcome you because he knows he's had a long relationship. No, let me tell you, your Honorable Chief Minister was the first one to congratulate me. Right. So that's... But I am with respect to the leader of the party on the house, in the House. That's very good. That could be for other reasons. Sir, the leader of the House need to know that issue between me and him are privileged. Between me and Derek. Good. Oberoi. Come on, Derek. This is a good start. I mean, leave the politics out. This is a good start.
I mean, a sense of humor in this house will do all of us good. So in the spirit, that's the spirit, we can have a sense of humor. Sir, since you raised a specific question about the 267, and I was one of the members, there were 7 of us. I remember there were 7 parties. There was the Congress surely there, and 5 parties, DMK, Trinamool. This was the last time, sir, to bring to your attention, as a precedent, the rule 267 was in fact used or implemented. And at that time, sir, the notice, and I'm only here to share that notice, and we can discuss it in a decent way later. At that time was November 2016, just after demonetization. There were different notices. Make your point. Yes, sir. Yeah, by one point. There were different notices from members, and all that the notice said was, please implement Rule 267 and take up a discussion on demonetization. That was it. That was the notice, and we had a discussion. That's all I had to say, sir. Nothing more. Thank you. I am grateful. One second. I am grateful to the honorable member. Trust your chairman. This issue which you have flagged was on my table 2 hours before. I am fully aware of it. The point I made was very simple. I will take a call, and that call is my domain. Even if I find an issue where certain things are not up to the mark, it may merit attention. But I would require minimum compliance. And minimum compliance is that some due diligence is done at the level of the honorable member. Yes. Grateful to you. A very good beginning, a warm beginning. And I'm very sure that this will make a difference in the House. The first time the chair mentions about a 267 notice. The practice was just ignore it. Then we were forced to make our voice here. So I'm thankful to you once again. Sir, you regarding the rules suggested your opinion. We respect it. The notice was given to you for the suspension of the business of the House, not only one clause of the procedures. We are demanding you or asking you or requesting you that the remaining agenda of the House today can be suspended for the time being and then take up the issue of urgent importance. This is our point. Sir, thank you so much. Thank you so much for giving me a chance to speak. But this is an important issue. And again, our request is not to break any kind of protocols, because this is the protocol we were made to believe is that we need to follow if we have to raise an important issue. So my request would be, sir, and that is why I sent you this particular notice, that the border issue between Karnataka and Maharashtra is an important issue and needs to be discussed at the national level. So like I said, we are a council of states, we represent our states. Honorable member, let me indicate, let us be transparent. Absolutely, sir. There is an issue. Yes. And the issue is with respect to the requirements of invoking Rule 267. Yes, sir. Now, if an honorable member rises, as you have risen, and seek to make an issue which is tangential, that will be inappropriate. No, if you have anything to say with respect to what I have indicated as regards the rigors of compliance, most welcome. Otherwise, come out with a formalized request. It will receive consideration and there will be structured discussion. Right. Thank you. So just a correction, it's not conjecture, sir, it is an festering issue. And on that, Sri Ilamram Karim. I am raising a burning issue related with the EPFO pension scheme. EPFO is still globally a largest social security organization, but the coverage of it is mostly limited to organized sector industrial workers only. That may constitute below 10% of the total workforce. The unorganized sector and informal sector workers are the major portion in our workforce. They are deprived in many cases. The demand for higher pension
was raising by workers, trade unions and pensioners organizations since several years. Recently, some high courts intervened and a particular verdict came from Kerala High Court to amend the existing rules and give higher and permit to higher option. The case was appealed by government and EPFO, and on November 4th, Honorable Supreme Court gave a verdict and said the amendments to the same, the amendment of 2014 shall apply to all employees, and Supreme Court also allowed another opportunity to EPFO members who have availed of the employees pension scheme to opt higher annuity over the next 4 months. Employees who were existing EPS members, those who are contributing 8.33% of their actual salaries, as against 8.33% of the pensionable salary, capped to Rs 15,000 every month towards the pension. Sir, after the Supreme Court verdict, Union government or EPFO has not given a clear order on this. Because of that, Supreme Court verdict is not came to force. Still the pensioners are walking behind this Supreme Court order. Not only that, the burning issue is, after the decision of Government of India and EPFO, minimum pension raised to 1,000, fixing 1,000 minimum pension. Among the 7 million pensioners, 3 million pensioners are getting an amount lesser than 1,000. This is very sorry of a person. So the pension, minimum pension should be raised up to 9,000 per month. That is my request. And universal coverage of EPFO to all employees in different sectors, informal sector and another sector should be included in the EPFO scheme. That is my demand. I hope that Honorable Minister is here. He may respond a word. Shri P. Bhattacharya. Sir, I raised this issue not only the first time in this house, the jute industry, and so many times. And personally, I also talked to Honorable Minister in regard to this industry and this position. The jute industry occupies an important place in the national economy of India. It is one of the major industries in the eastern region, particularly in West Bengal. Jute, as it is saying that the golden fiber meets the standard of the safe packaging, etc., etc. So jute industry is not only in Bengal. Jute industry we can get in other states too. That is in Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Tripura, and Karnataka, and other places also. I have the 3 important suggestions to Honorable Minister to use that. 1, the jute industry, the government of India, 1987, they came out with an act that jute packaging, particularly certain issues, central government, after considering the recommendation of SSC, may from time to time issue order under the Section 3(1) of the JPM Act of compulsory use of jute packaging material or certain commodity or
class of commodities or percentage thereof, it is satisfied that it is necessary to do so in the interest of the production of the raw jute and the jute packaging material. But unfortunately, sir, what is happening nowadays in the country, the synthetic products, the synthetic packaging, those who are manufacturing, they are so powerful. They are creating some sort of pressure to the government and to the ministry so that the jute, instead of jute packaging, they convert it to synthetic packaging. Sir, my earnest request to the Honorable Government that unless and until to stop this synthetic packaging system, the jute industry will be really in a very, very precarious condition. Sir, lastly, I think honorable members, I have seen some hands being raised a while ago. Those of you who wish to associate with a particular member who has made reflection may send details to the table office. Shri KRN Rajesh Kumar. Honorable Chairman, sir, the Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited, also known as IFCO, is the world's largest fertilizers cooperative federation based in India, which is registered as a multi-state cooperative society. IFCO has 40,000 member cooperatives and is wholly owned by the Cooperative Societies of India. It is engaged in the business of manufacturing and marketing of the fertilizers. Though it is a cooperative manufacturing company, IFCO primarily focuses on fertilizers production in both dry and fluid forms. Nowadays, the IFCO manufacturing the nano urea also of the fertilizers of agriculture need. In the fact, IFCO mission is to enable Indian farmers to prosper through timely supply of the high quality fertilizers and services. Sir, earlier the IFCO was functioning under the administrative control of Ministry of Chemical and Fertilizers. Technically, IFCO should be functioning under the C&F Ministry due to it is a technical nature. That was the suitable ministry. But IFCO has been brought under the administrative control of Ministry of Cooperation, which is the irrational decision. The efficiency of the IFCO might get affected due to the fact that policy-making body will not have enough technical and commercial knowledge to coordinate the global in the field of chemicals and fertilizers, which is the prime focus of IFCO, who has the high expertise in this sector. Sir, quote an example, just because the medical college syllabus are in English, we are not appointing the English professor to teach the medical education. Or the law ministry is connecting all the bills for the ministry. Just because of this, all the department cannot brought under the law ministry. Therefore, I request the Honorable Minister, through this August House, the reallocate the fertilizers manufacturing company, IFCO, to the respective chemical and fertilizers ministry rationally. The consideration and basis of the future of the Indian farmers. Sir, in Ukraine issues, the C&F ministry is coordinate the demand of the fertilizers. Thank you, sir. Srimati J.B. Mathur Hisam. I'm deeply obliged by the opportunity. Thank you very much. So the fishermen community in Kerala is a fundamental part of the society, and they belong to the most backward
backward community, but they serve the society in terms of both professional and social service. They are the ones who helped the entire thousands of people when the state of Kerala faced disastrous floods. And many of them work in gruesome conditions throughout and to feed their families. So many of them who go by spending 10,000 rupees a day on kerosene do not even come back without, they come back without zero catch. So now we have reached a point where the same community fishermen have not gone to sea for past many months because they have been agitating for 140 days for their survival. So their demands have been very genuine. They have not been asking for extensive things. Their demand was to implement a 475 crore package which was promised to them as part of Viഴിഞ്ഞം container port construction. So now their demand, all they ask for is that an increased rent be given, because more than 400 families, fishermen families, are forced to live in cement warehouses where their families are forced to live in places where with adolescent girls and newborn babies in very inhuman conditions, and which are very, very unsafe and which is very, very brutal. So all they ask for is to do a comprehensive study on the sea erosion, and all they ask for is to do to include their member in the expert committee. And these are the basic things they ask for. But despite this being very, very basic requirements, these demands were not met, and so they had to agitate for 140 days. Despite this being for public good, the Chief Minister took 140 days to even hear their pain, to initiate a conversation, and also to discuss these legitimate demands. Although the Home Ministry is the Chief Minister had turned a blind eye earlier, the Home Ministry, which is under the Chief Minister, had all the time to register 2,000 cases against these poor fishermen, sir. So in all these conditions, the bishops, the priests who were supporting this poor fishermen have all been tortured in all this. In that being so, let me get to the point, sir. Let me get to the point. The point is, when there is a package being declared, that should be implemented in a time-bound manner, which is not being done. Now the fishermen have called off their strike day before yesterday, but that is not because their demands are met, not because their demands are met, but because they are forced to, because loss of livelihood. So my request Thank you, Honorable Member. Thank you, Siri. Okay. 30 seconds. Sir, conclusion. Sir, conclusion. Allow me to complete, sir. Allow me to complete, please. Sir, complete, sir. The central government should intervene and provide and support the state government to implement the package and to ensure the rehabilitation of these fishermen are done, and to ensure the natural resources are protected, and also maintain developmental goals. Thank you very much. Honorable members, I have a special weakness for this gender. We need to promote, but I expect very high standards also. Let us not claim indulgence where it is not due. Sri S. Selvagan Bathi. Honorable Chairman, sir, I would like to break the notice of this August House that the Union Territory of Puducherry has no public service commission like other states and UTs in our country. Public Service Commission, as like in other states, is to ensure the recruitment to various posts in Group A and Group B categories in government services will benefit the locals.
There is a huge need of a separate public service commission, which is a major hindrance to the candidates belong to Union Territory of Puducherry in getting postings in Group A and Group B categories. Presently, Group A and Group B vacancies, such as medical officers, specialists in Department of Health, professors in the Department of Higher and Technical Education, Agriculture and Veterinary College, but even vice principal in government higher secondary schools are filled only through the Union Public Service Commission. Since the process of recruitment of candidates has been entrusted to the UPSC, the selection of candidate is done on all India basis. Since the recruitment test is conducted at the national level, Puducherry youth has less employment opportunities. They have to compete at all India level for a job in their own hometown, and only a few have been able to make it. Many persons from other states who get posted to Puducherry, they are very much reluctant to work in Puducherry. Especially they are posted in outlying regions of Karaikal, Mage and Enam. Often they resign or leave their post and leave their hometown. This leads to large number of vacancies in different departments. Furthermore, the language is another barrier for the people who come from outside. Especially in schools, the vice principal is recruited by UPSC and they are not conversant in the local language, that is in Tamil. They are unable to communicate between the teachers and the students without knowing the local language. It creates vacuums and the problems of the students and teachers could not be assessed by the head of the institutions. Puducherry is competent to have its own employment legislation with the concurrence of the Center for filling up Group A and B posts, only when it has its own Public Service Commission. Therefore, I would request the Ministry of Home Affairs to kindly consider for setting up a separate Public Service Commission in the Union Territory of Puducherry as like other states, since Puducherry is an union territory with a legislation. Thank you very much. Shri P. Santosh Kumar. I would like to draw the attention of this August House to the problems of gig workers in this country. Yes. According to the reports of Nidhi Ayog, we have at least 8 million gig workers, mainly food online workers in this country. So in many parts of this country, especially in Cochin, Bangalore, Ahmadnagar, gig workers are on strike and the demands are very genuine, and I urge the government's intervention through you to protect the basic labor and human interests of these gig workers. For example, they're getting just 5 rupees for a delivery, and with these 5 rupees, they have to pay the fuel charges also. So we don't have any laws to protect the genuine interests of these gig workers. And moreover, no ESI, no PF, nothing related to the social security is there. So there is an urgent need of government's intervention, and according to the government, Nidhi Ayog, there is a chance of the enhancement of this number. This number may expand to 24 million within 4 or 5 years. So at least the government should take necessary steps to convene the so-called country heads of these online platforms, and there must be an initiative to protect their interests. This is sort of. Shri Jawar Sarkar. Sir, thank you for the opportunity. I wish to draw the special attention of the House to the dire necessity of increasing the rates of reimbursement of treatment, medical tests, equipments, etc. under the central government health scheme. As you are aware, sir, about 2 crore people are involved, including members of this House who avail of the facility. Unfortunately, these rates were fixed about 10 years ago, 8 or 10 years ago, and I'll just give a small example. The scale of payment fixed for CGHS are totally unsatisfactory and below market rates. For example, an RCT or root canal treatment of the tooth
that costs 8,000 rupees in the market is reimbursed for rupees 500 only. That's all. Somnographic test for sleep apnea is fixed by clinics all over India, 10,000 to 12,000. The reimbursement given to CGHS is 638 rupees. This is not only irrational, so this is totally unjust. It's a due of the members of this house. It's a due of about 2 crore government employees and pensioners. Lumbar puncture costs 8,000 to 10,000. CGHS gives 600 rupees. I can go on giving more examples, but the fact that I wish to raise to this house is that this gross injustice needs to be contested, and a resolution to prevail upon the health and finance ministries to revisit these rates, to make it somewhere logical. Somewhere logical. They are quite a joke now. With these words, I thank you, sir. Shri M. Sanmugam. Thank you, Chairman, sir. I want to raise the issue of the 67 lakhs employees provident pension scheme pensioners issue, sir. Their main demand is enhancement of minimum pension rupees 9,000 on the basis of recommendation of the Hoshiari Committee. Number 2, payment of dearness allowance along with the pension neutralize the price index. Number 3, release the higher pension on actual salary as per the orders of the Honorable Apex Court on 4/10/2016 and 1/4/2019. Free medical treatment to all EPS 95 pensioners and their demands. Sir, there are about 67 lakhs EPS pensioners in the country are getting fixed pension ranging between rupees 400 to 4,000 per month without dearness allowance to neutralize the price index, and half of them are getting less than the 1,000 rupees pension in the leading very precarious life in the old age. The Union government has enhanced minimum pension rupees 9,000 plus DA, TA for the retirees since 2016, whereas the EPS pensioners who have equal contribution sacrifice the growth of the development of the nation have been treated unequally, and rupees 1,000 fixed minimum monthly pension has been given to them with effect from 1/9/2014 without any enhancement yet. In the year 2013, Petition Committee of Rajya Sabha headed by Sri Bhagat Singh Gocharia in the report have recommended the payment of rupees 3,000 minimum pension EPS 95 pension plus DATA neutralize the price index. But the said report is yet to be implemented by the Union Government of India for enhancement of the pension even after the lapse of 8 years. It is also pertinent to mention that as of now, there is a concluded judgment for payment of higher pension and actual salary in the light of the direction of the Honorable Apex Court. Sir, regarding this pension, the contribution for the pension is 8.33% from the employee's salary. Only 1.16 only the government have to share for this. For that, it is very pitiable that government has to come forward and give the pension. Now, the 67 lakhs pensioners are agitating regarding this one. Thank you. Srimati Ranjit Ranjan. धन्यवाद सभापति जी। मैं 23 नवंबर को जो एम्स में सर्वर हैकिंग का मामला है, जो पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उसके बारे में चर्चा करना चाह रही थी। आपका धन्यवाद। 23 नवंबर को एम्स के लगभग 5 जो डेटा कंप्यूटर है उसका मामला सामने आया है कि सर्वर को हैक कर लिया गया है। लगभग 5 करोड़ मरीजों का जो डेटा है
उसके हैक करने की शंका सामने में आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि उसमें जो एम्स अस्पताल है, मामला इतना गंभीर है कि वहां पर सारे वीआईपीज भी, हमारे एक्स प्रधानमंत्री हों, पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री और अभी हमारे प्रधानमंत्री का भी एक वार्ड होता है, स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसमें उनके सारे मेडिकल डिटेल होते हैं, सारे मंत्रियों के मेडिकल डिटेल होते हैं, सारे पेशेंट के मेडिकल डिटेल्स होते हैं। तो ये सवाल उठता है कि 2021 में ही जब ये बात सामने आई थी और CY फब ने ऑलरेडी मार्च 2021 में भारत को आगाह किया था कि आपके जितने भी इंडियन फार्मा है, जो हमारे सीरम है, बायोटेक है, पतंजलि है, डॉक्टर रेड्डीज है, एबॉर्ड इंडिया है, इन सब पे साइबर हैकिंग का खतरा मंडरा रहा था। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हैकिंग हो रही है तो वो हेल्थ सेक्टर है, और अमेरिका के बाद इंडिया के हेल्थ सेक्टर पे सबसे ज्यादा हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है। सभापति जी, आज जो एम्स में हुआ, क्या ये बात सच है कि अभी भी वहां पे जो काम हो रहे हैं वो मैन्युअल हो रहे हैं? क्या सफदरजंग में भी हैकिंग की कोशिश की गई और कुछ जगह पे हैकिंग हुई है? जो हमारा हॉस्पिटल नेटवर्क है वो भी हैक हुआ है, जो बहुत ही खतरनाक है। मेरे मन में कुछ सवाल है कि आखिर उनका मकसद क्या था? मरीजों का आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल नंबर, क्योंकि आधार कार्ड से खाते जुड़े होते हैं और कई बार आपके बैंक फ्रॉड के भी मामले आए हैं। क्या एक बड़े लेवल पे ये तैयारी हो रही है? सर, ये बहुत गंभीर मामला है। कई साइबर एक्सपर्ट और इवन डिफेंस एक्सपर्ट भी ये कह चुके हैं कि ये खतरनाक साजिश है इंडिया के खिलाफ। इसमें कई करोड़ों लोगों के हनी ट्रैप हो सकते हैं, कई लोगों के खाते में फ्रॉड हो सकते हैं, और कई लोगों का, आखिर ये क्या वजह है कि ये मेडिकल रिकॉर्ड क्यों लिया जा रहा है? क्या ये डार्क इंटरनेट से जुड़ा हुआ मामला है? सर, मैं चाहूंगी, इस पे बहुत गंभीर मामला है, सरकार इस पे प्लीज आज नहीं तो कल इस पे जवाब दे। Honorable members, on my own behalf and on behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Advocate Jacob Mudinda, Speaker of the Parliament of Republic of Zimbabwe. And members of the parliamentary delegation from Zimbabwe who are on a visit to India as our honored guests. The parliamentary delegation from Zimbabwe arrived in India on Monday, 5th December 2022, and are now seated in the special box. Besides Delhi, they shall also visit Agra on Saturday, 10th December 2022, before their final departure from India. We wish them happy and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament, the government, and the friendly people of the Republic of Zimbabwe. श्रीमती शान्ता छेत्री। धन्यवाद सर, मेरो आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। र आज म विशेष गुरुत्वपूर्ण विषय लिएर म मेरो वक्तव्य राख्न चाहन्छु। र यसै वर्ष 2022 सालमा भारतका माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यूको अध्यक्षतामा युनियन क्याबिनेटले 4 राज्यका अनेक जातिलाई संविधानको जनजाति लिस्टमा हाल्न स्वीकृति दियो। सर, फेरि पनि भारतीय गोर्खा बाहेक धेरै जातिलाई जनजातिको लिस्टमा राखिने कार्य
हुँदैछ। सर, भारत देशमा भारतीय गोर्खा मात्र होला जसलाई भारतका माननीय प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्री स्वयंले छुटेको गोर्खाहरूलाई जनजाति बनाउनमा ठोस पहल गर्ने बाचा गर्नु भएको थियो। र सर, तपाईको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि केन्द्र सरकारले जनजातिको निम्ति तीन पल्ट कमिटी त बनाए, तर यी भारतीय गोर्खाहरूलाई आँखा छल्ने काम मात्र प्राप्त केही भएन। र जब पनि जनजातिको प्रश्न सोधिन्छ, आरजीआईबाट राज्यबाट दस्तावेज आउनुपर्छ भन्छ, तब तीनवटा कमिटी त्यस समय किन गठन गरियो, मेरो प्रश्न छ। र भारतको केन्द्रका ट्राइबल मिनिस्टरले पठाएको पत्र संख्या 16-017/11/2022 CLM दिनांक 3/6/2022 मा उल्लेख गरिएको छ कि राज्यबाट पठाएको रिपोर्टलाई आरजीआईले मानिलिएन। र यस कारणले म भन्न चाहन्छु, आरजीआईले अहिलेसम्म यी 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउन हेतु के कस्तो दस्तावेज संकलन गरेको छ तथा राज्यहरूले पठाएको दस्तावेजलाई पनि सदनमा पेश गरायोस्, जसले गर्दा केन्द्र सरकारलाई यी जातिलाई जनजाति घोषित गर्न सहयोग मिल्नेछ। म आशा राख्छु चाँडै भन्दा पनि चाँडै यस विषयलाई तपाईहरुले ध्यान आकर्षण गरेर अनि यसको निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै मेरो वक्तव्य शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद बैसे। Thank you very much, sir. I am standing here today to pay our great homage to the great leader, great army chief, Mahavir Lasit Borphukan. Sir, country is today celebrating 400 years of birth century of Mahavir Lasit Borphukan, sir. I am going to speaking about the 17th centuries of our country, sir. In 17th centuries, many parts of India was ruled by the Mughal. And Mughal empire was led by, at that time, Aurangzeb. And according to history recognized Aurangzeb very highly, strong leader, powerful leader, and under his leadership, Mughal occupied almost every part of the India, sir. But in the 17th century, Assam was ruled by Sir Ahom Kingdom Sakradhar Singha. And Sakradhar Singha appointed Mahavir Lasit Borphukan is the army chief of Ahom Kingdom, sir. In the 17th century, sir, under the leadership of Ram Singh, great soldier, great Senapati, under the leadership of Ram Singh, Aurangzeb sent a huge army force to capture Assam, to capture Guwahati. But under the leadership of Mahavir Lasit Borphukan, Mughal failed to capture Guwahati, and under the leadership of Mahavir Lasit Borphukan, Assamese people, Assam, Ahom Kingdom defeated Mughal, sir. Sir, Indian history, not only for Mughal, India history equally for Shivaji, equally Rana Pratap, and equally Lasit Borphukan, sir. Sir, history recognized Mughal for everything. History recognized Aurangzeb, sir. But history failed to recognize Mahavir Lasit Borphukan, sir. So I ask the House, kindly read up the Indian Constitution and it should be included in our history, sir. Sir, I request the government kindly to read up the history and you should try to include Mahavir Lasit Borphukan in the syllabus and curriculum in every Indian college, every university, and the people should know patriotism of Rajya. People should know patriotism of Rajya. Lasit Borphukan, who defeated Mughal. Thank you very much.
Thank you, Honorable Chairman. Today, I would like to mention the problem faced by some farmers in the northeastern states. I hope you may be aware that areca plantation is one of the biggest occupations of the northeastern states since many years ago. Especially areca plants are grown in the state of Mizoram and Tripura among the tribal areas in a large quantity, so that it is the main occupation for many tribal people in those areas. Unfortunately, Honorable Chairman, I want to inform this August House that the farmers of Mizoram and Tripura could not export their own areca product to the other states of India during this year. Their fresh areca production was stopped and seized by some government officials along the highway within the state of Assam, following the instruction given by the Ministry of Home Affairs, Government of India. This means that the instruction given by the Union government is a great loss for the tribal people living in the Northeast. In the meantime, dry areca of Southeast Asian products entered India through Myanmar in a bulk quantity, as report received from officials that the Union government is trying to stop the incoming of foreign dry areca products. Honorable Chairman, I highly appreciate that this foreign areca production smuggling must be stopped from entering our country. So I kindly request the Union government not to confuse our own areca product and foreign dry areca product. It is different thing. Foreign areca product is in the form of dry, but our own native products is in the form of fresh one. We cannot confuse them. So there is no reason to stop the sales and seize the native areca product anywhere within Indian Union, unless we are treating the Northeastern India as a foreign country. Let the smuggling of foreign areca be stopped. In the meantime, let the native areca production be free. Thank you so much. Shri Sant Balbir Singh. बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੇਆਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੋਗੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਨ 18-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
39 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਭਾਵ 1000 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ 1000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 20% ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 133 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। Sri Waiko. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. I would like to draw the attention of the House to you to a serious problem faced by the fishermen of Tamil Nadu. Apart from the fishermen of Sri Lanka, what they are facing there here from Tamil Nadu, for the past 45 years, more than 800 fishermen have been killed by the Sri Lankan Navy. Repeatedly they came. It is continuously attacking our Tamil fishermen. So many were dead and thousands of fishermen were brutally attacked and their boats and fishing trawlers were damaged and fishing nets destroyed. They have not given any compensation to the next of kin of fishermen who were shot dead. Recently, they have started capturing the boats and put them onto auction. Unfortunately, it has become a serious story, and demonstrations and agitations are going continuously, peacefully by the Tamil Nadu fishermen. There have been several incidents of Sri Lankan Navy personnel even firing at Indian fishermen in the Pak Strait and seizing their boats, damaging their boats and high-handedness by the Sri Lankan forces. In the months of October and November 2022 also, Sri Lankan Navy continued its acts of infringement upon the traditional rights of our fishermen in the Pak Strait, which is a challenge to the Union of India. Recently, 14 fishermen were arrested by the Sri Lankan Navy. The frequent arrests and seizure of boats has shattered the livelihood of many fishermen. I would urge upon the Union government to take urgent steps to secure the early release of all the fishermen and their boats unconditionally. The government should also put diplomatic pressure on the Sri Lankan government for giving compensation and solution to the next of kin who were shot dead and damaged, boats damaged by the Sri Lankan Navy. They should hold a high-level talk to find a permanent solution to this non-stop harassment by the Sri Lankan Navy. Thank you very much, sir. I already indicated that those of the members who seek to associate may send information to the table office. Srimati Seema Dwivedi. माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसे विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। गोरखपुर से प्रयागराज जोड़ने के लिए एकमात्र रास्ता है और उस रास्ते पर मुगराबाद शाहपुर एक रेलवे स्टेशन है, उसके बगल से बाईपास बनने की बहुत आवश्यकता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रयागराज में लोग महाकुंभ का मेला भी लगता है और महोदय उच्च न्यायालय भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। तमाम लोग दवाइयों के लिए, पढ़ाइयों के लिए
और गंगा जी में स्नान करने के लिए तमाम लोग जाते रहते हैं, लेकिन महोदय इतना भयंकर वहाँ पर जाम लगता है, कम से कम 1.5 घंटे जाम लगने के कारण मुगराबाद शाहपुर हमारी नगर पालिका भी है और बहुत सारे वहाँ पर व्यापारी हैं, जिसको देखते हुए महोदय बहुत ही कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। मैं इस विषय को कई बार सदन में उठा चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि ये बाईपास नहीं बन पा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक दशा में अगली बार जब हमारा सत्र आए तो हम ये कह सकें कि वहाँ पर हमारा काम प्रारंभ हो गया है। ये माननीय बहुत ही जनहित का मामला है और बहुत सैकड़े लोगों का वहाँ पर आना जाना रहता है। अभी कुंभ का मेला लगेगा, लोग कहाँ कहाँ से पतित पावनी गंगा में जाएंगे स्नान करने के लिए। मुझे मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट करके प्रत्येक दशा पर वहाँ पर बाईपास का काम प्रारंभ हो जाए। आपने महोदय मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you very much, sir. Sir, as we know that huge number of passengers travel by railway. When Madam Mamata Banerjee was the then rail minister, she started one project called Ijjat Monthly, by the help of which one person used to travel 100 kilometers per day by spending only 25 rupees per day for the entire month. Now we know that major part of the rail is being privatized, and the rail ticket and the monthly ticket and platform tickets, they are becoming high day by day. So my humble submission before my government is, considering the poor section of the commuters who travel by railway every day, please start one scheme like Ijjat Monthly or whatever, which can benefit them, and by paying a small amount, they can travel a significant distance per day. Thank you so much, sir. Honorable members, our question hour is very important. Question hour gives an opportunity to enforce accountability. And it is most productive where more questions are traversed. And that happens when there is pointed response and pointed supplementaries. I'm sure we will bear that in mind. Question hour, question number 16, Shri A. Rahim. First supplementary. Sir, may I read the first sentence of your answer? Employment and retrenchment, including layoffs, are a regular phenomena in industrial establishment. Sir, this is quite unfortunate answer, and this is quite evasive. Sir, what is the role of the government in this particular circumstances, especially in the area of layoff in the IT sector? Layoffs and retrenchment of the IT sector is a very grave issue in the country. Sir, very proudly, we can say that the Kerala government set up a welfare and protect scheme for this particular IT sector. My question is that, does the minister... बिल को लाया जा रहा है, अमेंडमेंट बिल को लाया जा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था, देश का पर्यावरण को बचाना है। कच्छ में विलायती बबूल को लाया गया था। जो ट्राइब है उसका नाम मालधारी ट्राइब है। मालधारी का तात्पर्य होता है जो जानवरों को रखते थे, यानी एनिमल्स कीपर्स। अब मालधारी
ट्राइब जिस जगह से उनके जानवरों को चारा मिलता था, भूमि की प्रकृति बदल गई और विलायती बबूल के कारण वह भूमि पर रहने वाले मालधारी जो जानवरों के रखने वाले माने जाते थे, अब बबूलधारी बन गए। यानी कि जब इन्वेजन होता है तो वह इन्वेजन उसी तरह से है जैसे कभी राजनीतिक रूप से इन्वेजन होता था, आक्रमण होता था। आज पर्यावरण पर यह आक्रमण हो रहा है और इस आक्रमण के कारण हम कह सकते हैं एक तरह से हमारे पशु पक्षियों को कॉलोनाइज किया जा रहा है। एक्सटिंक्शन किस कागार पर हो रहा है? केरल के हमारे मित्र कल कह रहे थे कि राज्य सरकारों से सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। शायद इस बात को वे नजरअंदाज कर रहे हैं। केरल में 2020 में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम था उसकी संख्या 151 थी। 2021 में यह बढ़कर 303 हो गई है। 100% की वृद्धि हुई। केरल में 64 ऐसे बर्ड्स स्पेसीज हैं जो समाप्त होने के कगार पर है, इंडेंजर्ड बर्ड स्पेसीज है। इसमें गिद्धों की 2 प्रजाति है, एक रेड रिंग वल्चर जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से केरल में कुछ पशु इंडेंजर्ड इसलिए हो गए हैं कि इन्वेजिव यानी कि बाहर से कुछ पशुओं का आना हुआ है। इसी कारण से मैं कहना चाहता हूं कि जिस गैर राजनीतिक विषय पर सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, अपने प्रजातियों की रक्षा करने के लिए जो बिल लाया गया है वह एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है। सभापति महोदय, 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण ये खतरे बढ़ रहे हैं। एक कारण चीन, वियतनाम, म्यांमार जैसे देशों में जो परंपरागत दवाइयां हैं, उन दवाइयों में पशुओं के अंगों का जो उपयोग हो रहा है उसके कारण वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बढ़ता जा रहा है। आज चीन का दवाई का मार्केट, परंपरागत दवाई यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन का मार्केट $600 बिलियन का है और 11% की दर से प्रति वर्ष यह बढ़ रहा है। इसका प्रभाव न सिर्फ भारत पर है बल्कि अफ्रीकी देशों पर भी है। यही कारण है कि इस कानून को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। दूसरा बड़ा कारण जो खास करके मछलियों के बारे में है, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे वेस्टर्न घाट में 300 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। उसमें 155 प्रकार की, 155 प्रकार की जो मछलियां हैं वे ऑर्नामेंटल मछलियां हैं। उसमें से कुछ प्रजातियों का जो ट्रैफिकिंग अनसाइंटिफिक रूप से हुआ है, बिना किसी लाइसेंस का हुआ है, उसके कारण चन्ना बारला, जोबरा लोच, स्नेक हेड ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अब ऑर्नामेंटल रीजन तो यह बना। इसी तरह से स्टार कछुआ, अब दुनिया में सबसे ज्यादा मांग भारत के स्टार कछुआ की है और भारत में यह इंडेंजर्ड स्पीसीज बनता जा रहा है। उसी प्रकार से सभापति महोदय, तोता यानी पैरट्स, इसके 12 स्पीसीज नेटिव स्पीसीज हैं जो देश में हैं। उसमें 8 स्पीसीज समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं।
आज सब पूरे सदन को आत्मालोचन करना पड़ेगा। जब मैंने प्रधानमंत्री जी को चिता लाने के लिए बधाई दी, पर्यावरण मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए बधाई दी, उसके पीछे यह कर्मकांड नहीं था, दलीय कर्मकांड नहीं था। पिछले 70 सालों से आपने जीवन मूल्य से जुड़े हुए आधारभूत चीजों की उपेक्षा की। आपकी नजर में महत्वहीन था और यह महत्वहीन होने के कारण ही एक समानांतर अर्थव्यवस्था क्षेत्र में विकसित हुआ। अमेरिका का प्रति वर्ष $120 बिलियन का वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है। दूसरे स्थान पर भारत है जो $91 बिलियन का वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होता है। मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। कभी कभी हम गलतियां करते हैं और गलतियां व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं। एक व्यक्ति जायंट अफ्रीकन स्नेल यानी घोंघा ये मॉरिशस से लाया। लाने के पीछे सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन वह क्यूरियोसिटी किस प्रकार से एक डिजास्टर में परिवर्तित हो गया, उसकी तादाद बढ़ी। केरल और असम में इसकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि वहां फसल नष्ट हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। इन्हीं कारणों से मैं ये कहना चाहता हूं, आज पूरे देश को एक ऐसे सख्त कानून की जरूरत है और सख्त कानून में हम उस फ्रेज को ना भूलें कि एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी कारण से केंद्र सरकार अपने ऊपर इस जिम्मेदारी ले रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट का एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। नॉर्थ ईस्ट जो दुनिया के 25 सबसे विकसित बायोडायवर्सिटीज के केंद्र हैं, उसमें से एक नॉर्थ ईस्ट आता है। उस नॉर्थ ईस्ट में 106 ऐसी प्रजातियां हैं जो नष्ट होने की कगार पर हैं। इसका कारण है कि किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से पूरे देश में हमने उन चीजों का न सर्वेक्षण किया, न उनकी घटती संख्या के बारे में कभी ध्यान दिया, उसके कारणों के ऊपर हम नहीं गए और हम प्रकृति पर यानी जो हो रहा है उस पर सब कुछ छोड़ दिया। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट की स्पीसीज समाप्त हो रही हैं। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, 1968 से लेकर 2017 के बीच में 771 गेंडा की हत्या की गई, यानी मारा गया शिकारियों के द्वारा सिर्फ व्यापार करने के लिए। उनकी कुल संख्या ही 2200 थी, उसमें 771 को समाप्त कर दिया गया। तो मुट्ठी भर लोग जो $91 बिलियन कमाने के लिए सिर्फ इस देश की अस्मिता के साथ नहीं, न सिर्फ पर्यावरण के साथ, न सिर्फ अर्थव्यवस्था के साथ, बल्कि इस देश के मूल आधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमारी अस्तित्व को मिटाने पर लगा हुआ। इसीलिए इस बिल की आवश्यकता थी। और अंत में मैं बताना चाहता हूं कि जब यह कानून बनेगा, और पारित तो होना ही है, इससे 3 लाभ होगा। पहला कि ऐसी ताकतें जो अब तक छिपी हुई हैं, जो $91 बिलियन मैंने बताया, यह तो सिर्फ ट्रैफिकिंग का है। उसको मैनेज करने में, उसको कंट्रोल करने में जो खर्च होता है, इन्वेजिव प्लांट्स को मैनेज करने में, उसको कंट्रोल करने में जो खर्च होता है, वह इसमें शामिल नहीं। तो पहली बात यह होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, तो इकोनॉमी।
दूसरा इकोलॉजी, जो इकोलॉजी का बैलेंस या संतुलन बिगड़ रहा है वह बचेगा। तीसरा, अमेरिका जैसे देश में जहां जिसके नर्सरी में 60,000 प्लांट्स, इन्वेजिव प्लांट्स बिकने के लिए हैं और जो हमारे यहाँ गलत रास्ते से लाया जा रहा है, ऐसी जगहों पर एक रुकावट लगेगी। चीन जैसा देश जो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए हमारे यहाँ से गेंडा का सिंग ट्रैफिकिंग कराता है, उस पर रोक लगेगा। तो मुझे लगता है यह देश के हित में होगा, यह राष्ट्र के हित में है। और कृपया करके संघवाद के नाम पर एक ऐसे कानून का, ऐसे संशोधन का विरोध मत कीजिए जिस संशोधन का विरोध करने से इस देश के अस्तित्व पर खतरा आता है। आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघवाद का सहारा मत लीजिए। इस देश का संघवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सबसे अधिक संवर्धित और सुरक्षित है, और जो भी कानून बन रहा है वह संवर्धित और सुरक्षित करने के लिए बन रहा है। एक राष्ट्र के लिए प्रगति करने के लिए और आसमान छूने के लिए वह प्रयास करना पड़ता है जिस प्रयास से सिर्फ स्व का ही नहीं बल्कि जिसे आप पराया मानते हैं, जिसे पश्चिम का देश भौतिकता के आधार पर देखता रहा, उसका हम संरक्षण करें। इसलिए आज हमारे फॉरेस्ट के कवर में वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वह कम से कम ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नया भारत इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट तीनों को संबोधित करते हुए इस कानून को ला रहा है। आपसे मैं अपील करता हूं, इस कानून का समर्थन कीजिए। विरोध के कर्मकांड से बाहर निकलकर गैर राजनीतिक मसलों पर, जैसा माननीय सभापति महोदय ने कहा था, ऐसे मुद्दे और ऐसे मसले होते हैं जहां पर हमें राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है, दलीय परिधि को तोड़ना होता है, और ये तोड़ना ही राष्ट्र का संरक्षण और संवर्धन होता है। यही अपील के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री प्रफुल्ल पटेल। धन्यवाद सभापति महोदय। आज हम एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं कि जिसकी आवश्यकता निश्चित हम सब लोगों को महसूस होती है, और मैं इस विभाग के मंत्री जो हैं हमारे मित्र भूपेंद्र यादव जी, उनको भी बधाई दूंगा। ठीक है, कुछ पहलुओं पे हमारे और सुझाव हो सकते हैं, लेकिन इसका मूल जो उद्देश्य है इससे हमारा कोई मतभेद नहीं है। पर्यावरण और विकास, इसका तो संतुलन कहीं ना कहीं बना रखना पड़ेगा। पर्यावरण भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन 135 करोड़ की आबादी के विकास को भी और उनके जीवन का स्तर बनाए रखने के लिए भी हमको बैलेंस, फाइन बैलेंस जिसको बोलते हैं, ये बना के रखना पड़ेगा। और ये पर्यावरण के बारे में हमारे देश में कई वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, वर्तमान भी है। कुछ चीज़ों में हमारे इनके मतभेद भी होते थे, ऐसी बात नहीं है, मेरे उनको जानकारी है, मगर लेकिन ठीक है। मुद्दा ये है कि विकास भी होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण भी होना चाहिए। मैं जिस इलाके से आता हूँ, गोंदिया जिला है, महाराष्ट्र का अंतिम जिला जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो सारे जो वन के जो बड़े बड़े जो जिसको बोलते हैं नेशनल रिजर्व्स हैं, पेंच हो, ताड़ोबा हो, काना हो, हमारे यहाँ नागजीरा हो, ये सारे
बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं ये उस परिसर में आते हैं और इसलिए मुझे थोड़ा बहुत वहाँ का अनुभव भी है। हम लोग वन प्राणी के संरक्षण के लिए हमेशा चर्चा करते हैं, प्रोटेक्ट द टाइगर, सेव द टाइगर, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बाकी भी वन प्राणी हो, चाहे वो एलिफेंट्स हो, चाहे बाकी के भी जो हमारे यहाँ पर इंडिजिनस जो बहुत सारे प्राणी हैं हमारे देश में, इनका संरक्षण होना चाहिए और ये समय की भी ज़रूरत है, पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है। आज हम अक्सर देखते हैं कि वन प्राणी और खास करके टाइगर, लेपर्ड्स जो बाकी के जो पशुओं को या इवन ह्यूमन बीइंग्स को अटैक करते हैं, ये अपने अपने जो क्षेत्र से बाहर आकर ऐसी बहुत ह्यूमन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रही है। और ये क्यों बढ़ रही है, इसका भी हमको संशोधन करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जैसे एक टाइगर रिजर्व है या कोई भी मतलब सेंचुरी है, वहाँ खाली टाइगर अकेले नहीं होते हैं, बाकी और भी प्राणी होते हैं। उस रिजर्व में एक ज़माना ऐसा था कि जब वहाँ हम जाते थे, बचपन में भी जाते थे, सर्च लाइट लेके जीपों में खड़े होके हम जाते थे, तो इतने सारे प्राणी नज़र आते थे। टाइगर तो शायद ही मिलता था क्योंकि वो कोई ऐसा तो कहीं घूमता नहीं हर जगह, और एक टाइगर की संख्या भी मर्यादित होती। लेकिन नील गाय हो, चीतल हो, सांबर हो, हमारे भालू हो, बाइसन हो, ऐसे कई प्राणी हमको जंगलों में बहुत बड़ी मात्रा में नजर आते थे। आज आप वही जंगल में जाएंगे तो आपको नीलगाय हो, सांबर हो, चीतल हो, या जो भी जो एक जो जिसको बोलते हैं कि ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ये हमको उस संख्या में अब नजर नहीं आते हैं। अब आप कहोगे कि शेर हो, चीता हो या लेपर्ड हो, चीता अभी आया लेकिन लेपर्ड को अपने यहाँ सामान्य अभी भी चीता ही बोलते हैं गांव में क्योंकि स्पॉटेड है। तो ये सब प्राणियों को आज उनकी प्रे जो चाहिए, वो खाएगा क्या? वो घास तो नहीं खाएगा, उसको चाहिए उसका शिकार, और वो शिकार की मात्रा कम होते जा रही है महोदय। उस वजह से मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि बाकी के आपके सभी प्रयास सराहनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप जरूर उसमें आगे बढ़िए, लेकिन इस एस्पेक्ट को बहुत ध्यान रखिए। आज मुंबई जैसे शहर में संजय गांधी नेशनल पार्क है, वो संजय गांधी नेशनल पार्क के चीते, वहां के लेपर्ड जो हैं वो पूरे शहरों में आ रहे हैं। आज मुंबई जैसे शहर में बॉर्डर पे लोग आते हैं, वो चीते आते हैं और लोगों को वहां पर नेचुरली, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे कोई गाय हो, पशु हो, या कोई इवन इंसान हो, बच्चे हो, उनको भी खाने का काम करते हैं। क्यों? कि वहां पर कुछ उनको जो नेचुरल जो उनका शिकार होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो मेरी यही बात है, निवेदन है कि आप इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, जहाँ तक अब सड़कें बनती है, नेशनल हाईवेज बनते हैं, 2 मिनट, नेशनल हाईवेज बनते हैं, वहाँ पर हम लोग काम रोक देते हैं, नेचुरली ठीक है, पर्यावरण का, पर एक पॉलिसी, एक नीति कॉमन बना दीजिए ना कि भाई अगर नेशनल हाईवे है, कहीं कोई फॉरेस्ट एरिया में से जाता है तो वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर वो वायरडक्ट बनाया जाए या जिस तरह से भी अंडर पासेस हो, ताकि एक नेशनल हाईवे का काम बार बार आपके मंत्रालय में आकर वहां पर एनजीटी में जाएगा और उसका क्लियरेंस होते होते हाईवे बन जाएगा, लेकिन उस पोर्शन को 10-10 साल तक मान्यता नहीं मिलेगी। तो व्हाई डोंट वी हैव अ नेशनल पॉलिसी वेयर रोड्स आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, डेवलपमेंट कैन नॉट स्टॉप। तो आप उसकी एक नीति बना लीजिए, तो ये बहुत जरूरी है। और तीसरा और अंतिम मेरा एक निवेदन है कि हम जिस क्षेत्र से महाराष्ट्र में आते हैं वो विदर्भ का इलाका माना जाता है। एक जमाने में हमारे तनखा जी हमारे को जानते हैं, सीपीएन बिरार का वो हिस्सा था। जब सीपी बिरार का रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का जब हुआ 60 में, महाराष्ट्र बना, मध्य प्रदेश बना, बाद में तो छत्तीसगढ़ बना, तो वहां पर जो
जमीन थी जहां पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, उसका नाम हमारे महाराष्ट्र में झुड़पी जंगल, ये एक नॉमेनक्लेचर रह गया, और मध्य प्रदेश में वो नॉमेनक्लेचर उन्होंने वो हटा दिया, उसको रेवेन्यू फॉरेस्ट कर दिया। तो रेवेन्यू फॉरेस्ट में डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन झुड़पी जंगल का नॉमेनक्लेचर वो जंगल की परिभाषा में ही रह गया। तो आज नागपुर की चाहे हाई कोर्ट हो, नागपुर में विधानसभा हो, ये सारे फॉरेस्ट एरिया में झुड़पी जंगल के परिसर में बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने जमाने में ये कानून आने के पूर्व विकास हो सकता था। अब वहां पर हमको चाहे इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, रोड हो, गांव की एक स्कूल हो, गांव में कोई और काम, विकास का काम हो, ये सारा वो फॉरेस्ट के वजह से, झुड़पी जंगल नॉमेनक्लेचर के वजह से आज हमको परेशानी होती है। मेरे अकेले एरिया में नहीं, पूरे विदर्भ की ये बात है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि ये इस बारे में आप जरूर एक पहले प्रयास जयराम रमेश जी के समय पे और कमलनाथ जी कई लोगों के वक्त में हुए, लेकिन इसकी भी एक सखोल नीति बनाइए। पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, वहां के वन क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन जो एक गलत केवल नॉमेनक्लेचर 60 में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जो नहीं बदल पाया, उसके वजह से अगर ये नुकसान हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें मार्ग निकाला जाए। आपके इस बिल के लिए आपको सराहना करते हुए आपको पूरा हमारा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुमार केतकर। Well, at the outset, I welcome this amendment bill, but let us not forget, there is a tendency these days to forget the legacy of such very important acts. This act, which is being amended now, was made in 1972. And that year is important because that very year, then Prime Minister Indira Gandhi addressed a conference in Stockholm, the Earth Conference, in 1972, and led by her personal initiative to create this act. Not only Project Tiger, but she was concerned about all other animals from crocodiles to lions and every single animal in jungles or in the sea, including the fish. Now that legacy was necessary to be remembered when we amend this, because she was particular in seeing that the jungles are not killed, jungles are not devastated, jungles are not devastated. At present, when we are talking here about this act, Nicobar is being completely ruined. Nicobar jungles are being removed. And Nicobar jungles are being removed for the benefit of some corporates. So essentially, the wildlife is actually attacked not by any humans as such, but the corporates, and sometimes by celebrity Bollywood types. It is necessary not, अभी राकेश जी ने कहा कि सख्त कानून होना चाहिए, कानून सिर्फ सख्त नहीं होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सख्त होना चाहिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन सख्त नहीं हो रहा है। इसके लिए corporates are actually using their money power or their muscle power or their contacts in bureaucracy and in the government to destroy jungles, and when jungles are gone, the wildlife is gone. Another thing that is necessary to be noticed is that wildlife, jungles and human habitats are closely linked and closely related. One without the other is not possible. We talk about climate change, but while talking about climate change, we generally do not talk about wildlife and birds and other migration of birds and things like that. Climate change is directly concerned with protection of wildlife, protection of birds, creating environment for them, and while we talk about environment, we must also talk about the creation of environment for them to survive and grow. When Project Tiger was announced, there was considerable discussion about it, and thankfully there was a lot of support. But today this issue has come because of the real estate sharks and corporates are devastating jungles and creating problems for the wildlife. I think it is necessary also to remember that from Jim Corbett to Salim Ali, so many people have written about the jungles in India. In fact,
These jungles, this forest life, this flora and fauna was the main thing that attracted Europeans, not only the masalas, not only the spices in South India, but also this flora and fauna attracted the Europeans. So we are actually ruining the flora and fauna, and I don't think we particularly care about it. I don't see any discussion. For instance, we talk about biodiversity, but not a single university has any syllabus and discussion and studies or research projects done on biodiversity. I think only one university has just started a biodiversity subject, but otherwise most universities ignore biodiversity subject completely. As a result, the youth or the students or the academics generally do not have any knowledge of the necessity of wildlife connected with climate change. Climate change is only more talked about and not actually implemented, and that implementation will begin from the education sector, university sector, school sector, where the wildlife needs to be actually promoted. Wildlife cannot be promoted merely by creating acts. Another point that I must mention here is the number of species that are declining in India has crossed 30,000. Globally, some 1 lakh species are actually gone forever, and that will happen, that protection of those species will happen only if the government is serious and strict about implementing this. I'll take a final point, only 1 more minute, and the point is, former Prime Minister had said, she referred to Mussoorie when she had gone there and said that jungles are being destroyed for the construction. Just now, Praful Patel ji talked about development and ecology together, and development is possible even without destroying ecological balance. But I don't think that is the approach of the present government. Ecology is sacrificed for the sake of, or in the name of development, in the name of highways, in the name of freeways, and in the name of new projects. It is not enough to protect Adivasis. It is not enough to protect Adivasis and jungles together. It is necessary to protect Adivasis and jungles and wildlife together, because they live together and they don't live separately. Unfortunately, what is discussed today is separating Adivasis from the wildlife and from wildlife from the human habitats. I think it is necessary to take a comprehensive and total view of the thing of Wildlife Act, and therefore not only having an act is important, but having implementation is perhaps even more important. Thank you. Sushri Indubala Goswami. धन्यवाद सर। महोदय, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मानव, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जीवन एक प्रतिरक्षण चक्र है। पृथ्वी पेड़ पौधों का पोषण करती है और पेड़ पौधे कीटों, पक्षियों और जंगली जानवरों का पोषण करते हैं। दूसरी ओर मृत पशु गिद्ध का शिकार बनते हैं, और गिद्ध जब मृत्यु प्राप्त होकर पृथ्वी में समाता है तो कीटों का भोजन बनता है। मृत कीड़े मकोड़े पौधों की खाद बनते हैं, और जब पौधे आयु प्राप्त कर लेते हैं तो मनुष्य के जीवन यापन का साधन बनते हैं। मनुष्य पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से अपने जीवन चक्र को चलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जीवन का प्रतिरक्षण चक्र हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जल, जंगल और जानवर की सुरक्षा करना मानव का मुख्य दायित्व है। पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं के विलुप्त होने का सीधा प्रभाव मानव जीवन के अस्तित्व को प्रभावित करता है, क्योंकि मानव जीवन व उस जीवन से जुड़ी हुई सुख सुविधा और समृद्धि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से ही प्राप्त होती है। महोदय, मानवीय गतिविधियों की वजह से मानव द्वारा अपने लाभ व सुख सुविधाओं के लिए जीव जंतुओं व वनस्पति का इतना दोहन शुरू हुआ है कि आज इनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। मानवीय सुख सुविधा की पूर्ति से पर्यावरण
बहुत प्रभावित हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जंगल खत्म हो रहे हैं, चारागाह खत्म हो रहे हैं, फ्लोरा और फौना की बहुत सारी प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए भोजन, ऊर्जा, दवाई, तेल, ईंधन के लिए इनका सिर्फ लगातार प्रयोग ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इनका अवैध व्यापार व तस्करी भी कर रहा है। IUCN की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में 1,42,577 से ज़्यादा प्रजातियां दर्ज हैं। इनमें विलुप्त होने की खतरे वाली 41,000 प्रजातियां दर्ज हैं, जिन्हें बचाया जाना विश्व समुदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में भारत का हिम तेंदुआ, हिमालयन मोराल, तित्र, सारस, एशियाटिक लॉयन, कृष्ण मृग एवं नीलगिरी तहर जैसी प्रजातियों पर प्रश्न है। मेरे प्रदेश में 1990 में गिद्धों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। जांच करने पर पता चला कि डिप्लोफेनिक दवाई बनाने के लिए गिद्धों को मारा जा रहा है। गिद्धों के संरक्षण के लिए डिप्लोफेनिक बीमारी पर दवाई पर बैन लगाया गया और वन विभाग के निरंतर प्रयास से आज प्रदेश में गिद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनकर तैयार हो रहा है। इस पार्क के क्रियाशील होने से विलुप्त हो रही जड़ी बूटियों की पहचान आसान होगी। खासकर हिमालय की विलुप्त हो रही जड़ी बूटियां, उनको संरक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वो हिमालयन रेंज में आता है। विलुप्त होती जड़ी बूटियों में छतरी, सर्पगंधा, बरबरी, चेहरा, पठानबेल, भूतकेसी, संसरपाली, रतनजोत जैसी हजारों जड़ी बूटियां हैं, जिनका यूज स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है, जिनसे स्वास्थ्य से संबंधित हजारों दवाइयां बनती हैं, लेकिन अवैध व्यापार के कारण आज ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। महोदय, चूंकि मैं उस राज्य से आती हूँ जो प्रकृति को संरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमाचल प्रदेश का 68% भाग जो है वन क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 32 वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसलिए इस बिल के महत्व को मैं समझती हूँ। महोदय, वनों व जीव जंतुओं के संरक्षण की अवधारणा हमेशा से हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का हिस्सा रही है। हमारे वेदों में वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। महावन, जो महान वन आरक्षित था, और आज हमारे देश में ऐसे 100 से अधिक भंडार हैं। दूसरी श्रेणी श्रीवन की आती है, जो मानव और पशुओं की आजीविका के लिए आवश्यक वनोपज का साधन था। आज हमारा देश लकड़ी, चंदन, प्लाईवुड, केंदू के पत्ते, बांस, साल के बीज, शहद और औषधीय पौधे, रबड़, काजू और मसालों जैसे वन उत्पादनों की एक बहुत बड़ी रेंज यहीं से प्राप्त कर रहा है। महोदय, प्राचीन काल में तीसरी श्रेणी तपोवन थी, जहां ऋषियों का स्थान होता था। किसी भी जानवर या पेड़ को नुकसान करना यहाँ जो है अपराध समझा जाता था। आज ये हमारे प्राकृतिक अभयारण्य हैं। जो पर्यावरणीय विरासत हमें पिछली हजारों पीढ़ियों ने दी है, क्या उसे आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, उसको सहज कर रखना क्या हमारा दायित्व नहीं है? महोदय, ऐसे समय में जब मानवीय लोभ व गलतियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में
अपने गौरवशाली अतीत और संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भारत को एक जिम्मेदार और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है। ये विधेयक उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के प्रति प्रयासरत है, जिसके तहत प्रोजेक्ट एलिफेंट गिद्ध संरक्षण कार्य योजना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, इंडियन राइनो विजन जैसे कार्यक्रमों में कम से कम 22 वन्य जीवों के संरक्षण को इसमें शामिल किया गया है। बीते वर्षों में शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 7 दशक के बाद महोदय 7 दशक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अपने जन्म दिवस पर एक साथ 8 चीते, जो कि भारत से विलुप्त हो गए थे, देश को उपहार स्वरूप देकर पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण के प्रति देश की जनता से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। क्योंकि वन्य जीव की रक्षा के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये मानव जीवन से जुड़े हैं, उनकी सुख सुविधाओं से जुड़े हैं, इसलिए इनके लिए सख्त नियम और विनियम बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए समय के साथ 1972 के कानून में संशोधन करने की आवश्यकता थी। ताजा संशोधन वन्य जीव संरक्षण 1972 की प्रस्तावना में बदलाव करता है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में वन्य जीव के संरक्षण की ही मूल अवधारणा थी, मूल भावना थी, लेकिन अब नए विधेयक में वन्य जीवन संरक्षण के साथ जीवों की सुरक्षा और प्रबंधन को भी शामिल किया गया है तथा इस विधेयक से पशुओं और विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा करने, उनके उत्पादन के व्यापार के रेगुलेशन हेतु प्रभावशाली कार्य ढांचा तैयार करने की मंशा है। यह विधेयक न केवल साइटेज के प्रावधानों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करता है, बल्कि देश में वन्य जीव संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के सभी पहलुओं को भी इसमें शामिल करता है। प्रस्तावित विधेयक के तहत आक्रामक प्रजातियां, जो कि भारत की नहीं थी, जिनके फैलाव से भारत का वन्य जीवन में को खतरा हो रहा था, अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुंच रही है, वातावरण को नुकसान हो रहा है, ऐसी प्रजातियों के आयात व व्यापार, उनको सुरक्षित रखने या संख्या बढ़ाने से संबंधित केंद्र द्वारा निर्णय लेने के अधिकार से निश्चित रूप से इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकेगा। विधेयक में दिए गए नियमों, उपनियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि को बढ़ाया गया है, जिससे निश्चित रूप से ऐसी जो अवैध व्यापार होता है, तस्करी होता है, उसमें रोक लगेगी। महोदय, इन बिंदुओं को रखने के बाद मैं विधेयक के निष्कर्ष पर पहुंचती हूं। विधेयक की समग्र भावना और दिशा ऐसी है जिससे भारत का कोई भी शुभचिंतक इसका विरोध नहीं कर सकता है। आज पर्यावरण की रक्षा की लड़ाई में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और इस विधेयक के अधिनियमन से हमारे ग्रह अर्थात पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने की लड़ाई में हम सबसे आगे रहेंगे। मैं इस विधेयक को पेश करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं, जो न केवल साइटेज के प्रावधानों को पूरा करता है, बल्कि हमारे देश में वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। धन्यवाद। सुश्री सुष्मिता देव। Thank you, Chairman sir. Today my party has given me an opportunity to speak on a very important bill, the Wildlife Protection Amendment Bill.
and I have to say that it has been my privilege to speak before you for the second time in a span of very few days. So I've been listening to my learned colleagues, and very valuable suggestions have been put forth about wildlife as a whole. And it's extremely significant for me because I come from the state of Assam, however elected by my leader Mamata Banerjee from West Bengal. But I come from a region where forest, flora, fauna are very integral part of our economy, of our livelihoods and of our society, sir. As you know that the northeastern states have actually geographical coverage of 7.98% of the country's forest coverage is in the northeastern states, sir. So this bill is particularly very close to my heart, but I have to start by saying that this is one such bill, Chairman, sir, where one cannot just concentrate on the sections or clauses that are in the principle, that have been amended in the Principal Act, but actually the thrust of this bill is in the number of schedules that have been included. उस दिन आप बोल रहे थे कि expertise कुछ ऐसे bills होते हैं जिसके लिए expertise की बहुत ज़रूरत होती है. ये वैसा ही एक bill है. And I applaud the members of the standing committee because I feel that they have done a thorough job. They have heard a number of activists, environmentalists, experts, and then made the amendments or given their suggestions to this bill. Sir, we are well aware that as a nation, we are amongst the about 184 countries that have signed the International Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1975. If I'm not wrong, we signed it and ratified it sometime in 1976. And this bill became absolutely necessary to bring our current laws in line with our international obligations under that treaty. Sir, having said that, I would like to say that when it was first introduced in the Lok Sabha in December 21, the standing committee went through a very thorough discussion. Then it was passed in the Lok Sabha, and now it is before us for consideration again. If I may say so, that this bill is a prime example of how a standing committee can act as a watchdog of the nation, sir. Today we should, as all of us members of the House, whether they're in the Treasury bench or the opposition bench, we must all come together in agreeing that it is a disservice to the nation if the number of bills that go to the standing committee drops from 60% to 13%. So today I'm a member of parliament, but I don't have every expertise. So it is an opportunity for me to read the standing committee report and learn it. So here I would like to say कि हम कानून किसके लिए बनाते हैं? हम एक साधारण इंसान के लिए कानून बनाते हैं, जिन पर ये कानून लागू होता है. और हमारा ये कर्तव्य है. As lawmakers, it is our duty to simplify the law. Varna, our honorable minister is very learned. I have sat in the environmental standing committee with him and learned a lot from him. But हर इंसान के पास उस समझने की ताकत नहीं होती. This bill, the way it has been amended, and standing committee has repeatedly said that it has become a very cumbersome bill, sir. It has become a very cumbersome bill, and a question that many people in this arena raised is that what is the reason that this was not made a part of the Biological Diversity Act 2002, the amendment for which is also pending in a 2021 bill before the Joint Committee. अगर इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के माध्यम से लाया जाता है इस अमेंडमेंट को, हमारा ये मानना है it would have been far more streamlined. My learned colleague Mr. Sinha spoke a lot about biological diversity, which only bolsters my point that that may have been a better drafting strategy to insert it in the Biological Diversity Act. No one can oppose this bill, sir.
No one can oppose this bill because we all agree on sustainable exploitation of our flora and fauna. And it is a reality. It is a reality, sir, that the kind of international trade that takes place of plants and wildlife specimens runs into billions of dollars. It's a huge area for legislation. It was much required, so I do not oppose that. But I would also like to say that this kind of exploitation also leads to a massive threat. So therefore, to implement sites was extremely important for us. One of the key amendments that has been brought is to have two authorities, one being the management authority, sir, and one being the scientific authority. Sir, these two authorities will regulate the trade of these species as well as they will ensure that the level of the trade doesn't go to such an extent that it becomes detrimental to any species. So this is important, I don't deny it, because our sustainable development goals number 15 is also very important to us when it comes to wildlife. But I do feel, sir, that in the composition of these two authorities, one must remember that this is a subject that is in the concurrent list. And therefore, the states must have a significant say in how it is implemented. So these two authorities, how they will be set up, who will run it, which set of officers must take into account our strong principles of federalism and help the states to be constructively they should be able to constructively engage at the level of these authorities, sir. Sir, I am pained to say that many members, not just me, many members have repeatedly raised the concern about the way the Section 43 has been amended. Section 43 has been amended of the Principal Act, which is the 1972 Act. And this is not a concern of parliamentarians or members of the Standing Committee, but this is a concern of people who have been fighting for decades for the protection of captive animals like the elephants. Sir, if I may say so, हमने देखा था एक जमाना था जब राजा महाराजा हाथी पे चढ़ के युद्ध पे जाते थे. मुझे याद है बचपन के वो दिन जब हम रिपब्लिक डे में देखते थे कि साहसी बच्चों को हाथियों पर बिठाकर परेड में ले जाते थे. पर इस देश में हमने उन कानूनों में या उन रिचुअल्स में हम परिवर्तन लेके आए. क्यों लेके आए? उस पशु के हित में जिसको जंगल में होना चाहिए, पर वो हमारे बीच में है, उसमें थोड़ा हमारा स्वार्थ है. So whether all of us parliamentarians realize that a wild elephant, sir, in this country comes under captive animals. और मेरा ये मानना है कि हमने रिपब्लिक डे के परेड में भी elephants को यूज करना सर बंद कर दिया. It has been declared as a heritage animal. Mr. Jairam Ramesh, I think, was at that time the minister. और जो clause 27 ये सरकार लेके आई है सर, it is a direct contravention of the earlier section 43. I'm sure honorable minister is very learned. He will explain himself. Standing committee के बिल्कुल विपरीत amendment लेके आए सर, जो लोकसभा में पास होकर आज राज्यसभा में आई है. Original act says you cannot transfer any captive animal for consideration. So what are the exceptions? Like you move an animal from one zoo to the other, no one can say anything. And moment you move them, you have to inform the chief wildlife warden within 30 days. Sir, इस section को बदल के सरकार ने जो परिवर्तन, जो amendment, संशोधन लेके आए हैं, उसमें लिख दिया कि live elephants जो owners है, जिनके पास certificate है, they can transfer and transport with the permission of the state government on fulfillment of such conditions as may be prescribed by the central government. Huge discretion, sir. इसमें purpose तक नहीं लिखा. स्टैंडिंग कमिटी
May I give a very practical suggestion? We realize the ground realities of this nation and elephants form a part of our rituals. So I plead with the Honorable Minister कि सर आपने जो any other purpose करके और भी इसको broad कर दिया, उसकी वजह से public domain में एक डर है, जिस डर की वजह आप समझते हैं सर, because अगर elephants और एक important तथ्य देके मैं अंत करूंगी, मेरा time up होने वाला है कि I want the Honorable Minister to tell the Parliament that what is the reason that this government did not vote against the motion where international trade for ivory was due to be started. That motion was defeated, but this government abstained from voting. So any other purpose और उसके बीच में कोई संबंध तो नहीं है सर, ये पूछना शायद लोकतंत्र में मेरा हक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, पार्टी का बहुत-बहुत धन्यवाद। Shri Jairam Ramesh. Mr. Chairman, sir. Sir, I rise to oppose the Wildlife Amendment Bill 2021 in its present form. Before I speak, let me say how delighted I am. As rare is wildlife, rare is to see the chairman on the chair in the afternoon at 2:30. And sir, it's my privilege that I'm speaking in your presence, with no disrespect to the deputy chairman who is sitting in front of me. Sir, before I speak on the bill, my colleague Kumar Ketka drew attention to the fact that we are celebrating the 50th anniversary of the Wildlife Protection Act. The Wildlife Protection Act was discussed in the Lok Sabha and the Rajya Sabha in August of 1972 and was gazetted on the 9th of September 1972. It's an important landmark because this act was passed by Parliament when wildlife was in the state list of the Constitution. The first government made an effort under Pandit Jawaharlal Nehru and K.M. Munshi to pass a Wildlife Act. They could not pass it because the states objected to it, because wildlife was part of the states list. This matter came up when Indira Gandhi became Prime Minister. She was a very ardent conservationist, and she found a way to pass an act by Parliament on a subject belonging to the state list. She resorted to Article 252, which empowers Parliament to pass a law on a state list provided 2 or more states assent to it. So on the 12th of April 1972, she wrote a letter to all the chief ministers. And I wish to quote this letter because it's very relevant to our discussion today. She writes, "Dear Chief Minister, I have written to you in the past about wildlife conservation and management. Although there is now greater consciousness about this problem than a few years ago, we have not been able to significantly arrest the continuing decline of our fauna, including many endangered species. Poaching is on the increase, and we continue to receive reports of lucrative trade in furs and pelts of even those animals like the tiger, whose shooting is in law prohibited throughout the country. My colleague, the Agriculture Minister, Mr. Jagjeevan Ram then, has already written to you about the difficulties of controlling trade and taxidermy in the absence of a uniform central law applicable to the entire country. Experts are unanimous that only an integrated and country-wide policy of wildlife conservation and management can arrest the present precipitous decline. It is for these reasons that we now seek your cooperation to enact central legislation on wildlife conservation and management. This is not a political issue. It concerns the survival of our famous natural heritage. Past experience reveals the limitations of a regional approach. The center and states must now act in concert on the basis of a common legislation which should be strictly enforced.
So following this letter and following the Parliament passing this law, 11 states enacted their own laws in consonance with Parliament's law, and subsequently all states began adopting this national legislation. The Wildlife Protection Act is one of the most successful acts in our country. It has protected the lions, it has protected tigers, it has protected elephants, it has protected gharials, it has protected rhinoceros, it has protected olive ridley turtles of the coast of Orissa. It's in fact even protected pygmy hogs. Mr. Bhubaneswar Kalita will, perhaps one of the few members of the House who will know what a pygmy hog is, because it is found in the Manas and the Kaziranga sanctuary in Assam. Small little animals. Even that came under the Wildlife Protection Act. And it has protected a large number of birds and a large number of species. So we celebrate the Wildlife Protection Act of 1972. It was a courageous and visionary move on the part of a Prime Minister to bring this law at a time when it was not fashionable to talk about environment, climate change, biodiversity, and so on. So let me now come to the bill. Mr. Bhupinder Yadav has been chairman of many standing committees. He has been chairman of many select committees. And I can tell you the batting average that he has of his recommendations being accepted by the government in power is over 90%. Over 90% of the recommendations made by any Bhupinder Yadav chaired committee is over 90%. Whether he sat here or whether he sat there. But today, I have to give him only 50%. It's ironic that a minister whose recommendations are accepted is refusing to accept the important recommendations of the standing committee, which my colleague Sushmita Dev has pointed out. So let me first give him the two credits where it's due. He has accepted the recommendation of the standing committee on Schedules 1, Schedule 2, and Schedule 3. He has cleaned it up. He has followed the format suggested by the standing committee. He has not made one spelling change in the Schedules 1 and Schedule 2 and Schedule 3. And he has, I think, been bold enough to accept that the standing committee has made an improvement on the original bill, and I compliment him for that. Secondly, I wish to compliment him on dropping the most dangerous provision in the original bill. This was the most dangerous provision. This was clause 27, which reads as follows. In section 43 of the Principal Act, after subsection 3, the following subsection shall be inserted, namely, 4. This section shall not apply to the transfer or transport of any live elephant by a person having a certificate of ownership when such person has obtained prior permission from the state government on fulfillment of such conditions as may be prescribed by the central government. He has dropped this in consonance with the recommendations of the standing committee. So far, he's got 2 out of 2. Now comes the problematic part. He has accepted the standing committee's recommendation on redrafting this clause 27. And I, sir, have to point out here, there's a conflict of interest. I was chairman of the standing committee. I hope you will permit me to say this. The elephant is a natural, not only a natural, but it's also a national heritage mammal of India. And we know the cultural and religious significance of the elephant in many states of India. And that is why the standing committee had recommended an alternative, provided that the transport or transfer of a captive elephant for a religious, the standing committee accepted the religious significance of the elephant. But what does Mr. Bhupinder Yadav do in the bill?
Mr. Bhupinder Yadav adds, or any other purpose. What is this any other purpose? To provide for an elephant for a captive zoo in Gujarat? To provide for some private amusement parks in some other state? What is this any other purpose? So I requested him, please drop any other purpose. Keep, in fact, I suggested to him, say religious and cultural purposes. But he did not agree, and he has kept any other purpose. I would request him, sir. Secular credentials. Sir, I have moved amendments. I moved amendments to the bill on the 3rd of August. But these amendments I cannot move today. The Rajya Sabha is a continuing house. The amendments should be continuing. The bills are continuing. But now, today I am told, these amendments are infructuous because they have not been moved 48 hours before the bill. Yes. I have moved these amendments. Anyway, I don't want to get into this procedural issue. So I want to request the minister, please drop any other purpose. If you have any other purpose in mind, put it into the act. Take the House into confidence. Put it into the act and don't get up and say, rules mein aayega, because we know what happens in the rules. So please put it into the act. So I'll take 2 minutes more. So far his score is 2.5. 2 plus, and the third recommendation he's accepted half, and he's diluted it by putting any other purpose. So State Board on Wildlife. I moved an amendment. What the minister has done in the bill, he has made the State Board on Wildlife a rubber stamp machine. Today the State Board on Wildlife is chaired by the Chief Minister. At least the Chief Minister twice a year pays attention to the problems of wildlife. In the case of Mr. Naveen Patnaik, it's more frequent because he takes great interest in the protection of wildlife in Odisha. Now, this bill says you can have a standing committee chaired by the minister, who will be the vice chairman, and you will have 10 members, and we know, sir, these 10 members will be Secretary Forest, Secretary Environment, Secretary Finance, Secretary Culture. They'll all be people who will say yes. So please preserve the integrity and independence of the State Board on Wildlife and bring some institutional members, bring some scientists, bring some conservationists, bring some outsiders who will give you a different point of view. You want to protect diversity, biodiversity, protect biodiversity of intellectual opinion. You cannot have only one person deciding on the State Board on Wildlife. Finally, sir, my friend and colleague Shushmita Dev has referred to this. I do not object to the fact that this bill came because of the need to fulfill CITES commitments. The third assembly of CITES was held in India in 1981. There was no dhoom-dham, no tamasha that CITES is coming to India. CITES came to India in 1981. 150 countries met here. India is a world leader in conservation. We don't have to learn lessons from any other country. We are #1 in the world on conservation because of the Wildlife Protection Act. Now, what Mr. Bhupinder Yadav has done in this bill, he has produced a tome of a bill, which is impossible to navigate, impossible to understand. It was a very simple solution that the Standing Committee had suggested. That was agreed to initially, but then for some reason that agreement was taken back and we have gone back into a very cumbersome bill. So, sir, I cannot support the bill in its present form. I support the 2 points on which Mr. Bhupinder Yadav has agreed to the report of the Standing Committee. I compliment him on this, but compared to his average of 90% when he is chairman, I'm afraid as far as this Standing Committee is concerned, his acceptance rate is only 50%. Thank you, sir. Honorable members, before I call the next speaker, 2 things. One, and we'll seek the talent and services of Derek O'Brien to have a quiz whether a former minister has ever agreed with the current minister. Number 1.
And number two, I, as chairman, would like to draw on the wisdom of the House whether a recommendation of a standing committee or a joint committee is just an input or it has binding force. On that also, I will trust the wisdom of Derek O'Brien, given a strong lineage of quizzing. I call upon Dr. M. Thambidurai. Thank you, Chairman, sir. I am supporting this bill because Honorable Minister, as you said, he brought the bill after referring to the standing committee. Standing committee observations also taken into consideration, and he brought the bill. Deputy Chairman, sir, you have to allow me to speak a few minutes because even though you have taken over, because very important issue I am going to raise it because Jayaram Ramesh gave some inputs to have to answer for that. Please, sir, Jayaram Ramesh, very intellectual man, I am not denying that. First of all, he said why this act has come to the concurrent list from the state subject. This is the convenience of the central government, especially the Congress, which whenever they ruled, brought all the state subjects to the central government. That is the thing what happened. There, because of that, state governments are suffering. Because when he is telling that chief ministers have no faith in the central government means, why the Congress government brought this kind of bill to the concurrent list, a state subject. This is the thing where you are contradictions. And also, sir, regarding the Jallikattu, because this is a very important issue, or cultural issue in Tamil Nadu. Because when Jayaram Ramesh was the minister, he included the bull and everything in the list, where now we are facing the lot of problem. And also because of Narendra Modi ji, we got the exemption and got to conduct the Jallikattu thing because the ox and bulls comes in the control. Why I am telling, this kind of contradictions are making by the government who are coming to the power. When you are taking the power, you are bringing the rules as you like, because you cannot criticize this government or this government because it is the root cause which you created this embargo. Because you said even Nehru could not do, Pandit Nehru could not bring that, but Madam Indira Gandhi brought this. She only made the education also a concurrent state subject. Because of the NEET examination, we are suffering that. Why? This is telling. Yes, why I am telling? Because of this education has brought this emergency period, 1976, that we are suffering now. Therefore, this kind of federalism, try to don't teach us, because you are spoiling the federalism. Because this government copied the federalism that telling that we have to appreciate. Honorable Speaker, please address to the chair, please. Sir, I am coming. Please. So, John Preto, yes, I am supporting you. Please, no, please, address chair. Sir, you have limited time, please. Sir, you have limited time, sir, please. I am coming, sir. Coming to the point, sir. Regarding the, I want to request once again the concerned minister here, regarding the Jallikattu issue is going on Supreme Court, the case. Try to see that the government has to come forward to support our state government already fighting for that. And also it is a very cultural thing. It has to be, I am requesting central government to support in the Supreme Court, the case is going on, to see that Tamil Nadu's interest can be protected and culture will be protected, sir. Second, regarding the elephant thing, what they are telling, how they brought the amendment, whether the captive animal or whether in the forest. Sir, now, many instances are taking place in many parts of the country that because of our human beings, certain things we have done wrong or not, that is different issue. But the animals are killing human beings are killed by the animals, especially the elephants, which are coming many parts. Many human beings, whether you want to protect the human beings or not, I want to answer for that. Because, sir, these elephants, when they are coming up, sir, I'm coming to the point, sir. Please, there are a few more that is there, but what can I do that? I have to say something which is important for our consideration. Because the elephants are, because of the elephants moving many places, human beings killed.
Many people are killed, innocent. Then also it's coming to the field of cultivations and destroying that. Then who's going to give compensation for that? For that, how to protect these wild animals like elephants to be kept in the forest, not to come to our human habitat centers. That is suffering a lot. Therefore, I request the Honorable Minister to see that how you can protect the human beings. Apart from the animals, you protect it. You have to protect all. Please, all human beings are important. Please. But I request once again, same points I'm taking, sir. In the name of federalism, and also concurrently, many things are taken over from the state government. It has to once again go back to state government. Thank you. That is my request. Thank you. Thank you, Dr. Second, Samir. regards the Jallikattu, which I Please. raised this issue. Please. It has to be considered favorably to the feelings of the Tamil Nadu people. That has to be respected. Request, sir. Thank you. Regarding the elephants, when many people are died and compensation are required, therefore, let the central government, state government come forward to protect the human beings apart from the animals also. Sri Abdul Wahab, Mani Abdul Wahab. हिंदी में आदरणीय okay, English. Respected Vice Chairman, this bill, according to me, it was my first feeling was to support. But now Jairam Ramesh is opposing. I don't know. I am in the middle now. Some part I am accepting. I got only one request, as you know, only simple request. I am not going to Ragesh. This one, he's just like Sinha's, just like speech and the other speeches and all. I got one request, because one side Mr. Jairam Ramesh is sitting, other side Mr. Binoy Vishwam sitting. Both they were ministers in state and in center. They are making all the problems. Whenever he is in the ministry, we cannot go into the forest office. If we are telling them these developments, allow something, then immediately, Mantriji aisa bola. That was the situation in Kerala during his reign. Yeah, he's here. Yeah, we know. Yeah. So these sort of people should not be in this ministry. I prefer this Bhupendra is little, not just like this extremist. So I hope that you will do something justice, just like a Jangliwala. I am coming from Nilambur, foothills of Nilgiris. Every day we are facing in my house this one, what you call elephant attack. Yes. Not Kadalakramanam, just like elephant akramanam. So I request you, just allow or give fund to our government to have hanging solar. The normal solar, they know how to beat, how to cover it. They know they will come with the woods and they will smash it. So please allocate some funds. Whenever our DFOs, Divisional Forest Officer, is telling no fund for hanging what you call solar. So please do something that we are living, including me. I am also seeing sometimes elephant in my house. Yeah, you come, then you know. So please do something for this human-animal conflict, wild animal. And one more thing, you are taking care of the wild animal. There are some wild animals also in humans. Take care of them also. Thank you. Thank you, Abdul Wahab ji. Mani Sri Virendra Prasad Vyas ji. Mani Virendra Prasad Vyas ji, please. Virendra Prasad Vyas ji. Not going on record, please. Thank you very much, sir. I raised here today to support the bill, sir. The Wildlife Protection Act. Namaskar, sir. This is my maiden speech. And thank you for the last session. I'm closely observing, and the feelings is same as reiterated by Pradhan Mantri Modi ji yesterday, that this house should give chance to the new MPs like me to speak to express their views. But in the last session, I attended 100%, but I learned only a few things. It is nahi chalega, pendum, lojja, only few words I learned. Thanks, vendu, that also I learned. Anyways, at the very outset, I take the opportunity to thank my party, especially the Honorable Prime Minister Modi ji, my President Nadda ji, Home Minister Amit Shah ji, and my Chief Minister
Dr. Himanta Biswa Sarma and Team Assam for sending me here to this august house. And the time where we talk about dynastic politics and politicians with golden spoon, उसी समय एक सेवानिवृत्त चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी का बेटा को इधर भेजा है भाजपा ने. It's possible only in BJP. It's only possible in BJP. Whenever we talk about dynastic politics and amidst this kind of discussion, a son of a fourth-grade employee of a state electricity board is being sent to this august house. It is possible only for Modi ji, only for this BJP. Anyway, just I'm coming to the point. Although it's my first speech, I'll conclude in 6-7 minutes. Yes, I do support this bill. The proposal to amend the Act has covered a variety of topics, starting from the preamble to establishing a mechanism for regulating the export and import of endangered species in India. I honestly believe that this bill will ensure the protection of not only the endangered flora and fauna, but also of the tribal communities that live around our forests. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji had said in one of his Mann Ki Baat in 2020 that India's biodiversity is a unique treasure for the entire humankind, and we believe that biodiversity requires equal protection as the humans. Our party believes in the philosophy of integral humanism of Deen Dayal Upadhyay ji, and that seeks to unite human beings and also to establish coherence between human beings and the nature. And we live in Vasudhaiva Kutumbakam, which means the world is one family. Our approach also reflects the ideals of Assam's revered Vaishnavite saint Srimanta Hankodev, who had stated 5 centuries ago that Eka Briksha Dasa Putra Sama, which means one tree is equivalent to 10 sons. Our emphasis of nurturing the biodiversity is also in line with the global efforts to protect the earth and its flora and fauna from the impact of climate change. This legislation will also help efficiently regulate many economic activities revolving around the biodiversity. Sir, the preamble of the Act proposes to include event management, conservation, along with the protection of the wildlife. The preamble itself can be expected to lay the foundation for a strong law to protect the country's biodiversity. The draft of the legislation also talks about preventing sales and auction of animal articles and trophies. It makes provision for state governments to destroy such seized articles as well, to protect, to preserve, to possess, and to destroy also. That step is required to demonstrate that the state will not tolerate poaching of wildlife at any cost. Last year, Honorable Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma had led from the front and burnt more than 2,000 rhino horns, in public view, thereby sending out a message that the state has no tolerance policy towards the poaching of rhinos. And I want to mention one point that Assam is famous for rhinos, and we have 72% of rhinos, 72% of world population of rhino, and 89% of total rhino population of India. That is, we have in our Assam. The draft legislation also talks about the transfer and transportation of elephants. As told by the Honorable Forest Minister in Lok Sabha, elephants are an integral part of our lives, and in order to have a smooth transfer and transportation system for these animals, the Act proposes to regulate the entire process. And why I'd like to emphasize on this point, because Assam holds the second largest population of elephants in India, with more than 6,719 elephants as per an estimate in 2017. So we have a population of 6,719 plus. So a unique aspect of this bill is the designation of management authority for scientifically issuing permits for transnational movements of species, laying a greater emphasis of minimum government and maximum governance. The bill strongly regulates and monitors the export permits. That makes it a transparent process. And again, I'm coming to Assam. Assam, as we all of us know,
that it's a home to one-horned rhino, which our Birendra Vasuji has just mentioned, which is a pride of the state and the country. And the price of the horns of rhinos that are being illegally sold in the international market goes up to crores of rupees. As per report of media, one horn may cost around above 5 to 10 crore. It oscillates between that rate. As a result, the poaching numbers always remain high. But I don't know how my respected friends from Congress will accept it. I'm giving a data. That is, during the Congress regime in Assam, they ruled Assam they were in power for 15 continuous years. And I'm giving you data. In 2013, 27 rhinos were poached. In 2014, again 27. In 2015, 17. In 2016, 18. So everywhere, around 30 rhinos were killed by poachers during the regime of Congress. But when Narendra Modi ji came into power in the center and BJP came to the power of Assam, that figure came down to 1. So you'd like it, it is now only 1, and it goes towards 0. So the same surrounding villages, same forest guards, same police officials, same forest department officials, but during the Congress regime, it was 27 to 30. But now, as and when Modi's government came into power, the figure is going to 0. So this is the situation we are facing, we had faced there, and you'd like to know it, that not only the rhino poaching is minimized, along with the population of rhinos are also increasing. It was 2,895. It is now 2,895, which was in 2018, 2,650. So it is an increase of 200 rhinos. So hereby, I again I would like to also to reiterate the Honorable Minister's assurance, our Bhupen Jadavji's, in Lok Sabha, that the tribal communities shall continue to exercise their grazing rights and will maintain their lawful livelihood activities in forests until they have been completely and successfully rehabilitated. So this act has included the respect and empowerment for the tribal peoples and the forest dwellers. So I wholeheartedly support the bill and call for the reforms in the conservation of biodiversity to ensure that the number of endangered species in India keep growing and help us to maintain the biodiversity in full glory. Thank you, sir. I conclude. Thank you, Pavitra Margarita ji. Now, Sri Rawang Vara Narjari. Mr. Rawang Vara Narjari. Thank you, sir. Please. Pronunciation is Rangara Narjari, sir. Honorable Deputy Chairman, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on this bill. Sir, I am speaking in support of bill. Wildlife is part and parcel of our environment. They were respected and protected since time immemorial by our ancestors through religious beliefs and customs. We are always taught to protect all the animals and plants from childhood. We worship many animals and plants. After independence, this legacy was carried forward in our constitution also. The Article 51 ASG states that, I quote, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, unquote. And Article 48A states that protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife, the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country, unquote. India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world, and out of 36 biodiversity hotspots of the world, 3 are from India, namely the Indo-Malayan, the Himalayas, and the Western Ghats. We have many endemic and rare wildlife species like Asiatic lion, Manipur bush quail, red panda,
greater horn, one-horned rhinoceros, hill-oak gibbon, pygmy hawk, etc. But due to various reasons like forcing, habitat loss, etc., our wildlife species are becoming rare and some are on the verge of extinction. We have lost some species like pink hedgehog duck and Asiatic cheetah due to extensive game hunting. Respected Chair, we are fortunate enough to bring the cheetah back. It is a proud moment for India that cheetah was reintroduced in our Indian forest, Kuno Wildlife Sanctuary, by our Honorable Minister, Prime Minister of India. Thanks to the Honorable Prime Minister of India for his noble initiative. In the recent past, the threat in the exotic animals has increased in the Northeast India. Smugglers in the wet markets of Southeast Asian countries are using the Northeast as an active transit route to supply end. The exotic animals like brown tufted capuchin, macaw, kangaroo, leopard tortoise, etc. were recently seized from various areas of Northeast forest borders. To control the trade of these exotic animals, the Wildlife Protection Amendment Bill is made to increase the degree of protection to the Indian wildlife as well as for exotic wildlife. Honorable Sir, I must appreciate some of the highlights of the Wildlife Protection Act, Amendment Bill 2002. The bill has now reduced the schedules into 4 from earlier Schedule 6, which will help in proper management and implementation of the Act. It ensures a new Schedule 4 for specimens listed in the appendices under CTS scheduled specimens. The Convention requires countries to regulate the trade of all listed specimens through permits. It also seeks to regulate the position of live animal specimens. The bill seeks to implement this provision, CTS. This is a welcome step. Every person engaging in trade of scheduled specimen must report the details of the transaction of the management authority. Sir, the recent amendment has taken progressive steps to foster the participation of forest dwellers within national park while determining the management plan. It has mandated the need to consult the Gram Sabha. The protected areas falling under scheduled areas or areas recognized to possess forest rights based on claims under Forest Rights Act 2006. Sir, Northeast India tribes constitute a major part of Indian tribal community and largely scattered over all the states of Northeast. The step of following activities like grazing or movement of livestock, bona fide use of drinking and water and household water by local communities, etc. is a very welcome step. As the tribal people surrounding the wildlife areas are very poor and struggles a lot to meet their basic needs. Honorable Sir, please conclude. Honorable Sir, just I want to mention on regulation of transfer of animal. There are enough number of elephants in captivity, so it is very important to create more checks and balances for management and transfer. Sir. The transfer of captive live elephant is specially considered in this amendment. Though it is a welcome move that the issue has been averted, it is also needed to consider that a transfer procedure without monitoring, scrutiny and evaluation may create a negative impact. Thank you. So I conclude supporting the amendment in this bill, which is very much needed to strengthen the conservation of our precious wildlife and their habits. Thank you, sir. माननीय नरजरी जी, माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी, माननीय कामाख्या प्रसाद तासा। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं ये बिल के सपोर्ट में खड़ा हूँ और मेरा पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को बोलने का मौका दिया। मेरा चीफ व्हिप भी है, मिनिस्टर भी है। सर ये बिल जो है अभी बहुत चर्चा हुआ है और सारे मेंबर्स ने इसका ऊपर में जितना बोलना था उन लोग बोला है और कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी आया है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो एक सेंसिटिव मंत्री है और उनका नाम अभी एनवायरनमेंट मंत्री बोल के हम लोग असम में जाना जा रहा है। जो भी है सर, भूपेंद्र यादव जी ने जो आफ्टर 72 ये बिल का संशोधन के लिए लाया है, मैं चाहता हूँ ये अच्छा है। 2-3 पॉइंट जो जयराम जी ने बोला उसको छोड़ के, उसका वो अपना मत है, लेकिन मैं भी उसका एक मेरा भी बोलना है। जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स सबको मिला के ये बिल बनाया हुआ है और इसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम करना है। सर मैं बहुत दुख का साथ बोल रहा हूँ, स्टेट में बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर स्टेट में है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहते हुए भी स्टेट का इसका जो साइज ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड
नेशनल पार्क ये घटता जा रहा है और ये आश्चर्यजनक है। क्या देखते देखते जितना बड़ा पेड़ था सब काट गया है और मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या जंगल हो इसको साफ किया गया है। ये नागालैंड में है या मणिपुर में है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इसमें नागालैंड में बहुत ज़्यादा पेड़ था वो अभी काट के ख़त्म हो गया है। असम में भी पूरा ख़त्म हो गया। ये माफिया क्या माफिया है पता नहीं, लेकिन इसको काट के ख़त्म क्या है। बात सुप्रीम कोर्ट का राय आने के बाद और हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट जब हम लोग पावर में आया विशेष के असम में उसको थोड़ा रुकवाया है। बस सर ये बात बोलना चाहता हूँ क्या जो इंटरनेशनल ट्रीटी हो या क्या हो, लेकिन डिज़ाइन जो इंडिया के लिए क्या है ये अच्छा है। मैं ऑफिसर लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके हम लोग का मिनिस्टर ऑनरेबल भूपेंद्र जी जो काम किया है वो निश्चित रूप से एक अच्छा काम किया है, जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर में चिंतित करने के लिए सबको बाध्य किया है। पूरा होल हाउस अभी इसमें व्यस्त है और इसके ऊपर में चर्चा भी कर रहे हैं। सर मैं देखा अभी जितना भी नेशनल पार्क है, जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसके आसपास में कुछ प्रोटेक्शन है, लेकिन छोटा छोटा जो जंगल है धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इसका फ्लोरा और फौना जो है इसके ऊपर ऑर्किड जो है, जो छोटा छोटा एनिमल्स है लाइक फ्रॉग्स, फिश, विभिन्न ऐसा वो खत्म होते जा रहा है। और अत्यधिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का साथ भी इसको बोलना है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा फर्टिलाइजर प्रयोग करने का बाद भी ये फ्लोरा और फौना में ज़्यादा प्रभावित किया है। मैं देखा आप लोग जानते ही हैं जो मैक्सिमम आदमी का कॉन्स्टिट्यूएंसी में घर का पास में जंगल है, ये अभी डेवलपमेंट का नारा लगाते हुए इसका जितना वाटर बॉडीज है उस भी खत्म हो गया है। वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक स्लोगन भी बचा हुआ है। और सर ये देख रहा हूँ क्या अभी पेड़ लगाने वाला एक फैशन बन गया है, एक पेड़ लगाता है और फेसबुक में सोशल मीडिया में देता है, लेकिन इसको एक मिशन का मूड पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लेने के लिए बोला है और इसको एक मिशन मूड में लगाना चाहिए। सर मैं देख रहा हूँ असम नॉर्थ ईस्ट पूरा जंगल में भरा हुआ है, आप लोग को पता है, लेकिन जो मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसका बहुत पहले पेड़ काट गया है। अभी अभयारण्य था एक अभयपुर अभयारण्य बोल के है, उसका 90% खत्म हो गया। अभी हम लोग 1 लाख पेड़ वहाँ पर लगाया, लेकिन इसको बचाना बहुत मुश्किल है। हम लोग पेपर में तो नाम छप गया, लेकिन वो बचा नहीं। ऐसे ऐसे करते हुए इसका ऑर्किड है, जितना ऑर्किड्स का उस था, जितना मेडिसिनल प्लांट था, जितना जो भी था वो खत्म हो गया। और उसको छोड़ते हुए उसको एक साइड के करते हुए अभी देख रहा हूँ मैक्सिमम जगह पे जो लिजर्ड्स है, बड़ा बड़ा लिजर्ड्स है, ओल है, इसको लेकर तस्करी हो रहा है। और राइनो का बाद मेरा साथी लोग बोला, राकेश सिन्हा जी बोला, पवित्र मार्घेटिया जी बोला, विजेंद्र प्रसाद बसु जी ने बोला। अभी असम गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट व्यवस्था किया है। सर्बानंद सोनोवाल जी का बाद डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी तो पूरा जला दिया है, ये 200 से ज़्यादा हॉर्न जला दिया है। इसका मतलब है 200 से ज़्यादा उसको संरक्षित था, बाकी सब लेके भाग गया। वो कहाँ चलता था पता नहीं। यहाँ पर पार्टी का तो नाम बोलना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत व्यापक पैमाने पर था। अभी इसको कंट्रोल किया गया। अभी हम लोग का उधर बॉर्डर जो है, बॉर्डर म्यांमार, बांग्लादेश, इधर से भी कुछ तस्करी होता है, जहाँ स्किन्स और सिंग ऐसा बहुत चीज़ जिंदा या मुर्दा वो लेके कहाँ लेके जाता है पता नहीं, लेकिन इसको पकड़ते हैं हम लोग पुलिस। अभी जो बिल आया है इसमें भी थोड़ा सेंसिटिवली देखना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरा बात है हाथी का बात जो बोला, बाकी तो बिल में बोला गया है। हाथी का मैं 2-3 वहाब जी भी बोला, मैं चाहता हूं कि आप लोग रेस्ट्रिक्शन मत लगाइए। हाथी तो खाता नहीं है आदमी, हाथी को ट्रांसपोर्ट करता है, इसको भी फ्री करना चाहिए। क्योंकि मेरा जो छोटा एरिया है उसका विचरण भूमि, उसका जो मूवमेंट करने का जो एरिया है बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसको काट करके आदमी लोग पूरा छोटा बना दिया है। इसमें एक जंगल में 100-150 हाथी रहता है, वो पूरा डेली निकल के किसी ना किसी को आदमी को मारता है। ये एलिमेंट मैन कॉन्फ्लिक्ट अभी बहुत ज़्यादा हो गया, ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये हाथी को कैसे वहाँ से डिस्प्लेस किया जाए उसका भी चिंता करना चाहिए। ये हाउस के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको देखना चाहिए, नहीं तो डेली आदमी भी मर रहा है और हाथी भी घायल हो रहा है। आदमी डेली कुछ ना कुछ धान उगाने नहीं सकता है, उत्पादन कम गया है। मैं कृषि मंत्री पास में बैठा है, वो पता है, क्योंकि हाथी का कारण बहुत ऐसा भूमि है जो खत्म हो गया। इसको हाथी को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जहाँ हाथी रह सकता है उसमें लेके जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं है क्या उसको डिस्प्ले करना है, मंदिर में लेके जाना है, वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लेके जाता है उसको खिलाता है। 2-3 दिन कुछ महीने पहले हम लोग के एक हाथी जौमती को लेके कंट्रोवर्सी हुआ था, उसको छोड़ के ज़्यादातर कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। सर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं 2 दिन 3 दिन रिक्वेस्ट ऋषिकेश गया,
और ऐसे ऐसे जगह पे गया जहां पर जंगल है, वहां पर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि वहां पर 5 स्टार होटल भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसा है ऐसा ही रहना देना चाहिए। अभी काजीरंगा में नो सेंसिटिव जोन लगाया है। आदमी लोग का पूरा धंधा है कि नो सेंसिटिव जोन उठा ले। हम लोग का चीफ मिनिस्टर बहुत स्ट्रिक्ट है और एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत स्ट्रिक्ट है, जहां पर नो सेंसिटिव जोन उसको नहीं उठाया, सेंसिटिव जोन उसको रखा हुआ है। वो धंधा दूसरा नहीं है, उसका धंधा है उसमें जो सैंड है, उसमें जो हिल्स है, पत्थर है, उसको लेके बिजनेस करना उन लोगों का मतलब है। इसको लेकिन कुछ किसी कारण से उसको देना नहीं चाहिए, नहीं तो फोड़ा एंड खोना पूरा इंडिया में खत्म हो जाएगा। मैं आपको इस वाइल्ड लाइफ बिल पे जो बिल पे लिखा है, प्रोटेक्शन का बात है, ट्रांसपोर्टेशन का बात है, जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन पूरा गवर्नमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ वार्डन का बात है। मैं नहीं लगता है कि स्टेट का साथ कुछ झगड़ा होगा। रेलवे के लेके तो झगड़ा नहीं है, टेलीफोन को लेके झगड़ा नहीं है, लेकिन इसको लेके क्यों झगड़ा होगा? मैं नहीं चाहता हूं क्या ये स्टेट का जो ढांचा है, स्टेट का ढांचा में जो संघीय व्यवस्था है, इसमें कुछ ठेस पहुंचेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का साथ ये रिलेशन बरकरार रहेगा। स्टेट का कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, लोग उसको बोलना चाहिए, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में रखते हुए आप लोग भी देखा है, इतना बड़ा है, इतना घट गया है। हम लोग सैटेलाइट पिक्चर से देखता है, लेकिन हम जो फिजिकली जाएगा कोई वनभूमि में देखेगा उसका हालत बहुत खराब है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल आई थिंक बहुत अच्छा होगा। और जैसे बोला ग्राम सभा और जो पास में रहने वाला, खाली आदिवासी लोग का बात ऐसा नहीं है, आदिवासी का बात तो है ही, लेकिन गांव का जंगल का पास रहने वाला हर आदमी का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर। ये मैं देखा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन लोग प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करके पूरा जंगल को उन लोग ही प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट व्यवस्था होना चाहिए, माफिया लोग का जो पेड़ काटने वाला है, मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो बहुत विद्वान है, इसको थोड़ा देखेगा और प्रोटेक्शन करने के लिए जो फोड़ना विशेष करके जो तस्करी करने वाला है, इनका ऊपर में कड़ा से कड़ा व्यवस्था करने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। और भूपेंद्र यादव जी, ये जो किया है, आप लोग ऐसे मत बोलिए क्या किसी का प्रसाद। भूपेंद्र यादव जी एक विद्वान आदमी है और प्रधानमंत्री जी इसको निगरानी रख रहे हैं। ये बिल अच्छा होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, मेरा ये मानना है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष करके ध्यान देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ सेंचुरी से इसको ध्यान देगा। थैंक यू। धन्यवाद कामाख्या प्रसाद जी। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। सर, मुझे आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मौका दिया, उसके मैं आभारी हूँ। ये जो बिल आया है उसका मैं मानती हूँ हम सभी को समर्थन करना चाहिए, पर इसमें कुछ कंसर्न्स हैं जो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उसमें एक टाइटल चेंज हुआ है, कहा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स की जगह लिखा जाएगा कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जब हम मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स साइट्स के माध्यम से हम फॉलो करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या इस बिल के माध्यम से वो हम क्रिएट कर पा रहे हैं। सर, क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय बन चुका है, देश में ही नहीं दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। G20 के प्लेटफॉर्म पे चर्चा होगी, COP27 में हम अभी खूब चर्चा कर भी आए हैं, हमने क्लाइमेट फंड्स के बारे में भी बात किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो इकोसिस्टम की बात है, हम वाइल्ड लाइफ, हम साइलोज की बात करें, वाइल्ड लाइफ की हम बात कर रहे हैं। हालत ये हो रही है कि अभी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात अब्दुल वहाब जी कर रहे थे, जो एलिफेंट्स को लेकर काफ़ी सारे हमारे सांसदों ने बात की है इस बारे में। तो ये जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, मैन एंड वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है, वो इकोसिस्टम्स जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। बार बार हम सुनते हैं, मैं मुंबई से आती हूँ सर, आरे फॉरेस्ट का जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं खुद उसमें डिटेन हुई थी, और आज स्थिति ये है कि लेपर्ड्स सिटी में आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं। तो जब इकोसिस्टम की बात होती है तो हमें वाइल्ड लाइफ के ही ध्यान में रखकर नहीं, ह्यूमंस स्पीसीज प्रोटेक्शन बिल बनाना पड़ेगा, अर्थ प्रोटेक्शन बिल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम अपना इतिहास कहीं ना कहीं भूल रहे हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जी ने वाइल्ड लाइफ प्रिंसिपल को स्टॉकहोम में सबसे पहले पेश किया था, और उनका जो स्टेटमेंट था
Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat was unanimously adopted by 113 countries, sir. So I can clearly say that हमारी जो देश रहा है, we have led the revolution in terms of understanding the principle of wildlife and coexistence of humans along with wildlife. पर यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जयराम रमेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, नेशनल वेलफेयर बोर्ड जो है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, उसके बारे में कैसे उसको डाइल्यूट किया जा रहा है वो चर्चा में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। 15 लोगों का बोर्ड होता था, उसको घटाकर 3 कर दिया है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। और जयराम रमेश जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड्स में अधिकारी ज़्यादा होते हैं, जो लोग सही मायने में काम करते हैं, संरक्षण का काम करते हैं, वो कम होते हैं। और मुझे इस बात में कहने में यहाँ पर इस पटल पे गर्व महसूस होता है कि महाराष्ट्र एक पहला राज्य था जो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के अंतर्गत हमने एक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स और जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको हमने जगह दी थी और उनसे एक्टिवली एंगेज किया था। और उसी माध्यम से हमने महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट to release its own wildlife action plan under his leadership, sir. I would highly request and earnestly request our minister to kindly look at that particular idea that was introduced in Maharashtra. Unfortunate है सरकार बदल गई है और उसकी वजह से काफ़ी उसमें डाइल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उम्मीद करूंगी कि आपके माध्यम से उस पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी चीज़ें, जब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, उनके इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो कुछ मुद्दे जो मैं सामने लाना चाहूँगी तो जल है, जंगल है, उनके खाने के माध्यम हैं जो प्रफुल्ल पटेल जी बात कर रहे थे। तो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड 2017 में 400 थर्मल पावर प्लांट्स को पोल्यूटेंट्स रिलीज करने का, सर 2 मिनट बस लूंगी, 2 मिनट, वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंतर्गत ये अलाउ किया गया है। शायद माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे पाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी डाइल्यूट करने का कोशिश की गई थी, जो मनी बिल के माध्यम से उसको डाइल्यूट करने का काम हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से उस पर रोक लगाई गई। कैन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में 4000 से ज्यादा हेक्टेयर ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 53,000 precious mangrove trees are being destroyed, are set to be destroyed for the bullet train project. Bullet train project सभी मानते हैं कि एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, पर वो उसमें हमारे एनवायरनमेंट का डेग्रेडेशन हो रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का अगर हम बात करते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये उसके लिए हानिकारक होगा। और मैंने आपको आरे फॉरेस्ट के बारे में बताया ही था सर, हम गुड़गांव के अरावली फॉरेस्ट की भी अगर बात करें, अरावली हिल्स के बारे में, जिस तरीके से कंसिस्टेंटली उसका डेग्रेडेशन हो रहा है, उस पर भी किसी तरीके की व्यापक चर्चा नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ले लें जिसका डाइल्यूशन हो रहा है, या सीआरजेड नोटिफिकेशन, सर बस 1 मिनट लास्ट सर, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो अगर हम कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसकी जवाबदेही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बनती है, उस पर ये जवाब देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और जो एनोमलीज हैं जो सबने बताई हैं, उस पर भी संज्ञान लेकर करेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच जी। माननीय शंभू शरण पटेल जी। उपसभापति महोदय, कि आपने मुझे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया है। यह मेरा पहला मेडन स्पीच है। अगर मुझे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। उपसभापति महोदय, मैं अपना स्पीच शुरू करने से पहले मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे अति पिछड़ा के बेटा को भारत के सर्वोच्च सदन में आने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी का, हमारे बिहार भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने संगठन महामंत्री आदरणीय भिखुभाई दलसानिया जी का
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सह देश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भारत के सर्वोच्च सदन के लिए के लायक समझा, और मैं इस तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूं। महोदय, यह इतना बड़ा कार्य और इतना बड़ा दिल सिर्फ भाजपा के पास ही हो सकता है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी भारत के सर्वोच्च सदन को सुशोभित कर सकता है। महोदय, सभापति महोदय, मैं बिहार प्रांत से आता हूं। वह बिहार जो भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली रही है, भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है, भगवान गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली रही है, मैं उनका भी इस सदन के माध्यम से सशक्त नमन करता हूं। मैं अपने बिहार के महापुरुषों बाबू वीर कुंवर सिंह जी को, रामधारी सिंह दिनकर को और शहीद राम फणमंडल जी को भी मैं नमन करता हूं इस सदन के माध्यम से। अब बिल पर बोलिए। मैं बिल पे ही बोलूँ, मैं अपने समय पे समाप्त कर दूंगा उपसभापति, अब चिंता न करें। उपसभापति महोदय, ईश्वर ने सभी इंसान एवं सारे जीव जंतुओं को पैदा किया है, इसलिए जीने का जितना अधिकार मनुष्यों को है उतना ही अधिकार वन प्राणियों और पशु पक्षियों का भी है। इसलिए जितना संरक्षण सरकार से मनुष्यों को जीने के लिए मिलता है उतना ही संरक्षण बेजुबान प्राणियों को भी मिलना चाहिए। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है उपसभापति महोदय जहां की ईश्वर के साथ साथ पशु पक्षियों की भी पूजा होती है, इसलिए उन्हें भी उनके नेचर के हिसाब से जीने का अधिकार है। महोदय, अगर वन जंगल पशु पक्षी ना हो तो प्रकृति का जो है इकोसिस्टम असंतुलित हो जाएगा। इसलिए भारत के संविधान ने वन जीवों के संरक्षण के लिए नियम बनाए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो कि राज्यसभा में लाया गया है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची सीरियल नंबर 17B ख प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड सूचीबद्ध किया गया है। भारत में वन जीवों का संरक्षण और सुरक्षा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत देखा जा सकता है। महोदय, यह अधिनियम उस समय का परिणाम है जब न्यायिक सक्रियता के कारण भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र तेजी से विकसित हो रहा था। यह अधिनियम उस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि पिछले कानून जैसे जंगली पशु पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम 1912 में के लिए अपर्याप्त थे। इससे पहले इस अधिनियम में बहुत सारी खामियां थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 के आ जाने से वन जीवों पशु पक्षियों जंगलों एवं वन में रहने वाले जनजाति समुदाय को और अधिक सुरक्षा मिलेगा, उनके अधिकारों का अधिक संरक्षण होगा, जिससे कि पर्यावरण में जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी उसको कम करने में मदद मिलेगी। जंगल की कटाई रुकेगी, मनुष्य और वन प्राणियों के बीच जो संघर्ष की स्थिति है, जैसे बहुत सारे मुंबई में देखते हैं, गुजरात में देखते हैं कि चीता हो, तेंदुआ हो, वो शहर की ओर आ जाते हैं, उनको उससे भी कमी आएगी। जो प्रतिबंधित लकड़ियां हैं उसकी भी तस्करी कम होगी। महोदय, 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कोट किया था, टी गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ब्रह्मांड अपने प्राणियों के साथ भगवान का है, कोई भी प्राणी किसी से श्रेष्ठ नहीं है, मनुष्य को प्रकृति से ऊपर नहीं होना चाहिए और किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। महोदय, बोलने को तो बहुत कुछ है, चूंकि आज मेरा ये मेडन स्पीच था, आप समय की अपनी बाध्यता है। उन्होंने बोला 8 मिनट बोला गया, 8 मिनट बोला गया है। कोई बात झा साहब, प्लीज झा साहब सुझाव इधर दीजिए, उधर नहीं प्लीज। हाँ, आप बोलिए, अभी बोलिए। झा भैया, आप इधर चेयर को देखें प्लीज, आपस में बात न करें प्लीज। ठीक है, कल भी बोलेंगे, उसमें क्या है। महोदय, बोलने का तो बहुत कुछ है। अंत में मैं वन
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं और बिहार के बहुत वर्षों तक प्रभारी भी रहे हैं। मैं उनके प्रभारी काल में मोर्चा से लेके भाजपा में काम किया हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपना पहला स्पीच जो है उनके द्वारा लाए गए बिल पे मैं बोल रहा हूं। इससे बड़ी बात और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल सौभाग्य है। की बात कुछ नहीं। प्लीज बात पे आपस में बात न करें। आप बोलिए, आप बोलिए। जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वो खुद कल मजाक उड़ाएंगे, चिंता मत करें। नहीं कोई वो नहीं, आप अपने विषय पे बोलिए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अभी माननीय संजय जी और सुशील जी का बोलने के लिए आया है। नहीं, लेकिन नियमतः आधे घंटे पहले आना चाहिए। बहस कंक्लूड हो रही है, तो आप में से कोई एक आदमी बोल ले, अपना व्यू पॉइंट रख ले। आप बोल दीजिए सर जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे इस वन्य जीव संरक्षण संशोधन बिल पे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, इस बिल के बारे में हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने जो चिंता जताई, मैं उसी की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इसके प्रयास पहले भी होते रहे और इस बिल के माध्यम से यही प्रयास हो रहा है कि भारत के संघीय ढांचे को और राज्य सरकार के अधिकारों को किस प्रकार से अतिक्रमण किया जाए। जब राज्यों के अंदर वन विभाग है, वन्य जीव संरक्षण की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, कई राज्यों में परेशानी हो सकती है। कई राज्यों में उनके राज्य के बोर्ड हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जिसकी देखरेख उस बोर्ड की निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वयं मुख्यमंत्री शामिल है। तो ऐसे में उन बोर्ड का अधिकार खत्म करना और सारा अधिकार अपने पास लेना, मैं समझता हूं ये उसी प्रकार की कोशिश है जैसे आपने जीएसटी का बिल लाके राज्य सरकारों का अधिकार छीना, डैम सेफ्टी बिल लाके राज्य सरकारों का अधिकार छीना। अभी राज्य सरकार की जहां तक हम बात करें, आप सोचिए, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है पंजाब के अंदर मान्यवर, और उसमें पंजाब सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं। आप अगर राज्य सरकार के हर अधिकार को छीनने का काम करेंगे, उसके हर अधिकार को अपने पास लेने का काम करेंगे, तो भारत का लोकतंत्र और भारत की संघीय ढांचा कैसे मजबूत होगा। अभी मैंने यह विषय ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठाया था मान्यवर। राज्य सरकारों से आपने कहा कि निश्चित मात्रा में आप कोल आयात कीजिए विदेशों से। तो जब राज्य सरकार कोल इंडिया, जिसका प्रोडक्शन 30% बढ़ गया है, वो एनर्जी के लिए, पावर के लिए कोल इंडिया से डायरेक्ट कोयला खरीदना चाहता है, आपने कह दिया, एक फरमान जारी कर दिया कि आप विदेशों से कोयला आयात कीजिए, जबकि कोल इंडिया से उनको सस्ते में कोयला मिल रहा है। हमारी पंजाब की सरकार इसके लिए आपके सामने बार बार अनुरोध कर रही है कि हमें कोल इंडिया से जो पंजाब का कोटा है उसके लिए उपलब्ध कराया जाए। मैं इसी पे आ रहा हूं, तो इसलिए इसी पे आ रहा हूं। इसलिए कल यह भी दलील दी गई सरकार की तरफ से कि यह बिल इसलिए आवश्यक है कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी हमने किया है, जिसके पालन के लिए यह बिल लाना आवश्यक है। मान्यवर, बहुत सारे बिल इंटरनेशनल ट्रीटी ह्यूमन राइट्स को भी लेके है, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी
श्रम कानूनों को लेकर भी है मान्य, मजदूरों के अधिकारों को लेकर भी है। तो आप उनके अधिकार देने के मामले में कौन सा बिल लेके आते हैं? उनको संरक्षण देने के बारे में कौन सा बिल लेके आते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को भी। चीता लेके आए मान्यवर, पूरे देश ने स्वागत किया, कई घंटों तक टीवी चैनल पर उसका प्रसारण हुआ, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनका जो विस्थापन होता है, उनको जो अपने जमीन से बेदखल किया जाता है, उसकी क्या योजना है मान्यवर सरकार के पास? वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है और कीजिए, इस संशोधन बिल के माध्यम से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्य सरकारों के अधिकारों को छीना, आदिवासियों के अधिकारों को छीनना, जल जंगल जमीन पर उनके अधिकारों को छीनना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। और अगर आप चीता लेकर आए हैं मान्यवर, तो उस चीता को खिला क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि चीता को संरक्षित करने के लिए दूसरे जो जीव हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके सामने परोसा जा रहा है। तो इसके बारे में भी सरकार को अपना जवाब और अपना पक्ष रखना चाहिए। जहां तक वन्य जीव संरक्षण की बात है मान्यवर, हम लोग हमेशा इसके साथ हैं। और अभी तो इंसानी जीव के संरक्षण की बड़ी चिंता है मान्यवर। एक चुनाव हम लोग एमसीडी में जीते हैं, पता चल रहा है उनको भी उठाने की तैयारी हो रही है। इस विषय पे खुलेआम कह रहे हैं कि इंसानी जीव संरक्षित नहीं हो पाएंगे, विषय पर कह रहे हैं मेयर हमारा बनेगा, 30 सीटें कमाई बने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानी जीव का भी संरक्षण, राज्य सरकारों का भी संरक्षण, राज्य सरकारों के अधिकारों का भी संरक्षण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है मान्यवर। ऐसे बिल लाकर राजभवन, राज्यपाल और एलजी का दुरुपयोग करके जो राज्य सरकारों को अधिकारों को छीनने का आपका प्रयास रहता है, यह गलत बात है और इसको रोकना चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। श्रीमती सीमा द्विवेदी, प्लीज आपस में बात ना करें। सीमा जी। महोदय, यह जो वन्य जीव संरक्षण का विधेयक आया है, यह संशोधन लोगों, वनस्पतियों, कीट पतंगों, पशुओं सहित देश के पर्यावरण के लिए एक सार्थक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। महोदय, अभी हमारे भाई माननीय संजय जी बोल रहे थे कि राज्यों का अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं मान्यवर आपके बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ पर पशुओं के ऊपर जघन्य अपराध न होता हो। वन्य प्रजातियों में अपराध 2021 में हिमाचल प्रदेश में 232, केरल में 181, जम्मू कश्मीर में 191, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पर इस तरह का अपराध न किया गया हो। और महोदय, इसी कारण से रंग बिरंगे पक्षियों को हम 3 दशक पहले अपने पास देखते थे, अब वह नगण्य हो गए हैं। इसको कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? जो पशु पक्षी हमारी इर्द गिर्द मराते रहते थे, दिखते रहते थे, वो दिख नहीं रहे। इसका मतलब कहीं न कहीं से उनके संरक्षण में कमी आई है। और मान्यवर, मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने सरकार इस संशोधन कर कानून को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष इसे आधारहीन बातों को लेकर के विरोध कर रहा है। महोदय, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, संशोधन विधेयक में पशु पक्षियों, वनस्पतियों की पहले 6 अनुसूचियों में रखा गया था। अब इसको संशोधित कर करके 4 अनुसूची में कर दिया गया है। मैं समझती हूँ यह बड़ा ही एक बहुत बड़ा सार्थक पहल है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। महोदय, पहले क्या था, जब जीव जंतुओं को लोग मारते थे, उस पर हमला करते थे, उसके लिए सरकार ने जो जुर्माना दिया था, पहले दिया था 25,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना। अब हमारी सरकार ने उस जुर्माने को 10,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया। जहां पर 25,000 का जुर्माना था, उस जुर्माने को 25,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया। और सबसे बड़ा जुर्माना उसको 25,000 से 5 लाख कर दिया। मान्यवर, इसको लेकर के हम यह कह सकते हैं कि वन्य जीवों पर जो अनियंत्रित अपराध होते थे, उस पर रोकने की मजबूती आएगी। मान्यवर, मैं एक
माननीय अपने विद्वान सदस्य आदरणीय जयराम जी, जो हमारे कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो बहुत विद्वान सदस्य हैं, मैं उनको सुन रही थी। आपने कहा कि पशु पक्षियों को राज्य का विषय बताकर केंद्रीय कानून का विरोध किया। आपने कहा कि जो पशु पक्षी है इसका विषय राज्य सरकारों से है, केंद्र सरकारों को इस पर कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। आपने कहा कि इंदिरा जी, नेहरू जी को ने बहुत किया। मैं पूछना चाहती हूं कि अब तक राज्यों ने क्यों अब तक इस अपराध को क्यों नहीं रोका? क्या पशु पक्षियों को अवैध तरीके से व्यापार होता रहा? इसी गलती को आज ठीक किया जा रहा है। पशु पक्षियों को देश के भीतर आवागमन होता रहता है, अतः केंद्रीय कानून के अभाव में राज्यों के लिए अपराध को रोकना कठिन होगा। मान्यवर, आपको याद होगा पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जब बारिश होने को होती थी तो तमाम तितलियां मंडराती थी। हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। आज बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। हमारी तितलियां कहाँ चली गई, हमारे गिद्ध कहाँ चले गए, हमारी गौरैया कहाँ चली गई, हमारे कौवे कहाँ चले गए। गांव की परंपरा थी पितृपक्ष में जब पितृ का विसर्जन होता था तो हम उम्मीद करते थे कि कौवे आएंगे। आज माननीय कौवे ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। गिद्ध और लाल ठोड़े वाला जो गिद्ध होता था, इस गिद्ध को लेकर के पर्यावरण का बड़ा फायदा होता था। कोई भी जीव जंतु मरता था, बदबू आती थी, तो ये हमारे गिद्ध उसको ले जाकर के खाते भी थे और उसकी बीज से जो पैदा होने से खाद भी उत्पन्न होती थी। इन सबों का बहुत बड़ा अभाव हो गया है। और मान्यवर, मैं हिंदी साहित्य की छात्रा रही हूँ। मैंने तुलसीदास की शब्दावली को भी पढ़ा है। रामचंद्र जी के बन जाने के बाद माँ कौशल्या माता आंगन में बैठ कर कहती हैं, बैठी कुशल मनावे माता, कब आई हो मेरे बाल कुशल घर, कहो काग फूरी बाता। पहले कौवे हमारे संदेश वाहक हुआ करते थे। रसायन में जो ये हमारे इस काव्य में जो हमारी कुछ की नायिका होती थी, उन्होंने भी अपने वीर वेदना में कहा है, पीयू से कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। काग और भौरे हमारी पौराणिक परंपराएं थी। आज इन पौराणिक परंपराओं को हम देख रहे हैं कि बहुत पीछे चले जा रहे हैं। जंगलों में जिस तरह से कटाने हो रही हैं, जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल को काटने के बाद जिस तरह से पर्यावरण का एक घोर संकट पैदा हो गया है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारा देश का पर्यावरण संतुलित रहे, हमारे देश की व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, इसके लिए मानव कानून बनाना कोई अपराध नहीं है। मैं सरकार को बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ कि आपने इस कानून में विधेयक को ला करके जो एक नई दिशा में काम करने का प्रयत्न किया है, इससे किसी भी सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर किसी सरकार को लगता है कि नुकसान होगा तो सरकारों ने अभी तक इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया। आप देखिए मानव, बड़े से बड़े जंगल खत्म होते चले जा रहे हैं। पहले के जंगल होते थे, जब हम लोग जाते थे, कभी रास्ते में कहीं जाते थे, बड़े बड़े जंगल दिखते थे, बड़े बड़े पहाड़ दिखते थे। अब सबकी कटाने हो गई हैं, इस पर प्रतिबंध लगना बहुत आवश्यक है। मैं तो सरकार से इस समर्थन को लेकर के अपना पुरजोर समर्थन देती हूँ। यह बिल ला करके सरकार ने ऐसे लोगों के ऊपर उपकार किया है। मानवर, पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, ये बोल नहीं सकते, ये अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते। इनकी पीड़ा को अगर समझने का किसी ने काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने इसको समझने का काम किया है, तभी ये विधेयक लेकर के हमारी सरकार यहाँ पर उपस्थित हुई है। अभी तमाम लोगों ने अपने अपने भाव को प्रकट किया, तमाम लोगों ने अपनी अपनी चिंता को जाहिर किया। मैं भी एक भारत की चिंता को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, जब हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है, जब हमारी पशु पक्षी, हमारे जानवर, ये सारे लोग सही समय पर रहते हैं, तो सबके अपने अपने फायदे होते हैं, सबके अपने अपने नुकसान होते हैं। सरकार जिस तरह से इन बातों को लेकर के आई है, उसका यह एक अपना हमारा सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि हम किसी के भी अधिकार में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत सरकार एक कानून ऐसा बना रही है कि जिस कानून के तले सब रह कर के अपना काम करें और हमारे वन्य जीवों का संरक्षण होता रहे, उनका संवर्धन होता रहे, उनकी प्रजातियां बढ़ती रहें। और मानो कभी कभी बाहर से जो कोई विदेशी, जो बाहर की प्रजातियां हमारे यहाँ आ जाती हैं, उनसे कभी कभी कोई संकट हो जाता है, उसके लिए भी रोकने का एक कारगर उपाय किया जा रहा है। मैं विपक्ष के सभी साथियों से निवेदन करना चाहती हूँ, मनुष्य तो मनुष्य होता है, लेकिन एक जो जानवर होता है वो बेजुबान होता है, वो बोल नहीं पाता, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी करुणा को प्रकट नहीं कर पाता। ऐसे जानवर की रक्षा के लिए, ऐसे पशुओं की रक्षा के लिए
हम सभी लोगों को सर्वसम्मत से इस बिल का समर्थन करना चाहिए। इतना कहा करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी का जवाब। सम्माननीय उपसभापति महोदय, 2 दिन से चलने वाली इस चर्चा में सदन के सभी सदस्यों ने इस बिल के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करी, तो सबसे पहले तो मैं सब सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी संवेदनशील विषय पे अपनी इस प्रकार की सहमति व्यक्त करी है। लेकिन सबसे पहले विषय इसी से चर्चा से प्रारंभ होना चाहिए कि जब हम विकास की बात करते हैं और विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे जन, जंगल और जमीन एक साथ है। दुनिया में जब हम कहीं भी जाते हैं, पर्यावरण की वार्ताओं में जाते हैं, तो हमारा हमेशा दुनिया के सभी देशों से ये कहना होता है कि हमारे जंगल बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, लाइफस्टाइल की दृष्टि से दुनिया के अन्य देशों से भिन्न है। और इसलिए भारत में जो वन हम जिसको कहते हैं, वो सांस्कृतिक महत्व के इसलिए भी हैं कि इस समय अभी 5 साल बाद जब यूएस में इंटरनेशनल फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, तो दुनिया ने भी इस बात को स्वीकार किया कि फॉरेस्ट पीस के लिए भी है, शांति के लिए भी है। और भारत ने अपना जो ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जंगल में हमारे उपनिषदों की, वेदों की रचना हुई, और इसलिए जो लंबे समय से हमारे लोग इस वन क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है। मैं विषय को यहीं से प्रारंभ करूंगा। मनोज जी ने विषय उठाया और अभी संजय जी ने भी विषय उठाया। ये बात अलग है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा मनोज जी ने कल यूएस के रास्ते पे जाने को क्यों कहा। लेकिन हमने जब ये बिल बनाया, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, हमने कूनों में भी जो जिनको भी पुनर्स्थापित किया, मैं विस्थापित नहीं, हमने पुनर्स्थापित किया है। लेकिन जब पुनर्स्थापना का ये जो प्रोसेस चलता है, इसमें जो हमारी कम्युनिटीज हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, इनके लिए हमने इस बिल में क्या प्रोविजन किया? In section 35 of the Principal Act, after subsection 3, the following subsection shall be inserted, namely section 3B. हमने क्या इस बिल में प्रोविजन किया है? Till such time as the right of the affected persons are finally settled under section 19 to 26A, both inclusive except clause C of subsection 2 of section 24, the state government shall make alternative arrangement required for making available fuel, fodder and other forest produce to the persons affected in terms of their right as per the state government record. But उससे पहले हमारा ये जो कहना है कि उनके जो स्थानीय जो उनके फ्यूल, फॉडर, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनके जो राइट्स हैं, वो तब तक पूरे माने जाएंगे जब तक कि उनका पूरी तरीके से पुनर्स्थापन ना हो जाए। ये इस बिल की संवेदनशीलता को दिखाता है। दूसरा, where a community reserve is declared on a private land under subsection 1 of section 36C of the Community Reserve Management Committee shall consist of the owner of the land, a representative of the State Forest or Wildlife Department under whose jurisdiction the community reserve is located, and also the representative of the panchayat concerned or the tribal communities as the case may be. तो हम जो पुनर्स्थापन चाहते हैं, हम सबके सहयोग से, सबके विकास से और सबको साथ लेकर चलते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं विशेष रूप से सदन की स्टैंडिंग कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और बिल जब भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाता है, सेलेक्ट कमेटी के सामने जाता है, तो निश्चित रूप से कुछ सजेशन भी आते हैं, अच्छे इनपुट भी आते हैं, कमेटी का विजडम भी होता है, स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन भी होता है, और ये आवश्यक है। और
जयराम जी की कमेटी में गया, जयराम जी ने 3 विषय हमें कहे। पहला कैप्टिव एलिफेंट के लिए, दूसरा उनका कहना था हमने स्टेट स्टैंडिंग कमेटी को एक्स्ट्रा पावर कर दी, और तीसरा जयराम जी का कहना था कि उन्होंने जिस तरीके से सूची को इस बिल में लगाने को कहा था उस हिसाब से हमने सूची को नहीं लगाया। यहां पर बहुत बार हमारे सरकार के लिए और हमारे लिए ये कहा गया कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को ले रहे हैं। ये तो वाइल्ड लाइफ की पावर ही जब आई, जब 42nd अमेंडमेंट आपके समय में आया, आपने स्टेट की पावर लेके कॉन्करेंट लिस्ट में इसको लिया संवर्ती सूची में। नहीं, प्लीज आपस में बात कर, प्लीज आप भी समझ लो। तो ये आवश्यकता होती है, हमारा संविधान गतिशील संविधान है। इसी सदन ने, इसी सरकार के नेतृत्व में जीएसटी जैसा हिस्टोरिक लॉ बनाया, जिसमें राज्य की विधानसभाएं और केंद्र की संसद ने अपनी पावर एक जीएसटी काउंसिल को दी और देश के फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव और फ्रेंडली जो संघवाद है उसमें परिवर्तित किया, सहकारिता को सहभागिता में परिवर्तित करके देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर हम राज्यों में ज्यादा पावर देना चाहते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? प्लीज आर्गुमेंट को ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा, मैं आर्गुमेंट का जवाब दे रहा हूं। एक मिनट प्लीज। देखिए, ईमानदारी से आप सुनिए जो मैंने कहा। मैंने कहा आज एक स्टेट बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ है, उनके कुछ अधिकार हैं, चीफ मिनिस्टर उस स्टेट बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं इस बिल से? वो स्टैंडिंग कमेटी होगी उस स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, मिनिस्टर कंसर्न उसकी अध्यक्षता करेंगे और 10 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। सब अफसर होंगे, सब रबर स्टैंप होंगे। यही तो मेरी चिंता ये है। आप अधिकार नहीं छीन रहे हैं, आप स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कमजोर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं मंत्री और अपने एक मंत्री को वहां बिठा रहे हैं, आपके नहीं, स्टेट के मंत्री को बिठा रहे हैं। हमारा सुझाव यह था कि इस 10 सदस्यों वाले समिति में आप बाहर से 4 या 5 विशेषज्ञ लाए जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रहे, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल की समिति मत बनाइए। यही आर्गुमेंट था। गलत आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अधिकार छीन रहे हैं। माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति महोदय, ये देश में कैसी राजनीतिक बहस हम खड़ा करना चाहते हैं? जब हम संसद को पढ़ते हैं और जब हम संसदीय परंपरा को पढ़ते हैं तो मंत्रिमंडल सामूहिकता के आधार पर काम करते हैं, मुख्यमंत्री तो उसका नेतृत्व करते हैं और देश की जनता उनको चुनती है। तो क्या आप देश की जनता में अविश्वास करते हैं? क्या उन्होंने, देश की जनता ने अपनी पूरी बुद्धि क्षमता का उपयोग करके अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करा, एक दल को सत्ता नहीं सौंपी? तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि अगर किसी मंत्री की अध्यक्षता हो गई तो गलत हो गई क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, वो संविधान की ओथ ले रहा है, वो संसद की ओथ ले रहा है? ये किस तरीके से लोकतंत्र को हम देखना चाहते हैं? लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को चेयरमैन के काम करने का अधिकार है। हमने अधिकार में राज्यों को ज्यादा निर्णय लेने में सक्षम बनाया है, जो संघवाद को मजबूत करता है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि हमने रिलीजियस के अलावा अदर पर्पस क्यों करा। आप ही को पता है कि सेक्शन 38 जो है इस बिल का, जो 72 में बना है, जिसको आप क्लेम करते हैं, हम कहते हैं अच्छा बिल है, 72 से बिल काम चल रहा है। 2004 में आपके सरकार के समय में रहते हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रति आश्वासन भी दिया था। 1976 से हम उस संधि के सदस्य हैं। हम बार बार कहते रहे कि हम कस्टम एक्ट से, बाकी एक्ट से इसको रेगुलेट कर देंगे, हमने रेगुलेट नहीं किया। उन्होंने कहा आप इन सारे एक्ट की जगह सीधा एक एस्टेब्लिश सिस्टम लाइए। 2004 में, 2005 में आपने एश्योरेंस दिया, उसको पूरा करना एक परंपरागत चलती हुई सरकार का दायित्व है। उस दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं और जब हम उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं तो उसी बिल में तो सेक्शन 38 में जू का लिखा हुआ है।
तो अगर अदर रिलीजियस पर्पस नहीं ले जाएंगे और अगर हम उसमें अपने ही एक्ट में जो सेक्शन 38 में पावर हमने क्रिएट कर रखी है उसको भी अगर हम वो प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसका भी उसमें कोई अधिकार नहीं रखेंगे, तो हम कैसे देश में वन्य जीवों का संवर्धन करेंगे? और आप ही की रिकमेंडेशन इसमें कमेटी की है, जो हमने कहा कि जो स्पेशलाइज आपने जो उसमें रिकमेंड किया था, हमने कहा था क्योंकि आज के समय में कई स्पीशीज अलग हो रही है, हाथी के संबंध में नहीं, ये अन्य जीवों के संबंध में। पर जब सेक्शन 38 में ऑलरेडी जू रिकॉग्नाइज है, अथॉरिटी है, लेकिन इस सदन में मैं इस विषय पर यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम जो भी रूल मेकिंग का काम करेंगे, हाथियों के पूरे संरक्षण, संवर्धन और उनके पूरे तरीके से जो एक्ट के प्रोविजन है उसके अनुसार करेंगे, हम कहीं दाएं से बाएं नहीं। लेकिन ये पावर हमको रूल्स में इसलिए ये एनेबलिंग लॉ, जैसे जैसे समय और परिस्थिति बदलती है, रिलीजियस तो आप लोगों ने, कमेटी ने रिकमेंड किया, हम इसका भी स्वागत करते हैं और हम इसका भी आपका ही सेक्शन 38 में जू अथॉरिटी, तो हम बाकी सारे पर्पस बंद कर दें, बाकी सब छोड़ दें। तीसरा विषय, मैं ये सूचित करना चाहता हूं, जो इस विषय को शुरू कराते समय विवेक तनखा जी ने करा था, उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी कैसे इसमें कोई शिकायत कर सकती है, क्योंकि पड़ोसी को ज्यादा अच्छी तरीके से पता होता है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि अधिनियम में पहले से ही तीसरे पक्ष द्वारा शिकायत कराने का प्रावधान मौजूद है। वन्यजीव संरक्षण 1972 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत के समक्ष शिकायत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 55 के तहत शिकायत दर्ज कराने के इरादे से 60 दिनों का नोटिस देकर की जा सकती है। नई धारा जो 49M है वो भी इस संबंध में लागू रहेगी। मैं जो आपने विषय कल कहा था कि हम इसमें ESZ को क्यों नहीं लेकर आ गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 1 किलोमीटर का जजमेंट है, उसके बारे में मैंने लगातार कहा है कि इस बारे में सरकार का संज्ञान है, सरकार इस मामले में रिव्यू में भी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट के द्वारा एक अथॉरिटी बनी थी, एक कार्यवाही बनी थी, एक प्रक्रिया बनी थी। उस प्रक्रिया के द्वारा इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। आज देश में 670 से ज़्यादा जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है, उसमें हम 470 का पूरा नोटिफिकेशन कर भी चुके हैं। लगभग ये संख्या का आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उतनी संख्या है। लेकिन जहाँ तक बिल का संबंध है, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है 1986, उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है, प्राकृतिक दृष्टि से जो संवेदनशील जगह है, उनको अधिसूचित किया जाता है। इसको वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक्ट उसके ऊपर लागू होता है। कनिमोजी जी ने अपना विषय यहाँ पर रखा था और उनका कहना था कि क्या वाइल्ड लाइफ एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इस बार तो हमने जो फॉरेस्ट राइट में जो उनके राइट्स हैं, जब तक उनका वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत उनको पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमने उनको संरक्षित करने के लिए ज़्यादा सुविधाजनक बनाया है। और मैं सदन में बधाई देना चाहूँगा, हमारी बीजेडी की जो सुलता देव जी थी, उनका कल मेड इन स्पीच था, लेकिन मैं इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेड इन स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से रखा। हम जानते हैं कि भारत में जो 17 बायोस्फीयर क्षेत्र करे हैं, उसमें उड़ीसा का जो हमारा सतकोशी का एरिया है, वो देश का सबसे संपन्न जैव विविधता का क्षेत्र है। और मैं मानता हूँ कि उड़ीसा जैसे प्रदेश में जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो हाथियों का कॉन्फ्लिक्ट है वो सबसे ज़्यादा है। और मैं यहाँ सूचित करना चाहता हूँ कि सामान्यतः हाथी जो चलते हैं वो एक निश्चित रास्तों के ऊपर चलते हैं, जिन रास्तों से उनका नियमित आना और जाना रहता है। हमारा राज्य सरकारों को ये निर्देश रहता है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी पहचान करनी चाहिए और उनकी अंतर्राज्यीय आवाजाही, क्योंकि जो पूरा मूवमेंट होता है, अगर हमारे ये झारखंड से बंगाल का मेदिनीपुर होते पूरा उड़ीसा में हमारा पूरा हाथी का
पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर होते हुए पूरा रूट है, तो नॉर्थ बंगाल में भी है, प्लस ये झारखंड का हमारे तो जयराम जी तो पूरा उस जंगल को मोटरसाइकिल पे घूमे, सारंडा के जंगल को, उधर से खरसवा सरायकेला होता हुआ, और वो जंगल हमने भी पूरा देखा है, हाथियों के रूट को भी हमने देखा है। और उस नाते भारत सरकार ने 2017 में एक दिशा निर्देश जारी किए थे और इसके लिए अंतर्राज्यीय समन्वय समिति बनाने का, क्योंकि जब तक अगर हम रूट पे नहीं रोकेंगे तो फिर वो उन गांवों में आकर के उत्पात मचाने का विषय रहेगा। और फरवरी 2021 और जून 2022 में भी वापस से हम लोगों ने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए गाइडलाइन निकाली थी। केरल के हमारे मित्र जॉन जो कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ऐसा कहा कि टाइगर का क्या होगा, हमें तो सबको बचाकर रखने का विषय है। लेकिन मैं हमारे केरल के सांसदों को कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हूं, आपकी सरकार भी है, वहां पर वाइल्ड लाइफ एक्ट का सेक्शन 11B है। मैं माननीय उपसभापति जी, चूंकि ये विषय बार बार आता है इसलिए मैं पढ़ना भी चाहता हूं। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन or the authorized officer may, if he is satisfied that any wild animal specified in Schedule 2nd, Schedule 3rd or Schedule 4th has become dangerous to human life or to property, including standing crops or any land, or is so disabled or deceased as to be beyond recovery by order in writing, and stating in the reason therefore permit any person to hunt such animal or group of animals in a specified area or cause as such animal or group of animal in that specified area to be hunted। तो आपको पूरे राज्य में वर्मिन बोर करने की क्या जरूरत है? जिस क्षेत्र में नुकसान है आपको पावर है। फरवरी 2021 जून 2022 में हमने गाइडलाइन निकाली है, केरल सरकार ने 11 बार उसका प्रयोग किया है। आप बार बार ये विषय को उठाकर लोगों की सेवा नहीं करते, राजनीतिक विषय क्यों बनाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अधिकार आपके अंतर्गत है, जिस अधिकार के लिए हमने गाइडलाइन निकाल रखी है, जिस अधिकार को हमने कानून के द्वारा दे रखा है, आप उस अधिकार का प्रयोग नहीं करते। राज्य की जनता को भी हम कहते हैं, क्यों आप इसका प्रयोग नहीं करते? जब सरकार की गाइडलाइन है, केवल हमारे को केवल भाषण देना है, केवल हमारे को केवल किसी भी विषय को गुमराह करना है। प्लीज नो जॉन प्लीज जॉन नो। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। और इसलिए मेरा माननीय उपसभापति जी सदस्यों से कहना है कि हमारा जो मुख्य विषय है, वन्य जीवों का भी संरक्षण होना चाहिए, स्थानीय समुदायों का भी संरक्षण होना चाहिए, और जो हमारे समुदाय लंबे समय से वहां पर रहते आ रहे हैं, अगर आज उसका प्ले एरिया जो हमारे प्रफुल्ल पटेल जी ने अपने भाषण में कहा, निश्चित रूप से हम जो भी जंगल है उसके प्रे एरिया की सबसे पहले जाकर के चिंता करते हैं। जब भी हम वाइल्ड लाइफ में जाकर के कोई भी मीटिंग जब वन अधिकारियों के साथ लेते हैं तो सबसे पहले हम प्रे एरिया देखते हैं। और आप ये मान के चलिए कि जिस जंगल में टाइगर रहेगा, जिस जंगल में लॉयन रहेगा, जिस जंगल में चीता रहेगा, अगर सभी हमारे वन्य जीवों का संतुलन रहेगा तभी रहेगा, क्योंकि नेचर का सिद्धांत है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, और हमें प्रकृति का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से ही हमको उसकी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए, और हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरीके से उसमें लगे हुए हैं। अयोध्या रामी रेड्डी जी ने उल्लेख किया कि कुछ प्रजातियां अनुसूचियों से गायब हैं। अनुसूचियों में संशोधन करने और प्रजातियों को जोड़ने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। हमारे पास, मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, और बल्कि तो जयराम जी भी पर्यावरण मंत्री रहे हैं, इनका भी अच्छा योगदान रहा है। जो हमारे इंस्टीट्यूट है, चाहे हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और WII हो, चाहे हमारा ZSI हो,
चाहे हमारा BSI हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके हमारा IIFM हो, ये देश के और ये 2-3 इंस्टीट्यूट तो लगभग 100 साल पुराने हो गए हैं और इनके पास जो संग्रह है, इनके पास जो कलेक्शन है, इनके पास जो विजडम है, और अभी हमारे कोयम्बटूर में भी एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्री जेनेटिक्स को लेकर के अच्छे काम कर रहे हैं। ICFRE जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट इस देश के पास है। तो ये सारे हमारे पास वैज्ञानिक जो है, हमारे साइंटिस्ट जो हैं, वो इसका मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं और उसके हिसाब से हम इनको जोड़ने का काम करते हैं। GK वासन जी ने भी इस डिबेट में भाग लिया और उन्होंने वापिस वर्मिन वाला विषय कहा और ये स्पष्टीकरण कहा कि इसको किस प्रकार से वर्मिन घोषित किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर जॉन ब्रिटस और जो वासन जी ने जो विषय उठाया उसका मैंने विस्तार से जवाब दिया है। हम एकदम से किसी प्रजाति को पूरे राज्य में से खत्म कर दे, जब पर्टिकुलर एरिया में आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है, पर्टिकुलर एक जानवर को भी कर सकते हैं, ग्रुप को भी कर सकते हैं और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको भी संपत्ति के अंतर्गत माना है। तो मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को अपनी विजडम के साथ, अपनी नीति निर्णय के साथ और सबसे ज्यादा अपनी गरीब जनता के हक में त्वरित रूप से निर्णय लेने चाहिए। निर्णय लेने के लिए सरकारें चला करती हैं, जो केंद्र सरकार लेकर के दिखाती है, इसका भी अनुकरण करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अनिल हेगड़े ने जो फसल नुकसान के संबंध में विषय उठाया है, अगर केवल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में केवल मनुष्य का नहीं, उसका नुकसान के लिए भी हमने पूरी एडवाइजरी जारी करी है। जोशमणि जी ने अपने जो विषय में दावा न्यायाधिकरण के संबंध में मैं सूचित करना चाहता हूं कि उसमें भी जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या चोट लगती है तो हमारे पूरे एडवाइजरी में हमने पूरी राशि और उसको देने की एक व्यवस्था भी करी है। और रविंद्र कुमार जी ने अपने विषय को रखते हुए जो पालतू और बंदी हाथियों को एक अलग श्रेणी में शामिल करने के लिए सूचित किया है कि बंदी पशुओं को अलग से रखा जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें एक्ट में पूरा प्रोविजन हम लोगों ने पूरे तरीके से किया है। महोदय, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरे तरीके से इस बात के लिए है कि देश में वन्य क्षेत्रों का दायरा भी बढ़े और वन्य क्षेत्रों के दायरे को बढ़ाने के लिए मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मुस्कुराइए मत, मैं नहीं, बहुत सारे सदस्यों ने ये कहा है कि हम अंधाधुंध परमिशन दे रहे हैं, हम बिना देखे हुए परमिशन दे रहे हैं, और हमारे जो केतकर जी जो कह रहे थे कि सरकार पूरे तरीके से जंगलों को कटवा रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सन 2004 से और 2014 तक 10 सालों में देश में 2,26,682 हेक्टर जो है ये डाइवर्ट हुआ, तो एवरेज ईयर जो है वो 28,372 हुआ, जबकि जो एनुअल जो कंपनसेटरी 22,668 हुआ, जबकि हमने अपनी सरकार के समय में 1,30,000 जो 2014 से 2022 तक 1,30,703 हेक्टर जो है वो हमारा डाइवर्ट हुआ, जो एनुअल है उनके 22,000 जो पिछले 10 साल था उसके मुकाबले में केवल 16,337 हुआ। तो हमने कम जंगल डाइवर्ट किया और ज़्यादा देश का विकास करा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन है, अगर 10 सालों का औसत देखा जाए तो 28,372 हेक्टर था, जो बढ़ करके केवल अगर एनुअल देखा जाए तो 37,845 हेक्टर हुआ है। तो हमने देश में जो ग्रीन कवर बढ़ाने का जो हमारा कमिटमेंट है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है। राकेश सिन्हा जी ने हमारे इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनफोर्समेंट के विषय को कहा और निश्चित रूप से देश के इसको बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। प्रफुल्ल पटेल जी ने एक और जो कहा कि नेशनल हाईवे और रास्ते के विषय में WII के साथ मिलकर, जयराम जी को भी पता है, कुछ अच्छे डिज़ाइन भी बनाए और देश में पहला अच्छा प्रयोग पेंच में भी हुआ था, जब हम ऊपर से हाईवे को लेकर के गए। अभी अलवर में सिरिस्का के पास भी एक ऐसा अध्ययन चल रहा है ताकि जो हमारे जानवर नीचे उनका जो एरिया है वो भी डिस्टर्ब ना हो।
और सबसे बड़ी बात है कि एक अगर आप जितना वन्य क्षेत्र में जाते हैं आपको प्रकृति के साथ उतना ही जानने का, सीखने का, स्वभाव का अवसर मिलता है। तो डिज़ाइन भी हमने इस प्रकार से कहा है कि हमारा पूरा फ्लोरा और फोना अव्यवस्थित ना हो, बल्कि अभी तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में हमने ये भी कहा है कि जो तार निकाले जाते हैं, बाकी भी जो उपयोग किया जाता है, उसके जो मिटिगेशन मेजर्स है उसमें क्या तरक्की हुई, उसकी भी रिपोर्ट हमने मांगी है, ताकि जो हमने लक्ष्य तय करे थे जंगल के कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन के लिए, उन लक्ष्यों को पूरा किया गया नहीं किया गया, उसके लिए भी हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बल्कि हमने रेलवे के साथ WII, रेलवे और पर्यावरण मंत्रालय साथ बैठे हैं। देश में जो 1800 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र हम लोगों ने पहचान करा है जहां से हाथियों का अधिकतम निकलने का रास्ता है, उनके डिज़ाइन को लेकर WII ने अपने कुछ सजेशन दिए, रेलवे ने कुछ जगह पे उसको प्रयोग के तौर पे भी आगे बढ़ाने की बात करी है। सुष्मिता जी ने अपने विषय को रखते समय ये कहा कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में क्यों नहीं संशोधन ले आए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट नियोगा प्रोटोकॉल में एक अलग संधि के नाते हम लोग उस विषय को करते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा विषय है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जिनके ABS राइट हैं, वो ABS राइट उनको एश्योर होकर कैसे मिले, सरकार उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ का एक्ट है, ये अलग संधि से है, दोनों का कुछ समानता है, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, और इसलिए उसमें पेटेंट, कॉपीराइट बाकी ज़्यादा है। अगर वाइल्ड लाइफ एक्ट में देखा जाए तो जंगली जीवों का संरक्षण, उनका अवैध व्यापार, ये ज़्यादा है। तो दोनों में समानता होते भी अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं। उसी के साथ इंदु गोस्वामी जी, अब्दुल वहाब जी, कामाख्या प्रसाद जी और प्रियंका जी ने विषय उठाया था कि गुड़गांव में अरावली को लेकर के क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरावली को लेकर के पूरा जो वहाँ के ज़मीनों का पूरा एक सरकार, हरियाणा सरकार ने पूरा अधिग्रहण किया है, और इसको पूरे जोन को हम किस प्रकार से हरा भरा रखें, क्योंकि दिल्ली में जो राजस्थान के थार के मैदानों से भी जो हवा आती है या जो रेत आती है, उसके लिए अरावली एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो निश्चित रूप से काम चल रहा है। शंभू शरण जी, संजय जी के सीमा द्विवेदी जी ने अपने विषय रखे, अन्य भी सदस्यों ने विषय रखे हैं। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से बिल को रखते समय सदन की कंसेंसस करना जरूरी है। फिर भी जयराम जी, जो आपने आशंकाएं जताई है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसके लिए जो नियमों में जो ज़्यादा व्यवस्था है, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन 38 का भी पालन करना है, उसको भी हम संरक्षित करके रखना चाहते हैं। हाँ, ये जल्लीकट्टू जी बालू जी ने कहा है, वो निश्चित रूप से तमिलनाडु की हमारी सांस्कृतिक परंपरा और उसका हिस्सा है, न्यायालय के भी निर्णय हैं, और हमारा मानना है कि इसमें निर्णयों का भी पालन होना चाहिए और उसके साथ साथ परंपरा का और संस्कृति का भी पालन होना चाहिए। दोनों का समन्वय बना करके रखा जाना चाहिए। मेरा इस सदन से अनुरोध रहेगा कि एक संवेदनशील विषय था जिस पर प्रकृति, जन जीवन, जंगल और सबके बारे में हम लोगों ने बड़ी संवेदना के साथ विषय रखा है, और निश्चित रूप से जो कल मैं अपने विषय को दोहराना नहीं चाहता हूं, साइटिस में इस बार जिस प्रकार से भारत ने अपनी उपलब्धियां करी है, आने वाले समय में भी हम दुनिया में जब पर्यावरण की बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जिसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल मिशन लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें इस देश का जंगल भी सुरक्षित रहे। और उसके साथ साथ मैं अपनी बात को अंतिम रूप देते समय कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने बर्ड्स की बात करी, और उसके लिए हमारे देश के वेटलैंड बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक रामासर ट्रीटी है जिसके अंतर्गत अपने ऐसे वेटलैंड जिनको आप अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिला के संरक्षित करना चाहते हैं। भारत ने आज़ादी के 75वें वर्ष में देश की 75 वेटलैंड अब हमारी रामासर साइट्स में है, जो हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। The question is that the Wildlife Protection Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 10 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 10 are adopted. Clause 11 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Dr. John
Britas. Retain the status quo of State Board. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted. Clauses 12 to 26 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 12 to 26 are adopted. Clause 27 stands part of the bill. There is one amendment, number 2 by Dr. John Britas. Sir, I move the bill, move the amendment. Thank you. Okay. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 27 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 27 is adopted. Clause 28 to 37 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 28 to 37 are adopted. Clause 38 stands part of the bill. There is one amendment, number 3 by Dr. John Britas. Are you moving? I am moving it. It's to empower the states Amendment to declare a moved. government. I am Amendment moving moved. it. Yeah. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 38 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 38 is adopted. Clauses 39 to 41 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 39 to 41 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Bhupendra Yadav to move that the bill be passed. माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now next business, the Energy Conservation Amendment Bill 2022. Sri Rajkumar Singh to move a motion for consideration of the Energy Conservation Amendment Bill 2022. Sir, I beg to move that the Energy Conservation Amendment Bill be taken into consideration. माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं तो इस बिल के संबंध में बताएं. अध्यक्ष महोदय, बीते कुछ दशकों से पर्यावरण की चिंता, पर्यावरण में डिटेरियोरेशन की चिंता पूरी दुनिया को सताती रही. इसके लिए कई सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए, क्योटो हुआ, उसके बाद से एक MOFCC है जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है फॉर कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज. उसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकें हुई. इन सभी बैठकों में विभिन्न देशों ने कमिटमेंट्स किया अपने एमिशंस को कम करने के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए, क्लाइमेट एक्शन करने के लिए. हम लोगों ने भी किया. हालांकि हमारी जो पर कैपिटा एमिशंस हैं वो दुनिया के पर कैपिटा एमिशंस के 1/3 हैं. आवर पर कैपिटा एमिशंस आर 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज. अगर आज के दिन में
हम देखें जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का लोड है एनवायरमेंट पर, उस टोटल लोड में हमारा कंट्रीब्यूशन मात्र 3.4% है, जबकि हमारी आबादी दुनिया की आबादी का 17.5% है। तो हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टू लेगेसी एमिशंस, वो बहुत कम है। इसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, वी हैव इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडर्स in energy transition. We have emerged, our country has emerged as one of the leading nations in climate action, in energy transition. We are the only major country, only major economy जिसके कि climate action compliant है with a sub 2 degree rise in global temperature. हम लोगों ने pledge किया था, we had pledged in COP21 in Paris that by 2030 40% of our established power generation capacity will come from non-fossil sources. Mr. Chairman, sir, you'll be happy to know that we achieved this target 9 years in advance. We achieved this target in November 21. Today, our non-fossil fuel power generation capacity is 42% of our total capacity. हमारी total capacity आज के दिन में 408 गीगावाट है, यानी कि 4,08,000 मेगावाट। हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी यानी कि रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड, हाइड्रो, और नॉन फॉसिल फ्यूल में न्यूक्लियर भी आता है। न्यूक्लियर कम है हमारा, 6,800 मेगावाट है, लेकिन ये सब को जोड़ करके 1,73,000 मेगावाट है, जो कि हमारी एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी का 42% है। इतने तेजी से किसी भी देश ने अपने COP21 में दिए गए प्लेज को अचीव नहीं किया, और चूंकि हमने अचीव कर लिया, बिकॉज वी अचीव इट वेल इन एडवांस, इसीलिए COP26 में हमने अपना एम्बिशन बढ़ाया। पहले हमने कहा था 40%, वील अचीव 40% बाय 2030, अब हमने कहा है कि वील अचीव 50% ऑफ आवर एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी बाय 2030। वी हैव एनहांस्ड आवर एम्बिशन एज अ कंट्री। इसी तरह से जो एमिशंस इंटेंसिटी फॉर इकोनॉमी है, हमने COP21 पेरिस में 2015 में प्लेज किया था दैट बाय 2030 we will reduce the emissions intensity for economy by 33 to 35% by 2030. Now we've already achieved 30%. So we shall overachieve that as well. And that is why in COP26 in Glasgow, we again upped our ambition and we said that by 2030, we will achieve a reduction of 45% in our emissions intensity. So we are doing well. We are doing well. Despite the fact that our per capita emissions are so low. But that is because, we believe in the environment. Our government believes in the environment. In fact, as a civilization, we've always believed in the environment. As a civilization, we sort of venerate the trees, the water. We venerate nature. So it's in our blood. It's in our culture. So we venerate the environment. Now we want to carry this forward. This needs to be carried forward. Energy transition में जो ways of generating electricity है, उसको तो हमने change कर दिया. But that accounts for about 40% of the emissions. 40% जो emissions होता है वो power generation कारण होता है. That accounts for 40% of the emissions. But we have to address the other sectors which account for 60% of the emissions. Steel manufacturing, cement manufacturing, all these. Now these are called hard to abate sectors. Now the way to do this, one of course is to electrify the economy so that people move away from coke and coal to electricity, and the other of course is to green the electricity. That is the strategy we are following. But we also have to change our feedstock from fossil to non-fossil. ये feedstock जो हम use करते हैं, for example, I'll give you an example. हमारे fertilizer manufacturing में अमोनिया की जरूरत होती है. अभी जो अमोनिया बनता है वो नेचुरल गैस से बनता है. तो अमोनिया बनाने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, कार्बन लोड बढ़ता है. हम जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग करते हैं उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. हाइड्रोजन का जो अभी मैन्युफैक्चरिंग होता है, हाइड्रोजन जो अभी बनता है वो भी नेचुरल गैस से बनता है, उसमें भी CO2 एमिट होता है. अगर हमको एनर्जी ट्रांजिशन करना है और हम लोगों ने प्लेज किया है दैट बाय 2070 वी विल बी नेट जीरो एंड वी शैल अचीव दैट प्लेज. Let me tell you this, I mean, we have achieved our targets in the past, we shall achieve our targets in the future as well. And we shall remain, we are a leader in energy transition. That's not only me saying it. I mean, the whole world says it. The Bloomberg called us the most attractive destination for investment in renewables. And,
a body came out with a ranking of countries which are in the forefront of climate action. Now we stand 5th in that. Now ahead of us, there are just 4 countries: Denmark, Sweden, one Chile, and one other country. Only 4 countries, small economies. In the major economies, we are the first insofar as success in climate action. So we shall remain a leader. Now, in order to do that, I have brought these amendments. इसी के लिए हमने ये amendment लाया. अब जैसे कि हम petroleum refining में we use hydrogen drawn from natural gas. The idea is to make green hydrogen here, and thereafter replace that. We import natural gas to make hydrogen. To replace that imported natural gas, and to stop this carbon emission, we'll use green hydrogen. Of course, we'll prescribe that replacement in stages. To begin with, a small stage, maybe 5%, 10% first year, going on thereafter. Similarly, for production of fertilizers, we use ammonia made from natural gas. Now, and we import about 2.3 million tons of ammonia. And of course, we also import more natural gas and make ammonia here. Now, that all that releases carbon dioxide into the atmosphere. Now, we propose to replace that with green ammonia, that means made from green hydrogen. तो इसके लिए हमको ये amendment हम ला रहे हैं ताकि जो फीड स्टॉक है वो फीड स्टॉक में हम बदलाव करें. तो इसका आप देखें कि हमने ये एक amendment इसमें हम लोगों ने लिया है. एक और सेक्टर है जिसको कि हम एड्रेस कर रहे हैं इस अमेंडमेंट में, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर. अब बिल्डिंग सेक्टर में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है वो ऑलरेडी एड्रेस है. कमर्शियल बिल्डिंग्स, लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स जिनका की कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ऊपर है, लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स ऑलरेडी एड्रेस्ड है. उसमें हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बना दिया. उसको करीब करीब 20 राज्यों ने अडॉप्ट कर लिया. तो अब जो भी बिल्डिंग्स बनेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगे, उनको ये फॉलो करना होगा. इसी तरह से जो लार्ज आजकल मल्टी स्टोरेड फ्लैट्स बन रहे हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो उसमें भी एनर्जी एफिशिएंसी की बहुत गुंजाइश है. और उसमें क्योंकि अब जो एमिशंस है उसका 24% हमारा ये हाउसिंग सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर से आता है. तो उसको हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, लार्ज, वेरी लार्ज वंस, जो कि लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसको इंक्लूड कर रहे हैं. तो ये 2 मेन हमारे इसमें ये है प्रोविजन. एक थर्ड प्रोविजन है कार्बन मार्केट. अभी एक तरह का कार्बन मार्केट हमारे यहाँ है. जैसे कि हमारे जो ये एमिशंस इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने एक स्कीम लाया, उसको कहते हैं परफॉर्म अचीव ट्रेड. वो इंडस्ट्री के लिए लाया, जिसमें कि हम इंडस्ट्री के लिए एमिशंस का स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं और एनर्जी कंजम्पशन का स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं और एमिशंस इंटेंसिटी का. अगर उससे ज्यादा अचीव कर लिया उन्होंने तो उनको हम एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट देते हैं. और जो इंडस्ट्री उसको नहीं अचीव कर पाई वो तो या तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदती है या नहीं तो पेनल्टी देती है, फाइन देती है. ये और इसके अंतर्गत अध्यक्ष महोदय ऑलरेडी हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस रिड्यूस किया है 106 मिलियन टन पर एनम कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हमारा हुआ है. सिर्फ 4 साइकिल ये हमने अभी एसेस किया, 4 साइकिल में हमारा इतना रिडक्शन हो गया CO2 एमिशंस पर एनम. अब उसको और एक हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए RECs देते हैं. इस सबको कंबाइन करके कार्बन क्रेडिट सिस्टम हम लाना चाहते हैं. दुनिया में आजकल एक कार्बन क्रेडिट, आजकल ही नहीं, क्योटो में एक कार्बन क्रेडिट सिस्टम लागू हुआ था जो कि चला 2020 तक. अब पेरिस में एक अलग कार्बन क्रेडिट सिस्टम का एक नींव रखा गया है, उसके नियम बने. तो उसके अंतर्गत 40 कार्बन क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी है दुनिया में. हम इसमें लगाना चाहते हैं कार्बन क्रेडिट सिस्टम, ताकि जिसको हम मैंडेट करें कि आप अपना कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस रिड्यूस करेंगे, मैंडेट करेंगे, उससे ज्यादा अगर रिडक्शन करता है तो उसको कार्बन क्रेडिट देंगे जो कि सेलेबल होगा. मेजर अमेंडमेंट्स ये है. और उसके कुछ और अमेंडमेंट्स हैं. वो अमेंडमेंट्स हैं कि पेनल्टीज में हम कुछ ग्रेडिंग कर रहे हैं, उसको रैशनल बना रहे हैं. जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का गवर्निंग काउंसिल है उसको ब्रॉड बेस कर रहे हैं. यही अमेंडमेंट्स हैं. ये सभी के सभी हम लोगों का जो मूवमेंट है ये एनर्जी में, मूविंग फॉरवर्ड, मेकिंग आवर सिस्टम मॉडर्न. हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस. हम लोगों ने जितने दिन में यूनिवर्सल एक्सेस अचीव किया बाय एडिंग 2 करोड़ 90 लाख 29 मिलियन होम्स, करेक्टिंग 29, उतना तेजी से और कहीं किसी दुनिया में नहीं हुआ. वी ऑलरेडी achieved a situation whereby
The availability of power in rural areas has gone up from 12.5 hours in 2015 to 22.5 hours today. We've already done that. My demand as a result has increased by about 25,000 megawatts per day on a daily basis compared to the previous, the previous year. So all this, because we have strengthened the transmission system, we've added and we've also strengthened the distribution. So we brought about major changes in the power system. We have reformed the power system already. This is one more step forward. So I would recommend this bill to the House. Thank you. Motion moved. There are 3 amendments by Sri Ella Maram Karim ji, Dr. John Britas ji and Dr. V. Sivadasan ji for reference of Energy Conservation Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move the amendments at this stage without any speech. Sri Ella Maram Karim ji, are you moving your amendment? Not moving. Not moved. Dr. John Britas ji, are you moving your amendment? Sir, I am not moving concerning his past deeds of taking on communal forces. Thank when you. He was in Bihar. So amendment not moved. Dr. V. Sivadasan ji, are you moving your amendment? I am not moving, sir. Not moved. So all the 3 amendments, they are not moved. The motion for consideration of the bill are now open for discussion. Dr. Abhishek Manu Singhvi ji. Mr. Chair, sir, as I rise broadly in support of the bill, I am nonetheless struck by some very unique features of the Indian legislative process and, more importantly, the governance process in the context of passing legislation. But first, sir, with your permission, I have said it before in previous governments, and I repeat it, a minor procedural issue about amendment bills which carry roughly 80 to 100 amendments, as this one does. This amends the Energy Conservation Act of 2001 with about 90 odd amendments. It is too much, sir, to ask the legislative department, irrespective of government, to give us the act originally with brackets and footnotes as to what it would look if this amendment was passed? The idea of going and locating each of these 90 amendments in the original act is a nightmarish exercise for somebody who wants to go into the detail. And it's a very small thing. It is done by publishers who publish books of new acts each year or twice a year with amendments. I think every legislator who wants to make a significant focused contribution should be blessed with a copy of the original act showing the amendments as they would look if the amendment bill is passed. And this is something so simple, but unfortunately has never been done for decades. Sir, let me therefore begin by complimenting the government broadly on the initiative taken and say that the virtuous parts of the bill are virtuous, are desirable. A, it brings in building codes for energy efficient, non-fossil fuel based constructions. So non-fossil based constructions will be encouraged, and therefore building codes have been amended or will be amended. 2, it is wider because it includes residences, commercial buildings, industrial spaces, etc., etc. So it is all inclusive, no exclusions. Third, it expands the concept of carbon footprint emanations from buildings, vehicles, vessels, appliances, and a much wider subset of human activity. Again, no exclusions, that's good. Fourth, it creates agencies, not quite clear fully, but yes, it does, for issuing carbon credit certificates, a very important aspect on which I'll touch in a moment. It seeks to create an ecosystem to buy and sell these carbon certificates at all levels, supposedly under a scheme, and there is some problem there which I will address you in a minute. And of course, lastly, it penalizes with steep penalties those who don't comply with the requirements of reducing carbon footprints in all these activities, constructions and non-construction areas. But sir, equally,
as in the well-known 1960s spaghetti Western movie, the good, bad and the ugly, the good and the virtuous comes with the not so good and perhaps the ugly. The first phrase coming to my mind as I holistically see the original 2001 Act, which this bill seeks to amend, is that India is truly an over-legislated, under-enforced country. We tend to think that all our problems stop with legislation, and we go back clapping and backslapping ourselves on the back that we have passed legislation. And I'll make that good in a moment. The second striking facet is the hiatus between promise and performance, between preaching and practice, between kathani and karni, which I will show you with the help of some statistics. और मैं समझता हूँ कि मैं और मंत्री महोदय अलग अलग किताबें तो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आंकड़े तो अलग हो नहीं सकते अलग अलग किताबों में, लेकिन मेरे आंकड़े कुछ और हैं, भिन्न हैं जो उन्होंने आंकड़े दिए उनसे. I have no doubt, sir, about your good intentions. That's why I said I broadly rise in support of the bill. But if you don't see the larger picture, the holistic picture, if you don't see the ground reality, then you know that old saying about good intentions. The path to hell is also paved with good intentions. तो ये कौन से विरोधाभास है, ये कौन से विपरीत चीजें हैं, पहलू हैं. मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, और सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सच्चाई दर्शाते हैं. पहला बिंदु, अनुच्छेद 3 से 13 इस बिल का, ये जो संशोधन वाला बिल है, इसका 90% से 80% हिस्सा है. अधिकतम हिस्सा यही 10 क्लॉजेज हैं. ये इसकी आत्मा है, इसका शरीर है, और ये डील करते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से, जिसका एक बहुत विशाल ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है. वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री महोदय हैं, उसमें बहुत वरिष्ठ सेक्रेटरीज हैं 8-9 डिपार्टमेंट्स के. लेकिन मैं ध्यान से देखा तो खोदा पहाड़ निकला चूहा. क्यों? क्योंकि अभी हमारी 25वीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है. उसमें लिखा है कि पिछले वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21 में यही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपके संशोधन बिल का सबसे स्पेशल फोकस है 10 प्रावधानों में, उसका खर्चा सिर्फ 54% ऑफ बजट एस्टिमेट था, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा, 54%. और उसके अगले वर्ष में फाइनेंशियल ईयर 22 में 52% है फरवरी 2022 तक. तो जब आप 50% सक्षम हैं इसका इस्तेमाल करने में, तो इतनी विशाल ब्यूरोक्रेसी बनाना, इतने सारे अधिकार क्षेत्र देना इस बिल में ऐसी संस्था को जो अपने बजट एस्टिमेट का भी आधे या आधे से थोड़ा ज्यादा खर्च कर पा रही है, और ये आपकी एक मेन एजेंसी है इस काम करने के लिए. दूसरा बिंदु, साफ ऊर्जा जो है, इसका मकसद क्या है, जिसको आप नॉन फॉसिल या साफ ऊर्जा कहते हैं. कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, यही आपका रियो में 1992 में उद्देश्य था, यही आपका क्योटो में 1997 में था, यही आपका पेरिस में 2015 में था, यही आपका कोपेनहेगन में 2021 में था, और यही अभी जब गए थे शर्म एल शेख में 2022 में कुछ हफ्तों पहले था. लेकिन फिर कथनी और करनी में विपरीतार्थक चीज क्यों है? कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं. आप इतनी बात कर रहे हैं, अभी मंत्री महोदय ने इतनी चीजें बताई आपको, लेकिन सब्सिडी साफ ऊर्जा पे आप कम कर रहे हैं, और टैक्सेस साफ ऊर्जा पे आप बढ़ा रहे हैं. ये विरोधाभास नहीं है. जीएसटी सोलर प्रोजेक्ट्स पे 5% से 12% कैसे हुई 2021 में, और हम ये प्रावधान पास कर रहे हैं 2022 में. मैं जानता हूं कि आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मैं जानता हूं, मानता भी हूं कि चीन से आयात कम करना चाहिए, इसलिए आपने साथ साथ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी भी बढ़ा दी है सोलर पैनल्स पे. जीएसटी अलग बढ़ाई है, बेसिक कस्टम ड्यूटी अलग बढ़ाई है आयात पे. लेकिन आपको ये पता है कि बहुत सारे निर्माता हमारे जो आयात के कंपोनेंट्स हैं इन सोलर पैनल्स के, वो बाहर से मंगवाते हैं. तो आपके बटन दबाने से या आपके आयात के दर बढ़ाने से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है भारत.
आपकी साफ ऊर्जा का अभियान सफर करता है। तीसरा बिंदु, 2022 में अत्यंत महत्वपूर्ण मैपिंग इंडिया एनर्जी पॉलिसी 2022 एक रिपोर्ट आई थी, अभी की बात कर रहा हूं, इसी वर्ष की। उसमें बड़ा चौंकाने वाला फिगर मैंने पाया कि रिन्यूएबल सेक्टर, जिसको आप नॉन फॉसिल सेक्टर कहते हैं, उसकी सब्सिडी 2017 से 22 के बीच में 60% कम हुई है, 59% टू बी एग्जैक्ट। 60% सब्सिडी आपने कम की है उस सेक्टर की जिसको आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं। एक अपवाद है इसमें, मंत्री महोदय ने सही कहा, वो एक अपवाद है, बिजली वाली व्हीकल्स का आपने बहुत बढ़ाया है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से बहुत बड़ा, ज्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक सीमित नहीं है। चौथा बिंदु, गलत ऊर्जा फॉसिल फ्यूल में भी सब्सिडी कम हुई है, कोल, ऑयल इत्यादि। लेकिन आपको मालूम है कि आज भी फॉसिल सेक्टर को नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तुलनात्मक रूप से 9 गुना ज्यादा, 900% मोर सब्सिडी मिलती है। आप कैसे बनाएंगे इस देश को फॉसिल फ्री? पांचवा बिंदु, आपके 7 महारत्न हैं पीएसयूज में। वो जब नए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको भी ध्यान रखना पड़ता चाहिए कि फॉसिल फ्यूल के आधार पर इन्वेस्टमेंट न करें। उनके इन्वेस्टमेंट 2021 में और 2020 में 11 गुना ज्यादा हुए हैं उन क्षेत्रों में जहां फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल है बनिस्बत रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल। आज भी माननीय आपके आंकड़े थे जरूर, लेकिन 70% भारत कोयले के आधार पर चलता है। 70% आपके वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रुपया वितरण करते हैं, वो फॉसिल और कोयले के आधारित प्रोजेक्ट्स पे 300% ज्यादा करते हैं बनिस्बत रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को। ये सब चीजें आपको सिर्फ कानून बनाने से हल नहीं होंगी, ये सब चीजें आपको फोकस करना पड़ेगा, कानून हो या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो। आज भी सोलर पैनल्स 80% इस देश में आयात होते हैं। आपने उनकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, आत्मनिर्भर बात सही, लेकिन आपके पास क्षमता कहां है निर्माण करने की देश के अंदर? ये सब आंकड़े हैं, ये स्पष्ट हैं। 2022 की इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिपोर्ट जो आई है, उसमें कहा गया है कि हमारा जो घोषित उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम डबल करना चाहते हैं, 30 से 40 बिलियन हमारा इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा, बिलियन एज इन बी यूएस डॉलर्स पर ईयर। अगर हमारा 2030 का प्रधानमंत्री द्वारा घोषित उद्देश्य 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होने का है, आज हमारा उससे आधा है। 2030 में 7 साल बचे हैं। अगर आप बीच के कई और फिगर्स देखें, 2022 का फिगर है 111, जबकि आपकी घोषणा 2022 के लिए थी 175। प्रधानमंत्री का घोषणा है 2030 में 500 पहुंचना। तो आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंच सकते हैं? कोई बटन दबा के नहीं पहुंच सकते। इसके लिए सिर्फ कानून और कानून में कुछ प्रावधान करने से हल नहीं निकलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स friends are not always lies, nor damned lies. It is true that like certain articles of clothing, what they reveal is interesting, but what they conceal is vital. But they are sure, firm, factual indicators of where we are and where we are going. It is clear that of all our declarations, all our promises at United Nations meetings, international conferences, international visits, targets spoken are not fulfilled each year, and in fact cannot be fulfilled is known when we make the declaration. We cannot reach 500 gigawatts by 2030, figures I have just given. In 2022 we are 111 against the figure given of 175. We cannot decrease carbon emissions by doubling our investment by 15 to 20 billion US dollars per year. Where will we get the money? You have yourself rightly recalibrated your 2050 promise to achieve net zero emissions. You have also already yourself made it 2070. Friends, all this and the legislation in particular ignores the holistic setting, what I call the elephant in the room. That elephant in the room, and we've just finished the wildlife bill, is the larger issue of climate change
and energy transition. One recent report estimates that climate change adverse movement costs you 3 to 10% of GDP annually. We don't even have methods of evaluating it, how much GDP diminution is happening every year because of climate change. We cannot forget that climate change hits three rights the most and first. First, the right to life. Second, the right to food. Third, the right to health. The Center for Environment notes that on a climate change agenda, out of the 17 objectives of India published, 15 will not be met by 2022 end. These are hard facts, research things. I'll give an example. Vital issues like 100% source segregation of dirt and of material. Our forest cover has crawled upwards by 0.6% from 2013. Our target was 33%. We are at 24.6%. These are hard, real facts. Even though I'm supporting the bill, it is important for you to do something about them. और इसमें कथनी और करनी में जो भी आपके फ़र्क हैं, सब्सिडी घटाना, टैक्स बढ़ाना, उस कथनी और करनी की जो गैप है उसको आपको भरना पड़ेगा. आपने अभी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, उसका बजट 1800 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया. तो क्या फ़ायदा हुआ रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने का? Sir, let me end by saying, we all know nature does provide a free lunch, but only to a limited extent. If we control our appetite. We also know Gandhiji's equation between need and greed. We know well that the world is only marginally given by our fathers. It is largely borrowed from our children. The bill needs to address the practical, statistical, holistic ground concerns which I have outlined most humbly. The bill needs to provide an impetus not merely by the cold letter of the law, but by actual nitty-gritty. How, for example, will green buildings come up in the construction sector? By merely amending construction codes. We all know that a green building costs 5 to 15% higher investment when made, and its recovery of that investment takes 3 to 5 years gestation period. Who will do it? Why will a builder do it? Why will an owner do it? The bill, while rightly providing for carbon trading, a very good move, has not created or enabled either a regulator or an intermediary or a stock exchange. So the expectation is that I will save carbon and footprint and get a credit certificate and I will sell it to my learned friend here. How it will happen, what is the infrastructural structure for it, I don't know. The bill doesn't tell us. Entrusting this whole crusade for survival, it is a crusade for survival, make no mistake about it. To whom? To the Ministry of Power and not to the Ministry of Environment. Is there not a clear conflict of interest? I don't want to mean it seriously, but in the old days there used to be a joke that you might want to make Dracula the head of a blood bank. Now, Ministry of Power working to reduce carbon emissions is a major conflict of interest, sir, and at least you should centralize. It's your own government, it doesn't matter. At least give it to the MOEF with some independence to stand up for environmental issues. So, Honorable Chairman, it is a good bill. It's a good start at least, but much more needs to be done outside of the bill, some more inside the bill, and the maximum to bridge the hiatus on the ground. All such initiatives are laudable, even if partial, incomplete or imperfect. And certainly, this does fall in all the three categories. Otherwise, if we don't even take this initiative, Mr. Suzuki, the car maker, rightly put it. He said, if you don't give this primacy, you will be like a giant car heading towards a brick wall while everybody is arguing over where they should be sitting. We have been given a warning by science. We've been given a wake-up call by nature. It is up to us to heed these calls by legislation as much as by executive action. And I hope that will be done. Thank you very much indeed. Thank you, Singhvi ji. Now, Mr.
सुशील कुमार मोदी जी। उपसभापति महोदय, मैं कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और अभी श्री आर.के. सिंह जी ने विस्तार से इस बिल के प्रोविजंस के बारे में बताया है। महोदय, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है और मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो सारी गैसेज हैं, ये वायुमंडल में जाकर जो रेडिएशन है, जो तापमान है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इसीलिए वायुमंडल का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है कि बाढ़ है, सुखाड़ है, कहीं साइक्लोन है, कहीं अति वर्षा है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंड है। और इस ग्लोबल वार्मिंग में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी एक सेक्टर का है तो वह एनर्जी सेक्टर का है। ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो कार्बन एमिशन के कारण हो रही है, उसमें 75% कंट्रीब्यूशन केवल एनर्जी सेक्टर का है। दिन पर दिन ऊर्जा की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और अभी अभी सरकार ने करीब 2 करोड़ 68 लाख घरों को बिजली देने का काम किया है। और आज भारत पावर डेफिसिट नहीं बल्कि पावर सरप्लस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। हमारी जो पीक डिमांड है वो 2,15,000 मेगावाट है, और जबकि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,03,000 मेगावाट है। कहीं भी देश में पावर शॉर्टेज नहीं है। अगर है पावर शॉर्टेज, वो ट्रांसमिशन के कारण है, अन्य कारणों से है। बिजली की कोई कमी नहीं है और कोई बिजली की कमी के कारण पावर शॉर्टेज नहीं है। अब तो बिहार जैसे राज्य में भी 22 घंटे 23 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है। तो यानी कहने का तात्पर्य कि जैसे जैसे और बिजली की डिमांड बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, वैसे वैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है। और जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है तो वैसे वैसे पॉल्यूशन, कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और महोदय, हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन 2 लाख करोड़ फॉर इम्प्रूवमेंट इन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। और से वन नेशन वन ग्रिड, अभी एक कोने से दूसरे कोने तक हम बिजली को तेजी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन उपसभापति महोदय, क्या हम बिजली की खपत को कम कर सकते हैं? हम कम नहीं कर सकते। अगर हम तुलना करें दुनिया के बाकी देशों से, तो आज बिजली की पर कैपिटा जो कंजम्पशन इंडिया के अंदर वो 1149 किलोवाट पर आवर है, 1149। और अमेरिका का एक आम आदमी कितना कंज्यूम करता है? इन अमेरिका per capita consumption is 12 times more than what we are consuming in India. 7 times more than what it is being consumed in Germany. और यूके से 5, यूके में हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन से 5 गुना कंजम्पशन ज़्यादा है यूके के अंदर, और चाइना भी करीब 5 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। तो हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम ऊर्जा की खपत कम नहीं कर सकते। हमको और ज़्यादा विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। और एक आकलन है कि 2021-22 की तुलना में अगर 31-32 को देखें तो आज जितनी बिजली की डिमांड है उसका लगभग 1.8 टाइम्स और बिजली की आवश्यकता जो है और हमको पड़ेगी, हमारी आवश्यकता है। और ये जो एनर्जी है, इसका जो इनपुट है ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 85% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कोकिंग कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो स्टील और बाकी इंडस्ट्री में काम आती है। नेचुरल गैस, अमोनिया, ये सारी चीज़ें हम बड़े पैमाने पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी एनर्जी सेक्टर की का जो इनपुट है
वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने और इसलिए कॉप के अंदर सभी देश ये प्रण करते संकल्प लेते हैं कि वो कार्बन एमिशन को कैसे कम करेंगे और हर कॉप के अंदर ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर दुनिया के देश और संकल्प लेते हैं। सरस्वती महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि भारत ने जो टारगेट हमको 2030 में अचीव करना था, कॉप 15 में पेरिस में जो हमने कॉप 21 में जो पेरिस में हुआ था 2015 में, उसमें जो हमने कमिटमेंट किया था कि हम 2030 तक 40% हमारी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वह नॉन फॉसिल सोर्सेज से होगी। लेकिन जैसा भी माननीय मंत्री ने बताया और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि वी हैव अचीव्ड दिस टारगेट 9 years ahead. We have achieved this target in the year 2021, which was to be achieved in the year 2030. और सरस्वती महोदय, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 उनकी सरकार में आया था। और आज नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार है, तो अमेंडमेंट बिल जो है ये एनडीए की सरकार में आया है। और 2001 का जो ईसी एक्ट था उसके अंदर जो लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लागू की गई थी। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि लार्ज इंडस्ट्रीज फ्रॉम एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स, उन्होंने जो पैट स्कीम थी उसके कारण 40,000 करोड़ की एनर्जी की प्रति वर्ष बचत हो रही है, 40,000 करोड़। और 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोका जा सका है। हम जो अप्लायंसेस यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन से लेकर टीवी से लेकर सारे अप्लायंसेस जो हम यूज करते हैं, स्टार रेटिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट हाउसहोल्ड्स इन अप्लायंसेस के इस्तेमाल के कारण, because of energy efficiency and star rating, 60 billion units of electricity is being saved per year only because of this star rating of energy efficient home appliances. और 50 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने में हमको सफलता मिली है। सरस्वती महोदय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने उजाला योजना प्रारंभ किया था और एलईडी बल्ब, अभी तक 150 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किया जा चुका है। और इस एलईडी बल्ब के कारण 100 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोका जा सका है। उसी प्रकार स्ट्रीट लाइटिंग, हर शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटिंग जो की गई और इसमें एलईडी का इस्तेमाल किया गया, उसके कारण वी हैव एबल टू सेव 6 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। और इतना ही नहीं, तो ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स का परिणाम ये हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो सेविंग है दैट इज 239 बिलियन यूनिट्स, 239 बिलियन यूनिट्स। और थर्मल एनर्जी के कारण सेविंग है 21.40 मिलियन यूनिट्स। और सरस्वती महोदय, हम प्रति वर्ष टोटल एनर्जी की जो कॉस्ट की जो सेविंग कर रहे हैं 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ वी आर एबल टू सेव एज द एनर्जी कॉस्ट सेविंग। और 267 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी रोकने में हमको सफलता मिली है। और सरस्वती महोदय, रेलवे के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि दिसंबर 2023 तक इस देश के अंदर जितनी ब्रॉडगेज की लाइन होगी वो इलेक्ट्रिफाइड होगी। कोई भी डीजल से और इंजन ब्रॉडगेज पर कोई डीजल ट्रेन नहीं चलेगी। और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल 2021 तक 71% ब्रॉडगेज रूट को हम इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं और दिसंबर 2023 तक देश के टोटल ब्रॉडगेज को हम इलेक्ट्रीफाई करने में सफल होंगे। और सरस्वती महोदय, 2014 में
रेलवे का जितना इलेक्ट्रिफिकेशन था उसमें 10 गुना की वृद्धि हुई है। और ये जो दो तरह के लोकोमोटिव होते हैं, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, बिजली से चलने वाले इंजन और डीजल से चलने वाले इंजन। तो डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल कम करने से इन द ईयर 2021 25.48 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने में हमको सफलता मिली है। और सती महोदय, तो केवल इतना ही नहीं, तो इथेनॉल आप अगर देखेंगे तो जो कार्बन एमिशन है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मोटर व्हीकल्स का है, और जिसमें पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उस समय पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग थी इथेनॉल की, दैट वाज ओनली 1.4%। नाउ इट इज इंक्रीज इन 2022 फ्रॉम 1.4%, द ब्लेंडिंग हैज इंक्रीज टू 10.16%। और हमारा जो टारगेट था, हमने तय किया था कि 2025 तक हम 10% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने 2025 के पहले ही 2022 में ही 10% का टारगेट अचीव कर लिया। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो बोला वो करके दिखाया। और अब 2025 का टारगेट हमने क्या किया, 20% का टारगेट हमने दिया है। तो जो पहले टारगेट 10% का था, अब 20% हम पेट्रोल के अंदर जो ब्लेंड करेंगे इथेनॉल को, दैट विल बी 20% ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय द ईयर 2025। और 2023 के मार्च से कुछ गिने चुने पेट्रोल पंप पर 20% ब्लेंडेड पेट्रोल जो है और वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और सती महोदय, इस पेट्रोल ब्लेंडिंग, इथेनॉल की ब्लेंडिंग के कारण पता है कि कितनी बचत होगी। 50,000 करोड़ का जो फॉरेन एक्सचेंज है, अगर ये इथेनॉल अगर हम ब्लेंडिंग नहीं करते तो हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ता, फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता। तो लगभग 50,000 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज की हम बचत करने में हमको सफलता मिली है। और ये राशि किसको गई, ये किसानों को गई, क्योंकि जो किसान गन्ना पैदा करता है और जो चीजें पैदा करता है उससे इथेनॉल बनता है। तो इसका एक और भारत के किसानों को इसका लाभ मिला, और दूसरी ओर फॉरेन एक्सचेंज 50,000 करोड़ की हमको बचत हुई है। उज्ज्वला योजना में हमने 9 करोड़ फ्री कनेक्शन दिया था। इसके पहले गांव की महिलाएं क्या इस्तेमाल करती थी, गोबर, कोयला, लकड़ी, तो हमने उसके द्वारा भी एलपीजी का 100% कवरेज करके हमने कार्बन एमिशन को कम करने का काम किया है। और साथी महोदय, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोबिलिटी को भी सरकार प्रमोट कर रही है। एंड 2030 तक सरकार ने टारगेट रखा है टू इलेक्ट्रीफाई 70% ऑफ ऑल कॉमर्शियल व्हीकल्स, 30% ऑफ ऑल प्राइवेट कार्स, 40% ऑफ ऑल बसेस, 80% ऑफ ऑल 2 व्हीलर्स एंड ऑल 3 व्हीलर्स। हम 2030 तक इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे ताकि उसके कारण जो कार्बन एमिशन होता है उसको हम कम कर सके। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर हम प्रमोट कर रहे हैं। बैटरीज की लाइफ स्पैन कैसे बढ़े, इसके दिशा में सरकार काम कर रही है। और सती महोदय, और ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के फ्रेमवर्क में जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसका टारगेट क्या है? पहला टारगेट तो यह है कि COP26 का जो गोल था उस गोल को अचीव किया जाए। इस अमेंडमेंट के द्वारा COP26 के गोल को हम अचीव करेंगे। दूसरा टारगेट क्या है? जो बड़ी इंडस्ट्रीज जो नॉन फॉसिल फ्यूल यूज करती थी, बड़ी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज मैंडेटेड यूज ऑफ, उनको निर्धारित किया जाएगा कि आपको इतना % जो है नॉन फॉसिल फ्यूल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फॉसिल फ्यूल अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। तीसरा भी जो माननीय मंत्री जी ने बताया, लार्ज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अभी तक केवल कॉमर्शियल बिल्डिंग ही जो है इसके दायरे में आता था। अब वैसी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो 100 किलोवाट से ज्यादा का जिनका लोड है, उनको भी और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत लाया जा रहा है ताकि वो भी एनर्जी
ऑब्जर्व कर सके और साथ ही साथ उस ये सुशील जी जी how much more time? 10 minutes. There are 5 more speakers. 10 minutes. You want 10 more? There are 5 more speakers with you. थोड़ा सा मैं मुझे अलाउ कर दीजिए Please. और सतीश महोदय Take 2 to 3 minutes, please. There are 5 more speakers from your party. और सतीश महोदय अभी जो माननीय मंत्री महोदय कार्बन ट्रेडिंग का जिक्र कर रहे थे, अभी तक भारत में कार्बन की ट्रेडिंग नहीं होती थी। इस बिल के द्वारा पहली बार कार्बन की ट्रेडिंग प्रारंभ होने जा रही है। और सतीश महोदय, और इस कार्बन की ट्रेडिंग का मार्केट कितना होगा? इस कार्बन क्रेडिट की जो मार्केट, इसका जो मार्केट है 2026 से 4,000 करोड़ एक नया मार्केट क्रिएट हो रहा है। अगर किसी को टारगेट दिया गया कि आपको 500 मेगावाट आपको यूज करना है सोलर एनर्जी, और आपने या आप थर्मल यूज कर रहे थे 500 मेगावाट बिजली और आपने 400 ही यूज किया, तो जो बचा हुआ अंतर है आपको क्रेडिट मिलेगा। उस क्रेडिट को आप मार्केट में बेच सकते हैं। और सतीश महोदय, ये एक नया बिजनेस, एक नया मार्केट इसके द्वारा प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट होगा। डोमेस्टिक ट्रेडिंग प्रारंभ हो रही है और बाद में जाकर, और मैं भी बता दूं, अभी 40 कंट्रीज में ही केवल दुनिया के ये कार्बन ट्रेडिंग हो रही है। यूरोपियन यूनियन, चाइना, कोरिया। इंडिया में जब स्टार्ट हो जाएगा इस बिल के बाद, तो भारत तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा जो कार्बन ट्रेडिंग कर रहा है। 1 टन कार्बन अगर आप कम खर्च करेंगे, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा जिसकी कीमत होगी 500 से 800 करोड़ रुपया, 500 से 800 रुपया प्रति यूनिट। और सतीश महोदय, मैं साथ ही साथ सदन को यह भी बताना चाहूंगा, प्लीज सुशील जी 2-3 मिनट्स। सतीश महोदय, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए COP26 में और पंचामृत का ऐलान किया। पंचामृत के 5 नेक्टर्स, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि 5 क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 5 चुनौतियां उन्होंने दी है कि किस तरह से हम अचीव करेंगे उन चुनौतियों को। और जो सबसे बड़ी बात सतीश महोदय, वह लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। प्राइम मिनिस्टर और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने अक्टूबर 2020 में मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ क्या है कि हर आदमी क्या करे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। 75 एक्शन पॉइंट दिए गए। फॉर एग्जांपल, सीएनजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी इस्तेमाल करे। पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज और बाकी के बजाय मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें। आप पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के बजाय सुशील जी प्लीज एक मिनट और, कोल्ड क्लाउड में आप स्टोर करें। किचन गार्डन को डेवलप करें। कम पानी की खपत वाली फसलों को हम उगाएं। और सतीश महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गांधी ने जो कहा था, अर्थ कैन फुलफिल एवरीबडीज नीड बट नॉट एवरीबडीज ग्रीड। ये पृथ्वी हर आदमी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम है, परंतु आदमी के लोभ को पूरा करने, एक मिनट, आधा मिनट खत्म करने दीजिए केवल, कि खत्म करने के लिए सक्षम है। और इसलिए कहा प्रधानमंत्री जी ने, जो श्लोक था वेदों का, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। यानी जो हम यूटिलाइज करें, सोच समझकर, आगे पीढ़ी को ध्यान में रखकर हम त्याग पूर्वक भोग करें। जो लाइफ मिशन प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सुशील जी। नाउ जाओगा सर्कल। For giving me this opportunity to place across the views of my party. We are not against any measure to conserve energy. We are completely with everyone in the nation in the conservation of energy. But where this particular bill is concerned, it was placed to us in a hurry, and we had submitted that it be sent to a select committee. We were procedurally debarred, but I would still submit that we need a re-examination. I'll explain as I move along.
we need to re-examine the law. The intention is certainly good. The driving forces are also good. But the law as it stands today is full of defects. It empowers the bureaucracy at the wrong level. It empowers the bureaucracy at the wrong level. Mr. Minister and I have both been in service, and we know how bad the certain levels of the bureaucracy can be. But if you give over handlebars to them, they will obviously misuse. That is why we said don't rush it, take a little time, send it to the select committee, go through the implications of what you are saying, your good intentions, let it be re-examined, and we can proceed thereafter. But in any case, we can go on any one of the issues that if we feel. First of all, your emphasis is on non-fossil fuel. Of course we agree. Everyone agrees on non-fossil fuel. But where are the non-fossil fuels? Where are the non-fossil fuels? Where the green hydrogen is one of the greatest gimmicks that I've been hearing for the last few years. Where is the green hydrogen in abundant supply? Where is green ammonia in abundant supply? Biomass. We all took part in that biomass campaign of gobar gas. But anyway, ethanol. I know, sir, that, thank you, sir. I know that we have a need for going over to non-fossil fuels, but the need has to be accompanied by adequate capacities. Otherwise, we take the car in the wrong direction. On carbon credit, of course it is a commendable move. It's a commendable move. But carbon credit, we are babies in the market. The world has gone over the carbon credit market, and several studies have revealed the malpractices of it. The honorable members have heard of this carbon credit market. Do you know what it is? In very simple terms, examination is held, somebody gets 110. He can sell that 10 off to somebody who got 20. So he can add 10 to his 20 and he can pass the exam. Siddhi baat. Do you understand? So carbon credit, I would submit to the Honorable Chairman, carbon credit is a well-intentioned move and is inevitable. It is desirable to a large extent. But where are the examinations of the studies of the misuse of carbon credit? I have explained to you in very broad intention that if the good student gets 110 and the bad student gets 20, he can take 110 from him, add to him and pass. There are safeguards that have to be put in. We can't accept it in its present form because most of it has been left to the bureaucracy to work out in the form of rules. Nothing has really been spelled out here in terms of actual legal provisions. They have all been left to rule-making powers. We have this provision of this energy conservation building code. Again, a commendable idea. But then, where is the social equity? Where is the social equity? When you talk of 100 kilowatts, I mean,